Okay, we are going to discuss all question papers today, GAT question papers that we have already attempted in the class. Okay. First thing, geography के questions है. So first question is, S waves can travel both through solid and liquid mediums, and monorovic discontinuity separates the crust from the mantle. S waves दोनों mediums में से travel करता है क्या? या P waves करते हैं? सिर्फ P waves कर सकते हैं, right? Only P waves can travel through solid liquid mediums. S waves can only travel through solid, and so can surface waves. Okay, surface waves भी सिर्फ solid में से travel कर सकते हैं. उनका वही capacity है. So ये वाला statement तो गलत है. Okay, we'll go with this statement is wrong. ये वाला statement गलत है. Okay. Moreover, discontinuity separates the crust from the mantle. हमारे discontinuities कैसे होते हैं? Chief ministers are great leaders. Okay? तो ये तो पूरा crust में ही लाई करता है. कॉनराड जो है वो crust में लाई करता है. And crust and mantle के बीच में कौन सा मिलता है आपको? Morovic. So that is correct. Morovic is the discontinuity. So only two. Morovic is the discontinuity that lies there. All right, ठीक है. Next one is which of the following statements regarding igneous rocks is correct? First they say कि वो stratified होते हैं और उसमें rich fossils होते हैं. They contain rich fossils. Second statement says basalt is a classic example of extrusive igneous rock. Then third statement, granite forms due to rapid cooling of the earth's surface. And fourth statement, they are formed due to intense pressure on pre-existing rocks. B is going to be correct. See, the thing is, igneous rocks are not stratified and they definitely do not contain fossils. How are igneous rocks formed? Igneous rocks are formed because of the cooling and solidification of magma or lava. Okay, that is the thing. If they are formed beneath the surface of the earth, then that is cooling solidification of magma and they become intrusive igneous rocks like granite. And if they are formed above the surface of the earth, then that is the cooling and solidification of lava and they become extrusive igneous rocks. Okay, so they are definitely not stratified and they cannot in any case contain any fossils, because any fossil which comes in contact with hot molten rock is going to melt, okay, and be non-existent. So clearly ये वाला statement तो गलत हो गया. Okay, ये statement गलत हो सकता है. C वाला statement देखिए, is granite formed due to rapid cooling? नहीं, ग्रेनाइट के क्रिस्टल्स बड़े ग्रेन्स होते हैं, सो क्लियरली इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन एंड फॉर्मेशन. सो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है. Basalt is actually formed like that, very rapid cooling of the lava, because of which the grains are very small and the appearance of the entire rock is very glassy. Okay, and so this is definitely an example of extrusive igneous rock. Basalt definitely is. Okay, and which are the rocks which are formed due to intense pressure on pre-existing rocks? Metamorphic. Igneous rocks do not form this way. It is the metamorphic rocks which are formed this way. Okay, so we are going here. Look at question 103. The progressive drop in temperature with increasing altitude within the troposphere is called normal lapse rate. And here we say there is always a warm layer below and a cold layer above. As in how you go upwards, the temperature in altitude, as in how you go from the surface of the earth upwards in altitude, the temperature keeps dropping. Okay. So the progressive drop in temperature with increasing altitude within the troposphere, and this happens within the troposphere, we call that as normal lapse rate. Okay, we also call that as vertical temperature gradient. Okay, and what is this environmental or normal lapse rate? The value is P, 6.5 degrees Celsius per 1 kilometer per kilometer. Is this correct? 1 degree Celsius per 165 meters. Yeah, that is also correct. It decreases by 1 degree Celsius per 165 meters. Or 6.5 degrees Celsius per 1 kilometer. It is one and the same thing. The calculation is one and the same, but you're going to have to go with then both A and B are correct. Okay, okay. That was a smart question. Even my eyes naturally gravitated towards 6.5 because that is what we are used to see. Anyways, next one. The specialized atmospheric layer containing a high concentration of ozone that absorbs lethal UV rays is located within the troposphere, stratosphere, mesosphere, or thermosphere. There is an ozonosphere which tends to attract all the UV rays, okay, because of which the temperature of that layer keeps on increasing as in how you go upwards in latitude. Okay, which layer is that? Troposphere is definitely not that layer. It is going to be the stratosphere. Okay, it is contained in the stratosphere. Ozonosphere is contained in the stratosphere. Okay, what happens in the mesosphere? What is the great phenomenon? What is the speciality or special feature of a mesosphere? It is the coldest layer, है ना? And what else do you find in the mesosphere? Meteor showers. You find those meteor showers over there. Okay. What about the thermosphere? It is one of the hottest layer. You will usually find that ISS and everything occurring over there and orbiting over there, and also auroras. Auroras are found in the thermosphere. What can you see about the troposphere? What do you find in the troposphere? All weather phenomena.
because only dust and water vapor is only available in the troposphere. So whatever weather phenomenon are going to occur, whether it is cyclones, anticyclones, thunderstorms, winds, or whatever, you're going to all find this over here, okay, in the troposphere. Okay, density also, the density of this layer is the maximum among all layers. Very correct. Okay, move on. We are looking at the local winds and their primary regions of occurrence. Okay, so here you have three options: Chinook Rocky Mountains, Harmattan in West Africa, and Mistral in Alps of France. Which of these pairs are correctly matched? Which do you know is पक्का पक्का correct? चिनूक नहीं नहीं सुना है कभी प्राइमरी विंड्स लोकल विंड्स ओके चिनूक ना यहाँ मिलते हैं आपको वेट अ सेकंड ना this is where you find Chinook, Canada, this Rockies. Okay, this is where you find the Chinook. Chinook is the low. हवा कंप्रेस हो जाती है बिकॉज इट इज कमिंग डाउन रैपिडली तो हवा कंप्रेस हो जाती है टेम्परेचर बढ़ जाता है एंड अलॉन्ग दैट साइड जितना भी स्नो होता है वो फटक से मेल्ट हो जाता है कि विद इन अ फ्यू मिनट्स यू कैन फील द टेम्परेचर राइजिंग इतना फास्ट वो काम करता है ओके सो क्लियरली ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर के लिए बेटर होता है इफ इट इज वेरी कोल्ड आउट देयर देन द चिनूक इज कंसिडर्ड अ गुड विंड बिकॉज देन इट इज कीपिंग द टेम्परेचर नॉर्मल आफ्टर कमिंग हियर ओके so Chinook is the wind in the Rockies. Okay, you will find a similar wind over here blowing from the Sahara in Africa, blowing from the Sahara towards the Gulf of Guinea, okay, in this direction. We are saying the wind usually blows in this direction. So, ये जो wind होता है, उसको famously Harmattan कहलाता है, okay? The wind over there locally, it's a dry, dusty wind. Harmattan is a dry, dusty wind. Locally, it is also called as the doctor, okay? Doctor इसलिए because ना it is a dry wind, dusty wind. It will lower the यहाँ पर ना usually बहुत ज़्यादा इस coast पे along this coast the relative humidity is very high, okay? So when the wind comes in, it will obviously take away all that, it will lower the relative humidity and then the atmosphere and the weather becomes a little breathable and better. Thoda pleasant ho jata hai. Hence the wind is called as doctor. Okay. So Harmattan is the name of the wind and it does flow in West Africa. And this is definitely France and Alps where you have the Mistral. Mistral is a cold wind. Okay. It comes, Mistral is a cold wind blowing over there and that is just the name of it. So all pairs are actually correctly matched over there. All of those pairs should be correctly matched. These ones, all of them are correctly matched. So we'll go with 1, 2, and 3. Okay, that is going to be our answer. Okay, the characteristic Mediterranean type of climate is globally recognized for which specific weather combination? Cool summers, dry winters, dry hot summers and mild winters, heavy rainfall throughout the year, extreme temperature variations with no rainfall. Okay, so B for Bombay. Yes, very correct. Mediterranean climate जो होता है, the speciality of this climate is we don't have Fatima and this one today. No, huh? Correct. Where? Where? अच्छा. Oh, okay. No problem. Hey, I'm trying to see if I can speak in Hindi or not speak in Hindi. I can. Everybody else understands Hindi. Do you understand Hindi? Yes, you do. Okay. तो मेडिटेरेनियन टाइप का जो क्लाइमेट होता है ना दैट इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फॉर दिस कि उनके जो समर्स होते हैं नॉर्मली पूरे दुनिया भर के क्लाइमेट्स में आपको समर में रेनफॉल मिलता है ओके समर प्रेसिपिटेशंस होते हैं अब हमारा इंडिया का भी देखो तो मॉनसून एक्चुअली समर के बाद आता है तो वो नॉर्मली समर अपने यहाँ पे अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो तो समर्स एक्सटेंड अप टू अगस्त वगैरह एंड देन उसके बाद फॉल शुरू हो जाता है ऑटम ओके जिसमें पतझड़ जिसको हम कहते हैं कि लीव स्टार्ट फॉलिंग एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ओके सो वी आर सेइंग कि अपने यहाँ किसी भी क्लाइमेट में देख लो आप तो नॉर्मली समर्स में बारिश होती है ओके विंटर में बारिश मिले या ना मिले लेकिन समर में बारिश डेफिनेटली मिलती है ओके ये इकलौता ऐसा क्लाइमेट है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जिसमें समर्स में बारिश नहीं मिलती है विंटर्स में बारिश मिलती है ओके द रीजन बीइंग कि ये जो क्लाइमेट है ना वी आर सेइंग मेडिटेरेनियन क्लाइमेट यूजुअली वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स में वेस्टर्न कोस्ट पे लाई करता है कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न कोस्ट पे लाई करता है अक्सर and between 30 to 45 degrees north and south okay 30 to 45 degrees north 30 to 45 degrees south में जो भी वेस्टर्न साइड होगा कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न कोस्ट होगा कॉन्टिनेंट का वहां पे यूजुअली लाई करता है अब उस केस में क्या हो जाता है ना वहां पर यूजुअली व्हाट यू गेट ओवर देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ दिस वे वेस्टर्लीज जो होते हैं आपके वो थोड़े से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं एंड उसकी वजह से आपको वो एरिया कवर कर लेते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज कि वो ऑनशोर होते हैं कि वो समुंदर से लैंड की तरफ जाते हैं दे मूव फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड
Westerlies are onshore at that time, and what the westerlies do is during the winter they will give rains over there, because once someone, if they are moving from the sea towards the land, they're clearly carrying the moisture from the sea to the land, and then they will drop all that moisture on the land. So what they give rains, okay, good amount of rains. So that is the Mediterranean climate. Okay, in every other climate you will see you might get rains in winter. For example, इक्वेटर पे आपको हर साल हमेशा हर रोज बारिश मिलती है. ओके, लाइक 25 out of 30 days it is definitely raining every day. So there is no temperature variation, no seasonal variation. आपके पास समर नहीं है, विंटर नहीं है, एंड हमेशा थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होगा. ओके, वो क्लियरली प्रॉब्लम हो सकता है. ये कूल समर्स, ड्राई विंटर्स कहाँ मिलेंगे आपको? थोड़ा सा टेम्परेट क्लाइमेट में, है ना. समर्स विल बी अ लिटिल कूलर बिकॉज क्लियरली यू आर वे आउटसाइड द ट्रॉपिकल रेंज, तो आपके समर्स अभी हॉट नहीं हो सकते. एंड विंटर्स डेफिनेटली ड्राई होते हैं टेम्परेट में. टेम्परेट कॉन्टिनेंटल जो क्लाइमेट्स होंगे ना, वहां पे विंटर्स तो डेफिनेटली ड्राई होंगे. ओके, एंड ये वाला एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशंस विद नो रेनफॉल, ये सुदान क्लाइमेट है. रिमेम्बर वो यू सुदान टाइप का जो क्लाइमेट होता है, उसमें भी वो भी आपको थोड़ा सा वेस्टर्न साइड पे मिलेगा, लेकिन उसमें आपको वेरी हॉट समर्स, वेरी कोल्ड विंटर्स मिलेंगे, एंड रेनफॉल थोड़ा कम ही होता है. तो अक्सर ना वो आपको सारे अफ्रीकन ये दिखाते हैं सफारी टाइप्स की जगह. हाँ, वो सुदान टाइप का क्लाइमेट है. लंबी लंबी घास होती है, ट्रीलेस होता है मोस्टली, बहुत एक इक्का दुक्का कोई ट्री दिख जाएगा, है ना, लेकिन घास बड़ी टॉल होती है उनकी, है ना. तो दैट सर्व्स एज अ कैमोफ्लेज फॉर द अदर एनिमल्स आल्सो. तो वो टाइप का क्लाइमेट है ये, सुदानीज टाइप का क्लाइमेट. ओके, ठीक है. ये मेडिटेरेनियन टाइप के क्लाइमेट में भी ना आपको वाइन्स मिलेंगे, श्रब्स मिलेंगे, ट्रीज थोड़े से कम टॉल होते हैं मेडिटेरेनियन टाइप के क्लाइमेट में. ओके, सो वी आर लुकिंग एट समथिंग दैट वे. So your answer is going to be this: dry, hot summers and wet, mild winters. Okay, for the Mediterranean climate, this is going to be the answer. Next one: which one of the following ocean currents is a well-known cold ocean current found in the Atlantic Ocean? Atlantic Ocean का एक well-known cold current बताइए. आपके पास ऑप्शंस है गल्फ स्ट्रीम, बेंगुएला, कुरुशियो एंड ब्राजील करंट. ओके, कुरुशियो कोल्ड चाहिए, कोल्ड कोल्ड कोल्ड. We are looking at Gulf Stream, we are looking at Kuroshio, we are looking at Benguela and Brazil. Okay. Okay. So ये रहा आपका ब्राजील करंट. हाँ, वार्म करंट है जो यू नो ना, आई हैड टोल्ड यू द अदर डे आल्सो, जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएगा वो वार्म करंट होगा, जो पोल से इक्वेटर की तरफ जाएगा वो कोल्ड करंट होगा. ओके, तो ये रहा ब्राजील करंट. ओके, ये कुरुशियो है, वार्म है. ओके, वन सेकेंड, पैसिफिक में मिलेगा और वार्म मिलेगा. दूसरा कौन सा बोला उन्होंने? बेंगुएला, ये कोल्ड है ना. अक्रॉस द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका के ऊपर से जो जाएगा वो बेंगुएला होगा. आई एम कॉलिंग इट बेंगुएला. दिस इज ब्राजील. आई एम कॉलिंग दिस कुरुशियो. एंड एक और क्या बोला था उन्होंने? गल्फ स्ट्रीम. दिस इज द गल्फ स्ट्रीम. ओके, तो ये वन सेकेंड वार्म करंट होगा. अटलांटिक का वार्म करंट इज गोइंग टू बी द गल्फ स्ट्रीम. अटलांटिक का अनदर वार्म करंट इज गोइंग टू बी ब्राजील करंट, एक्सेप्ट कि वो आपको सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा. अटलांटिक का, सदर्न अटलांटिक का कोल्ड करंट इज गोइंग टू बी बेंगुएला, जो अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट को हक करते हुए जाता है. सो डेजर्ट्स वेजर्ट्स मिल जाएंगे एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. एंड देन ऑफ कोर्स दिस इज द Kuroshio current in the Pacific. Okay, warm current Kuroshio in the Pacific. So your answer is going to be Benguela. Okay, cold ocean current in the Atlantic अगर चाहिए so that's going to be Benguela. All right, so we are going with Benguela current. This is going to be our answer. चलो जी, ये सारे माउंटेन पासेस है, मेजर हिमालयन माउंटेन पासेस है, वेस्ट टू ईस्ट उनको अरेंज करना है. ओके, वेस्ट टू ईस्ट माने कश्मीर हिमालयास से लेके ऑल द वे ईस्टर्न हिमालयास तक अरेंज करना है. ओके, माउंटेन पासेस किया है पहले कभी. वी आर लुकिंग एट शिपकिला, जोजिला, नथुला एंड बोमडिला. ओके, ये चारों पासेस देख रहे हैं हम लोग. आइडिया है, कहीं लगा सकते हैं, नामों से पता चलेगा. जोजिला, ला का मतलब पास होता है इन द लोकल लैंग्वेज. ला मीन्स पास. ओके, so now you're looking at शिपकिला, जोजिला, नथुला, बोमडिला. नथुला फेमस है, वो सिक्किम के यहाँ वाला है ना, दैट इज फेमस फॉर अस. बोमडिला कहाँ का साउंड करता है? ईस्टर्न साउंड कर रहा है थोड़ा सा. हाँ, तो ये थोड़ा अरुणाचल प्रदेश के साइड का पास है. ओके, शिपकिला हिमाचल का पास है एंड जोजिला कश्मीर का पास है. नाउ यू कैन अरेंज देम. जोजिला पहले आएगा, अगर कश्मीर का होगा तो पहले जोजिला आएगा, देन शिपकिला आएगा हिमाचल वाला, देन नथुला आएगा सिक्किम वाला, एंड देन बोमडिला फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. ओके, I'll show it to you over here. मैंने कहीं तो एक पिक्चर निकाल के रखा था उसका, ये देखिए. These are those various passes. You are looking at all these passes. तो our concern was this, कहा गया ये जोजिला, हाँ, जसर में जो मिलेगा वो जोजिला. ओके, एंड देन जसर में जोजिला
एक second now, just give me a moment. Zojila, which mountain range? Which mountain range? वो जस्कर, हाँ गुड, बिकॉज आई रिमेम्बर ZZ ना, ऐसे मुझको याद था, तो ZZ जस्कर जोजिला. ओके, ऑलराइट, ठीक है. हियर वी आर. तो नहीं, हियर वी आर सेइंग कि ये जोजिला यहाँ का. ओके, देन उसके बाद ये शिवकिला यहाँ पे. हाँ, शिवकिला इज दिस प्लेस. एंड देन दिस नाथुला, ओके, फ्रॉम सिक्किम वाला. एंड ये बोमडिला. ओके, दीज आर द डिफरेंट पासेस जो हम वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करेंगे. ओके, हम जब इंडिया का फिजियोग्राफी करेंगे ना, तो आपको एक प्रॉपर मिल जाएगा कि कौन से इसका कौन सा पास है एंड कौन से पास का सिग्निफिकेंस क्या होता है. यू नो, देयर आर सम पासेस जो हम स्पेसिफिकली टिबेट को जाने के लिए यूज करते हैं, कुछ जो हम स्पेसिफिकली अभी रिसेंटली भी वो म्यांमार की तरफ का पास खुल गया था, या हाँ क्वेश्चंस भी आते हैं तंगुक पास वाला. करेक्ट, देखा मैंने उसको. Okay, so your answer is going to be 2134. Where is 2134? This. Okay, B. That is going to be your answer. Which of the following pair of Indian rivers flows westward into the Arabian Sea through structural fault or rift valleys? We are saying दो नदियां हैं जो रिफ्ट वैलीज में से फ्लो करती है अरेबियन सी की तरफ, मतलब वेस्टवर्ड फ्लो करती है. So this is already weird because most of our Indian rivers, हाँ, very good. Most of our rivers flow eastwards. Okay, तो हमारा option is going to be नर्मदा एंड तापी. महानदी गोदावरी ईस्टवर्ड फ्लो करते हैं, बंगाल पे और बंगाल की तरह. कृष्णा कावेरी का भी वही स्कीम है, पेनिनसुलर प्लेटो से ईस्टवर्ड फ्लो करेंगे. एंड लूनी साबरमती उधर फ्लो करते हैं, लेकिन वो रिफ्ट वैलीज में से फ्लो नहीं करते. लूनी साबरमती छोटे छोटे रिवर्स है, माइनर रिवर्स, दे आर माइनर रिवर्स व्हिच फ्लो into the Arabian Sea, but definitely not through rift valleys. These two are famous. Narmada and Tapi are famous rift valleys, which are associated with block mountains, Vindhyas and Satpuras. Okay, wait a minute. See this is the Vindhya range and the Narmada. This is the Tapi river and the Satpura range. Okay, so each we had checked out block mountains and rift valleys, right? So with that rift valley comes a block mountain also. So if you're looking at these rift valleys, Narmada and Tapi, then you have these two block mountains also, Vindhya and Satpuras. Okay, these are those block mountains. Are we good? Huh? Okay, fine. Moving forward to Majuli. Majuli, recognized as the world's largest populated riverine island, is located on which river course in India? Ganga, Brahmaputra, Indus, Godavari. Hmm. Hmm. Remember when we had done those braided streams? River erosion में we had done one of those braided streams. I had said लड़कियों की छोटी जैसे होती है वैसे वो stream चलती है, because वो connect होती है, disconnect होती है, connect होती है, disconnect होती है बार बार. And वो connect disconnection के चक्कर में what happens is that it is depositing huge loads of sediment right in the middle of its course. Okay, so these usually, if that sediment load is large enough, or if it accumulates to be large enough, then it forms a riverine island. Okay, and such a riverine island is Majuli. Okay, the problem with this island and the reason why it has been in news for so many years has been because it is sinking. Erosion ho raha hai uska. It is sinking because the water levels keep rising and all that. And then obviously it is a problem because it's a populated island. People are living on it. Okay, so we are worried about that part. Question 111. The Regur soil of India is black cotton soil, famously known as black cotton soil. Regur soil is famously black cotton soil. What can we say about the laterite soil? Where do we find the laterite soil in India? What is the speciality or unique feature of the laterite soil? What forms the laterite soil? Which particular climatic conditions form the laterite soil? You need to, laterite is called laterite because of the word later. Okay, later or later is Latin for brick. So you usually make bricks of this soil. The reason being that the soil is completely washed away of all its nutrients. Okay, so these are soils that usually face a very high amount of temperature and also a high amount of rainfall. So they are found in places, especially the eastern western Ghats. Now, you're saying in these places you will find that the temperature is also very high and the amount of rainfall is also very high. Okay, so clearly you will find laterite soil over here. The soil has to be treated properly, especially in Kerala, wherever you find laterite soil. You have to treat the soil properly with proper nutrients and fertilizers and everything for it to be used for any sort of cultivation. Okay, cashews, I think you plant cashews in this soil. I'm not sure. In Kerala, what are we planting in this? Cashews, I think.
Let me confirm. Kerala crops. Yeah, you will go for not cash crops, plantations, spices. You're going for all that. Rubber, cashews, black pepper, coconut areca nut, and rubber. This is, but you have to treat the soil. You can't use it just like that because it has already been washed off all nutrients. So this is what you're going to find over there. Okay. Okay. All right. Alluvial soil. Where do you find alluvial soil? Yesterday I had such a bad time. Somebody over there sitting over there in 11th standard was telling me alluvial is a rock. And I like, yeah, this is, I should not be subject to this kind of torture in my life. Alluvial is a soil which is deposited by the silt of the rivers. Now, whatever silt the rivers are depositing, suppose say the rivers flood or something like that, then it is not just the water that comes out with the flood, right? The small silt that the rivers remains suspended in the river water, that also comes out with it, and that gets deposited along the banks of the river. Okay, that is essentially what the alluvial soil is. So it is not just the silt; it is also a bit of sand, a bit of clay. So all of these are mixed together. But alluvial soil is supposed to be really fertile, really nice soil. Contains most soils in India will give you a less amount of urea ना मतलब वो phosphorus and ये थोड़ा कम होता है, but otherwise nitrogen थोड़ा कम होगा, but otherwise this is all good. Okay, alluvial soil is generally considered great. And red and yellow soils, they also have to be treated. वो oxidized reduction किया हुआ soils होते हैं, so they also have to be treated to be used properly. Okay, fertile नहीं माने जाएंगे उसको, inherently fertile नहीं होगी ये soils. Okay, the answer is going to be black soil over here, and we move forward. Question 112. The winter rainfall experienced in northwest Punjab, Haryana, northwest India is brought about by atmospheric disturbances originating over the Bay of Bengal, Arabian Sea, Mediterranean, and Caspian. Okay, you are going with Mediterranean. The answer is going to be Mediterranean Sea. This is what we are looking at. We are saying western disturbance, as what we call them, is actually a temperate cyclone. Okay, a kind of temperate cyclone originates over here in the Mediterranean Sea. Okay, travels all the way from this Persian, Iraq, and all, Persian Gulf and all. It will travel from all these places, Afghanistan, Pakistan, sometimes even over the Caspian Sea. So we are saying all these places and reaches India. Okay, clearly it has selected moisture from all these water bodies. Okay, and then it comes over here and gives moisture to India. Okay, so it is going to give moisture. It is going to give a bit of rainfall, especially late December, November, December. It is going to give rainfall over here. And usually you know that the western disturbances are coming because the pressure drops very quickly. Okay, you can feel that pressure drop over there. So you know that the western disturbances are coming now. And this is very good for us because what we get usually through this is light showers. Okay, and यहाँ पर अपना this is a wheat cultivation, right? This is a major area for wheat cultivation, and wheat does require those light showers just before the harvest. Okay, just before you harvest wheat, you require those light showers, and that is why these western disturbances are important. Okay, they don't just stop over here; they will go and collide against the Himalayas. Okay, now obviously they can't get through the Himalayas, so they'll try to ascend the Himalayas. Over here, this is all Himalayan region, right? So they will give a lot of snowfall in that Himachal Pradesh region also. Kullu Valley, वो जो आपको हमेशा पता चलता है ना, वो रोहतांग पास हमेशा बंद ही बंद है. So the reason is this: winters में भी बंद है, summers में भी बंद है, जब भी देखो snowfall and बंद है ना? This is the reason. Okay, because वो बंद हो जाता है फिर, because बहुत ज्यादा snowfall हो जाता है, copious snowfall हो जाता है. Okay, so वो western disturbances are responsible for that. बे ऑफ बंगाल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नहीं आ सकते. बे ऑफ बंगाल ईस्ट पे लाई करता है, वहां से नहीं आ सकते. अरेबियन सी पर से साउथ वेस्ट मानसून आता है. रिमेंबर, अरेबियन सी इज रिस्पॉन्सिबल. अरेबियन सी से हमारे यहाँ जब बारिश आती है तो हम उसको साउथ वेस्ट मानसून बुलाते हैं. एंड कैस्पियन सी पे ओरिजिनेट नहीं कर रहे हैं, उससे ऊपर से पास कर रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. सो वी कैन नॉट से कैस्पियन सी. ओके, ये वाला बताइए. द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.82 degrees 30 minutes east passes through which of the following combinations of the Indian states? UP, Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal, UP, MP, Chhattisgarh, Odisha, Andhra, UP, MP, Rajasthan, Maharashtra, Karnataka, and UP, MP, Telangana, Odisha, Tamil Nadu. Okay. Satta for this is, what's that? B for Bombay? Yep. The Satta for this is Avengers of MCU. I don't know if you're interested in movies, but I am. So I make sattas like that. Okay. So Avengers of MCU is going to be Andhra, Odisha, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh.
ठीक है, that is going to be your answer. चलेगा, that is the 82.5 degrees east वाला जो line है, that passes through these 5 states. Okay, if you're looking for a certain city, it is going to be Mirzapur in Uttar Pradesh. All right, ठीक है. Jharia and Raniganj are famous historic mining regions in India, primarily known for large reserves of what? Iron ore, bauxite, coal, manganese. क्या मिलता है इनमें? What do you get in Jharia and Raniganj? Jharia, Raniganj, West Bengal, West Bengal. We are talking of West Bengal and Jharkhand. B, coal. हाँ जी, बिल्कुल सही, coal मिलता है. One of the oldest mines and still have the largest reserves of coal. Okay, Jharia and Raniganj. So उसकी वजह से West Bengal and this are always one of the highest coal producing regions also. Jharkhand and West Bengal. Okay, ठीक है. Moving forward, the Low Creek Biosphere Reserve, known for protecting unique biodiversity and the red panda, is located in which Indian state? Assam, Arunachal, Meghalaya, Sikkim. ये फेमस है क्योंकि ये अपना बायोस्फीयर रिजर्व है, वन ऑफ दोस 12 यूनेस्को के साथ जो एसोसिएटेड है उसमें से एक है. दिस इज वन ऑफ दोस एसोसिएटेड विद ऑन दैट मैन एंड बायोस्फीयर नेटवर्क. इट इज ऑन दैट नेटवर्क. मेघालय. This is from Meghalaya. Nokrik happens to fall in Meghalaya. Okay. Asteroid belt containing billions of rocky debris particles is situated between the orbits of which two planets? Mars and Jupiter. Famously, you know this how the solar system is arranged, right? There is the sun, and right next to the sun you have the 4 terrestrial planets: Mercury, Venus, Earth, and Mars. Then between Mars and Jupiter, there's the asteroid belt, followed by Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay, that is those are the Jovian planets. And then outside those, you will find the rest of that. You know, whatever you have, those circumstellar disk and you know, all that sort of thing. You're going to find all that. Okay, Oort cloud and all that. Okay. Here we are. On 21st June, the sun shines vertically overhead at midday along which of the following prominent latitudinal lines? On 21st June, the sun is exactly overhead which of these latitudes? Equator, Tropic of Cancer, Capricorn, or Tropic of Cancer. Very correct. The sun is exactly overhead the Tropic of Cancer. Okay. So we experience the longest day in the northern hemisphere on this day. And beyond the Arctic Circle, the sun never sets for an entire day. So that is called as the land of the midnight sun. Okay. And on the same date, the southern hemisphere will experience its shortest day. Okay. And the sun will never rise beyond the Antarctic Circle. Okay. Beyond 66.5 degrees south, the sun will not rise at all. Okay. Okay. Agree? So we are looking at this. Question 180. Which of the following conditions are ideal for the growth and survival of robust coral reefs? 1. Warm water temperatures 20 degrees to 28 degrees Celsius. Shallow water depth less than 50 meters. And high turbid water with heavy sediment loads. 1 and 2 only. Very good. Coral reefs they are essentially marine organisms, okay, that have the special quality of secreting carbon, calcium carbonate within their cells, okay. Meaning what happens that they will make hard skeletons or hard shells around their soft bodies. So essentially you will see a hard skeleton and within that protected is the soft body of the animal, okay. Those are corals. Now they don't live just one coral at a time. There are colonies of that, okay. So you will see those beautiful corals and everything. Now you will also notice that corals usually have very pretty colors, okay. Those colors come to them from another organism, which is a algae called as zooxanthelle. Okay, zooxanthelle नाम का एक algae होता है. So usually they work in symbiosis. The zooxanthelle is given protection inside the corals, okay, inside the body of the polyps, and they will provide it with protection. While the zooxanthelle provides them with food because they are all they are making food, right? The zooxanthelle is an algae. As long as the sunlight is available, it will make food. Okay. And then along with the food, it will also provide them with those colors. Okay, the color comes from the zooxanthelle. All right. So when you say that warm water temperatures, then yes, that is necessary because neither the zooxanthelle nor the coral is going to survive in cold waters. Okay, they are from, so typically between tropical, you will find the corals in the tropical regions only. Why the water depth has to be less than 50 meters or less than 100 meters for the sunlight to penetrate. It has to be, the sunlight has to penetrate. Otherwise, the zooxanthelle is not going to work. It's an algae. It requires photosynthesis. It is not going to work without that. And what is the problem with high turbid water? It requires seawater. It requires saline water.
is that sediment exists within the water, anywhere near the mouths of the rivers or something. What happens is that sediment goes and clogs or chokes up the polyp, okay, the corals, and it will clearly kick out the zooxanthellae, and then you will see the bleaching, and you will see that the corals die and all that sort of thing. That thing keeps happening. So around heavy sediment load, you will never see coral growth. Okay, corals are not found over there. So it will just be these two, just statement 1 and statement 2. We are going with 1 and 2 only. Okay, you need fresh sea water. You always need sea water instead of river water over there. Okay. ये वाला बताइए. The strong permanent western planetary winds blowing in the southern hemisphere between 40 degrees south and 50 degrees south latitudes are called as trade winds, horse latitudes, roaring 40s, yeah, doldrums. You're talking of westerlies now. Clearly, you're talking of western planetary winds, and clearly they're blowing between 30 to 60 degrees. So you're talking of westerlies. Now, these are very specific westerlies which are blowing from 40 degrees south to 50 degrees, only within that range, latitude range. What do we call the westerlies in those ranges? Between in the 40s, in the latitudes of 40s, we call them roaring 40s, right? In the 50 degrees latitudes, 50 to 60 degrees, में हम उसको क्या बुलाते हैं? Furious 50s. And what do we call them in the 60 degrees? Screaming or shrieking 60s. Okay, depending on which latitude they are blowing in. See, the thing is now, if you look at the southern hemisphere over here, what do you see? This is Brazil's shoulder is going to be the equator. Okay, this shoulder of Brazil is the equator, right? Agreed? Now, what you say that below this, can you see much land? No. Okay, so the wind is flowing unobstructed. Okay, there is no major obstruction for land or anything. The wind is going to flow absolutely unobstructedly, especially between 40 to 60 degrees. Okay, there is absolutely no land. So the wind speed and velocity is really high over here. And because of that, the westerlies become really, really strong over here. And they are very famous. In the 40s, they are called, in the 40-degree latitudes, they are called roaring 40. In the 50s, they are called furious 50s. And in the 60s, they are called screaming or shrieking 60s. Okay, because you can actually hear the wind shrieking and screaming in your ears. So that's the shrieking 60s or the screaming 60s. Okay, so we are going with roaring 40s. Trade winds. ये trade winds यहाँ पर flow करते हैं. Trade winds हमेशा equator से लेके, if you are at the equator, see this is the equator ना. Trade winds हमेशा equator से tropic 30 degrees तक flow करते हैं. 30 degrees north में and 30 degrees south में आपको trade winds मिलते हैं. Okay, these are the trade winds. So these are northeast trade winds and southeast trade winds. East से आने वाले trade winds. Okay, तो अपने यहाँ पे northern hemisphere में ऐसे आते हैं, southern hemisphere में ऐसे flow करते हैं. These are the trade winds. उसके बाहर 30 to 60 में, I'm just randomly कर रही हूँ मैं, 30 to 60 में westerlies flow करते हैं, है ना? वो westerlies होते हैं, वो थोड़ा सा western direction में जाते हैं. They're pretty irregular in the northern hemisphere, but they're quite regular in the southern hemisphere because of lack of land. है ना? बहुत कम land है वहाँ पे. And then ऊपर फिर आपको polar easterlies मिलेंगे, once like this, okay? वापस polar easterlies मिल जाएंगे, eastern direction से आने वाले. Wind का नाम ना, always remember the wind is called after the direction in which it comes from. So whichever direction the wind originates from, the wind usually gets the name of that direction, okay? So hence we call them as easterlies or northeast trade winds or westerlies or whatever, okay? And horse latitudes is 30 degrees latitude. 30 degrees, वो जो belt होता है ना, subtropical pressure belt, that gets sorry, नहीं, doldrums equator के ऊपर होता है. क्या? horse latitude से equator की तरफ trade winds आएंगे. हाँ. तो वो जो इक्वेटर का प्रेशर बेल्ट होता है, उसको आइडियली हमने ये बोलना चाहिए, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बुलाना चाहिए, ITCZ. लेकिन उसको हम प्यार से डोल्टर्म्स भी बुलाते हैं, बिकॉज वहां पे बहुत काम विंड्स हो जाते हैं. तो आइडियली यू शुड एक्सपेक्ट कि अगर दोनों विंड्स आते हैं, एक दोनों तरफ से दो ट्रेड विंड्स आ रहे हैं, तो वहां पे ऐसे गड़बड़ होनी चाहिए, राइट? स्टॉर्म्स हो जाने चाहिए. लेकिन वो होते नहीं है. वो विंड्स आते हैं, मिलते हैं एंड ऊपर चले जाते हैं. वो नीचे कुछ नहीं रहता है. नथिंग स्टेज डाउन. ओके, सर्फेस पे कुछ नहीं रह जाता है. तो they just come, meet there and go upwards. They simply travel upwards. तो ऊपर जाके डाइवर्ज कर जाएंगे वापस से, एंड 30 डिग्रीज पे जाके वापस कन्वर्ट ऐसे नीचे की तरफ सबसाइड करेंगे. तो वो 30 डिग्रीज का जो 30 डिग्रीज नॉर्थ एंड 30 डिग्रीज साउथ का जो बेल्ट होता है ना, प्रेशर बेल्ट, दैट गेट्स कॉल्ड एज द हॉर्स लैटिट्यूड, बिकॉज ऊपर से हवा आती है तो नीचे से दोनों तरफ चली जाती है, तो सर्फेस पे बहुत काम एयर बच जाती है. ओके, द सर्फेस हैज अ वेरी calm air, and when the surface has a calm air, the ships used to not move at all over there at 30 degrees north and 30 degrees south. The ships simply refuse to move because
Purane zamane mein, you didn't have motors or everything, right? You had to steer the ship by means of the wind, in the natural way. So what people used to do is that they used to lack water then, because they used to travel for long distances. Now, you can't drink the sea water. So to preserve the water, to conserve what water they had, they used to throw livestock off the ships into the sea. So they used to, that was the place where they usually threw all the horses and everything off the ship into the sea. And hence that place famously got called as the horse latitudes. The reason was that the winds used to be very calm and the ships used to not move at all. So to conserve water, they were doing all this, preserve water, they were doing this. Okay? Okay? And all right. Last of these, which of the following economic activities is classified strictly as a tertiary sector activity? Agriculture, banking and tourism, automobile manufacturing, or mining? Hmm. Primary, secondary, tertiary. Other banking and tourism. Banking and tourism. We are saying primary activities are those where you derive the resources directly from the land. So whether you're hunting and gathering, or whether it is agriculture or mining, all of that would be considered primary activities, right? We are looking at primary activities. And in the secondary sector, what you do is you take the material that you got, fishing. Fishing also is a primary activity. You take the material that you got from the primary activity, process it, okay, do some value addition to it, and then go and sell it out as a product. Okay, so that's a manufacturing industry. So automobile manufacturing is going to be one of those. Okay, whatever, whether you are fishing, whether you are taking fish and processing them and putting them into selling them off as canned fish, or then any kind of manufacturing industry would be termed as secondary industry. Okay, and the third sector is usually related to trade, transport, any kind of software industry or something. So now you're looking at very different industries. Okay, so tertiary sector is going to be that. So trade and transport and everything, where you're simply exchanging stuff. Education is also tertiary sector. Service sector is essentially over here. Okay, so we are saying banking and tourism should ideally be a tertiary sector activity. Okay, you are done. Huh? Okay. Here are simple questions, right? This should be done quickly. Which is the highest mountain peak in the world? Mount Everest. Mount Everest is going to be the highest mountain peak in the world. And what do you say, which is the highest mountain peak in India? Ideally K2, but then it is Kanchenjunga. We go with Kanchenjunga now because K2 happens to be in POK, right? So we are a little, K2 ideally lies in POK, no? So we don't, uh, it is contested. So you were saying? Can you walk in there with your passport? My question is that. That is my question. Can you walk in there with your passport? With your Indian passport, can you walk in there? Then that cannot be India. Because that happens to be a contested region. Any region where your passport works within the country is part of your territory. And that is not contested at all. Rest will have to be a little problematic. Okay. So we are saying K2 कौन से mountains में lie करता है? Karakoram. Okay. Mount Everest तो Mount Everest है, Greater Himalayas में lie करता है. Kanchenjunga भी Greater Himalayas का part होगा. Okay. And Lhotse is also going to be one tall peak over there only, somewhere in Nepal. Okay. So we are going there. We are saying India के लिए Kanchenjunga, and for the world it's going to be Mount Everest. Okay. Earth completes one rotation around its axis in approximately 24 hours. 24 hours में complete कर लेगा. And what about the revolution around the sun? How much time does it take to complete a revolution around the sun? पूरा एक sun के around पूरा चक्कर काटने में Earth को कितना time लगेगा? 365 and 1/4 days. है ना? 365.25. So you're saying 365 and 1/4 day. All these 1/4 days keep getting added over 4 years, and then you get a leap year and an extra day. Okay. Which layer of the Earth is known as the seema? Which layer do we call the seema? Upper mantle, lower mantle, outer core or crust? Sial and Seema. Remember, we had two of those. So we called Sial the continental crust, and Seema we called as the oceanic crust. So it is going to be the crust. It is going to be the crust.
Sial and Sima are part of the crust. Okay. And between the Sial and Sima, you will find that Conrad discontinuity. Remember, because the densities are different. So obviously you will have a discontinuity over there, and that should be the Conrad discontinuity. Okay. Question 124. The process by which water vapor changes into liquid water is called, which is the process that changes the state of liquids from gaseous to liquid? Condensation. And do we have to supply heat, or is heat released in the process? Release. Heat is released. Okay, that we call as the latent heat of condensation. When we do tropical cyclones, you will understand how important that latent heat of condensation is over there. Okay, so we are saying heat. And what is the process of evaporation? ये आप दोनों बातें क्यों कर रहे हैं? हेलो, पीच शर्ट ब्लैक शर्ट, बातें क्यों कर रहे हैं आप जवाब दीजिए इसका. इवेपोरेशन क्या होता है? What is evaporation? अरे let him tell now. अच्छा ओ, आप बोलिए. When liquid is converted into gaseous state, liquid state to gaseous state converge होता है. Do we have to supply heat, or is heat released in the process? For evaporation to happen, do we supply heat, or should heat be supplied externally, or is heat released in the process? Supplied. Heat is supplied. Very good. Okay. And then what is transpiration? Remember that process in which the leaves give out water vapor, they will release the moisture. है ना, that is just वो stomata होते हैं, उसमें से वो water बाहर निकल जाता है, the water goes out from there, and then this goes and mixes in the atmosphere. That is called as transpiration. It is because of this process and because of the fact that leaves utilize, green plants and everything, they utilize the process of photosynthesis. So the reason why we say that we should plant more trees for the carbon dioxide levels to fall, for global warming to keep in check, to keep global warming in check. They say, afforestation is necessary. And why is afforestation necessary? Because that's a dual thing. That once you plant the trees, first of all, before the process of photosynthesis, they are going to clearly absorb the carbon dioxide from the air. Okay. And secondly, they are also going to release moisture into the air by the process of transpiration. That moisture is going to go up and going to form condense and form clouds and ultimately give us rainfall. So we require all this. Okay. So it is necessary. Afforestation is necessary for this. And what's precipitation? अभी तो करवाया, परसों ही करवाया आपको, परसों नहीं लेकिन पिछले हफ्ते करवाया. What is precipitation? The release of moisture. What happens is air rises upward, condenses, form clouds, and when those clouds become heavy enough, they will release the moisture. Okay. Can precipitation come down only in liquid form, or can it also come down in solid form? Both forms may. Okay. What is the distinction? In which case will there be liquid rainfall, and in which case will there be solid rainfall? पानी कब बनता है, आइस कब बनता है, वो काहे पे डिपेंड करेगा? What does it depend on? Temperature पे depend करेगा. If the condensation happens below the freezing point, then obviously water droplets will be formed. Condensation will be in the form of water droplets. If the condensation happens if the condensation happens below the freezing point, then ice will be formed. And if the condensation happens above the freezing point, then clearly you can get water droplets. Okay. So it depends on at what temperature the condensation happens. If the condensation happens above 0°C, then waterfall will happen. Okay. Rainfall will happen. And if the condensation happens below the freezing point, then you can get sleet, you can get hailstones, you can get snowfall. You're looking at all these things. Okay. Next वाला बताइए. Question 125. Which type of rock is formed from cooled and solidified magma? Igneous rock is formed. Absolutely correct. Okay. Igneous rock is formed from cooled and solidified magma. How is sedimentary rock formed? From the sediments of other rocks. You remember all those sediments are accumulated in one place. Then because of the pressure, they get compressed and compacted. Okay. And that is one layer. Then another few layers of sediments you can add. And again, that also gets compressed and compacted. Then another layer is added. So this is how sedimentary rocks are added. How is, see this, I was discussing this and they told me alluvial is a rock. Metamorphic. Metamorphic कैसे बनते हैं? How do metamorphic rocks form? Meta meaning change. Morph meaning form. So what changes the form of a rock? Meaning the physical and chemical temperature and pressure.
So extreme pressure, like the mountains, when fold mountains are being formed, there is extreme compressive forces acting on both sides. So what happens is these rocks get altered both physically as well as chemically, and they change into some other rock. Okay, usually much more tougher, much more harder kind of a rock. Metamorphic rocks are usually quite less susceptible to weathering in that sense. Okay, okay. All right, let's look at the Tropic of Cancer. Tropic of Cancer passes through which Indian state? Rajasthan. Hello, Rajasthan. You have the satta, na? Garam cheese Batamis. Good. So we are saying Rajasthan, Gujarat, Garam, na? Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Bengal, Tripura, and Mizoram. Okay, these are going to be those eight. I don't know how you're going to remember a Hindi satta. You will remember the satta? Okay, okay. Next one. Which is the largest ocean in the world? Pacific. And if you have to arrange the rest of these four, Pacific, Atlantic, Indian, and then Arctic. Ideally, Indian के बाद Southern Ocean होना चाहिए. The Antarctic Ocean is larger than the Arctic, and then the Arctic. Okay, that is how it's going to be. Okay, question 128. The imaginary line dividing the Earth into northern and southern equator. Equator is the line which divides the Earth into northern and southern hemispheres. Okay, what does the prime meridian do? What does the prime meridian do? It's a longitude, but that will also divide the Earth, right? Into the eastern and the western hemispheres. Okay, it will divide into the eastern and western hemispheres. Similarly, for the ideal also, international dateline, which lies around 180 degrees, it will also divide into eastern and western hemispheres. Okay, which planet is called as the blue planet? Earth, Earth, Earth. 70% water. If you look at it from above, it will look blue to you. Okay. Earthquakes are measured using which instrument? Seismograph. Okay, it is the seismograph that measures earthquakes. What they're essentially measuring is they're measuring the amplitude of the waves that are released. Okay, so whether it is the primary wave, secondary wave, and then followed by the surface wave. So they measure the amplitudes of those, and then the logarithm of that is calculated usually in the Richter scale or the moment magnitude scale to calculate how large or how what is the magnitude of the earthquake that happened. Okay, that is what you see. Hygrometer. What does a hygrometer measure? Humidity. Hygro meaning water, right? So you're measuring the humidity over here. Okay. Thermometer, temperature. Thermometer measures temperature, and a barometer, pressure, air pressure. Very good. Which is the longest river in India? Ganga, Brahmaputra, Godavari, Yamuna. Ganga. Even if the Brahmaputra and the Indus are generally longer than the Ganga, we are looking at the length of the rivers in India. Very correct. Okay, so Ganga is the longest one over here. All right. And उसके बाद कौन सी आती है गंगा के बाद वाली? Godavari. Godavari is the longer one. Godavari is the longer one. Okay. आपको लिस्ट चाहिए क्या रिवर्स की? ये बारिश हो रही है ना? Ganga, then the Godavari, then the Krishna, and then the Yamuna. ये क्या है? GGKY. Okay, and then the Narmada. ठीक है? These are the longest rivers, at least the first 5. Okay. वो इंडस एंड ब्रह्मपुत्र का लेंथ कुछ 900 1100 वगैरह ही आता है अपने यहाँ पे, like some 900 kilometers or 1100 kilometers. So clearly it is no match for the longest rivers over here. All right, ठीक है. 132. India's southernmost point is called Indira Point, है ना? In Nicobar. Cape Comorin. What is Cape Comorin? Kanyakumari. The full map. 3 nasta 12th lagyo 330. Okay, no problem. Cape Comorin is Kanyakumari. Kanyakumari is Cape Comorin. Pamban Island, Rameshwaram. वही उसी के along ना, there is a spit over here in this part of India. What you're essentially saying is that this spit na, this gets elongated. Okay, so we are saying that end of that part is going to be called as Pamban Island, and this is Park Strait na, between India and India की नाक के नीचे. You see, this looks like a person's face na. So this is Park Strait. Okay, so it is what is a strait? It is a narrow water channel that separates two land masses. Okay, so that is going to be a strait.
Uh, what we'll do now, we are at this point now. We'll take a 5 minute break. Okay. You try not moving out. आपको 3:30 तक पढ़ाना है. So we'll wait until we'll take a 5 minute break and then continue the rest.
Gaurav. Okay. India's southernmost. We discussed these questions yesterday other day. Which state has the longest coastline in India? Kerala, Andhra, Maharashtra, Gujarat. Gujarat. And Gujarat के बाद कौन सी state होती है? Andhra, then Maharashtra, and then Kerala. Okay, these are the longest coastlines in India. Next one, the Deccan Plateau is bounded on the west by the Western Ghats, Eastern Ghats, Himalayas, Aravalli Range. You're talking of the Deccan Plateau. Peninsula Plateau का एक छोटा सा part है. Western Ghats on the west, Eastern on the east, and Himalayas are usually way above, or northern mountains है. Aravalli Range usually, in some cases, we say that Aravalli Range is the northern limit of the west Peninsular Plateau. It should be because, but ideally, Vindhya should be considered that because this whole region is considered as central India, right? Madhya Bharat. No, we call this Madhya Bharat. So this is going to be a different thing. Malwa, and all these plateaus over here. Malwa and Bundelkhand and Kaimur Hills and Bagelkhand and all that. So these will all be considered central India. Okay? Okay? Where were we? Here. Which Indian state shares a boundary with Nepal, China, Sikkim, Nepal, China, and Bhutan के साथ अगर कोई state boundary share करता है, that's going to be Sikkim. This is Sikkim for you. Nepal here, Bhutan here, China a bit above. Okay, so that's going to be Sikkim. The Chilika Lake, famous for its bird sanctuary, is located in West Bengal, Tamil Nadu, Odisha, Andhra. Odisha. Okay, it is famously located in Odisha, but the largest saltwater lake in India. And that saltwater lake usually turns fresh water in monsoons. Okay, better remember that. Which is the smallest state in India by area? Goa. Sundarban's mangrove forest is located in the delta of Ganga Brahmaputra. Huh? Godavari, Krishna, and Mahanadi के deltas होते हैं. Do we have deltas for Godavari, Krishna, and Mahanadi? No, they don't have deltas. We do have. They do have. There are deltas because now these are rivers that go into the flow in the eastern direction. What happens with these rivers is they are really huge, okay, long rivers. So, and pretty much graded. They will bring a lot of sediment with them. By the time they reach this place, the gradient is going to be almost flat. Okay, the land is flat because you'll find the eastern coastal plains. And the eastern coastal plains being really flat, what happens is one, the rivers are slow because of all the silt that they are carrying. Secondly, they also become they okay, we are back in business. Uh, 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 uh. Okay, bye bye. Sorry, here we are. We are discussing which is the largest. The answer, if somebody missed out, the Sundarbans mangrove, which the largest continent by area is going to be Asia, and followed by Asia. How do you arrange these in largest continents? Asia के बाद क्या आएगा? Africa. Africa के बाद North America, and North America के बाद Europe. Okay, this is how you arrange them in order. All right. Amazon River flows into which ocean? Atlantic. Famously, it goes into the Atlantic Ocean. Wherever, and it, sorry, 139 is going to be Asia. अच्छा, sequence. Asia, Africa, North America, South America, Europe, Australia. So, और कुछ रह गया ना? नहीं. अंटार्कटिका रह गया? कॉन्टिनेंट्स क्या है ये? ये गलत है. यहाँ आ जाएंगे. Continents by size. एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ, अंटार्कटिका. हाँ, फिर अंटार्कटिका आएगा.
and then uske baad Europe, and then Australia. This is going to be the size. Okay, by size you're going to arrange the continents like this: Asia, Africa, North America, South America, then Antarctica, then Europe, then Australia. Australia and Oceania together, like we are considering all of that together. Where were we? Here. Amazon flows into the Atlantic, famously flows into the Atlantic. This is where the Amazon will go. We are looking at this part. Okay, we are saying the Amazon is going to flow over here into the Atlantic Ocean, and where it flows into the Atlantic Ocean, it is going to go and deposit so much water. इतना ज़्यादा पानी छोड़ के आती है वो वहाँ पे कि वो the color of the ocean changes, the salinity of the ocean changes. It becomes almost fresh water instead of saline water. The ocean. There is so much water, there is so much discharge of the Amazon over there. Okay, okay, cool people. ये फटक से हो जाना चाहिए, ये 20 मिनट में हो जाएगा आपका, ये पेपर भी खत्म हो जाएगा, नहीं होगा 20 मिनट में हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. सन इज कंपोज्ड मेनली ऑफ hydrogen and helium. It's a star. It will require that process. No? Nuclear fusion for processes is going to require. So it will require to combine 4 hydrogen atom to combine into 1 helium nucleus. And in that process, tremendous amount of heat and energy is going to be released. Okay. Energy of the sun is produced by fusion. P. Acha, nuclear fission, nuclear fusion of hydrogen into helium, chemical combustion or radioactive decay. It is going to be nuclear fusion. It is this of fusion. Okay. Does combustion release energy or consume energy? Does chemical combustion release energy or release करता है? कंज्यूम नहीं करता है एनर्जी, आपको एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ती है कंबशन के लिए, करनी पड़ती है लेकिन रिलीज भी करता है. ओके, यू रिमेंबर दोस कंप्लीट एंड पार्शियल कंबशन का थिंग. हाँ, कंप्लीट कंबशन हो जाए तो CO2 रिलीज होता है, एंड अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, सो यू डू नॉट वांट दैट थिंग. एंड व्हाट्स अ रेडियो एक्टिव डीके? What is radioactive decay? Decay. What is radioactive decay? Half-life concepts. Do you remember the half-life concepts for radioactive materials? Sorry? And you remember that? Spontaneous process by which unstable atomic nucleus loses energy by emitting radiation. That is radioactive decay. So that it can come to a stable state. Okay, that is essentially radioactive decay. And the decay rate is measured by its half-life. That is the rate. That is the way to measure the decay rate. See how it is happening. So it is called as half-life. It is the time required for half of the radioactive atoms in a sample to decay. Okay, so that is essentially how you measure at which rate the radioactive element is decay or emitting radiation. That is essentially what's happening. Okay. Okay. Now we are looking at the third one. Which planet is known as the morning star and the evening star? Venus. Famously Venus. It has sulfuric acid in its atmosphere. They go form clouds, and when the sun's rays hit those clouds, they will be reflected back, because of which we can see that it is one of the brightest objects in the sky, night sky. Okay. Okay. The largest planet in the solar system is Jupiter. The planet with the highest surface temperature is Venus again. Okay. Mercury does not have an atmosphere, so it cannot, even though it is closest to the sun, it cannot be the one which is very hot. Okay. Venus, the atmosphere for Venus contains a large amount of carbon dioxide. Okay. The carbon dioxide is a greenhouse gas, so it tends to keep and retain all the heat that it can absorb. Okay. So because of that, what happens is that the temperatures of Venus go somewhere in the range of 400 to 500 degrees Celsius. Okay, the temperature for Venus can be really, really high. Light year is a unit of distance. Light year is a unit of distance. And how do you measure, what is the normal speed at which light travels? 3.8 into 3 into 10 raised to 8 meter per second. Nearest star to the earth after the sun is nearest star. Nearest star to the earth after the sun is Venus planet है ना अपना. Sirius, Alpha Centauri, Proxima Centauri, Bernard star और Vega. नहीं Sirius is दूर ना, Sirius तो थोड़ा दूर है. BB, Alpha Centauri, Proxima Centauri.
We are talking of the Alpha Centauri system and a star in it, which is called as Proxima Centauri. Okay, Proxima means closer to us. So Proxima Centauri. Okay, which planet is called as red planet? Mars. Famously, Mars is called as red planet. A galaxy to which our solar system belongs to is called Milky Way. The total number of standard time zones in the world is 24. Because we gave a standard time zone by an hour. Okay, so the Earth takes 24 hours to complete one rotation. So every hour will have a standard time zone. Okay, so normally, even though we say standard time zones are 24, there are some countries like India, Nepal, Pakistan, not Pakistan, but there are some other countries that utilize time zones in half an hour distance also, half an hour difference also. Okay, so normally we are talking of 1 hour standard time zones, right? So sometimes, like India does, it goes with the GMT plus 5.5 hours. Okay, it does not go with GMT plus 5 or GMT plus 6. It goes with GMT 5.5. So if you count all these time zones together, then that comes close to 38. Okay, so existing time zones, existing standard time zones that various countries have adopted will all come to 38. Okay, but remember, standard time zones are going to be by the hour and they are going to be 24. Okay, the Earth's axis is inclined to the plane of its orbit at an angle of plane of its orbit. Its orbit around the sun. Orbit meaning now you have to move around something. So 66.5. हाँ नहीं क्या ऑर्बिट अगर वर्टिकल एक्सिस के साथ 23 है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना होगा? अगर वो कहेंगे कि इट्स द प्लेन ऑफ इट्स एक्सिस सीखना तो 12th स्टैंडर्ड ना. Oh, where were you all this time? Okay. So what is going to be the plane of the orbit? 66.5. Plane of orbit is going to be 66.5. Equator is the line of latitude at 0 degrees. Very good. The Tropic of Cancer lies at a latitude of approximately 23.5 degrees north. Okay, good. The lines joining places of equal longitude are called as parallels, meridians, isobars, isotherms. Meridians. You have parallels of latitude and meridians of longitude. Meridians because they run from North Pole to South Pole. Okay, they're going to be meridians of longitude. The prime meridian, 0 degrees. Hey, wait a minute. What are isobars and what are isotherms? Lines joining places of equal pressure, and isotherms are lines joining with places of equal temperature. Okay, good. Prime meridian 0 degrees longitude passes through Greenwich. Absolutely, Greenwich se pass karta hai. The standard time of a country is determined by its central meridian, longitude. It is the longitude which decides the time. Latitude decides the climate for a place or the temperature or pressure or whatever. But it is the longitude that will decide the local time and hence the standard time for a place. Okay. Each degree of longitude corresponds, each degree of longitude corresponds to a time difference of 4 minutes. 4 minutes. We are saying it takes 24 hours to complete a whole rotation of 360 degrees. So we are saying to complete a rotation of 15 degrees is going to take you an hour. And to complete 1 degree rotation, it's going to take you 4 minutes. Okay. International date line roughly follows the meridian of 180 degrees. 180 degrees. Zigzag line है. It will never pass through land. It can only pass through water. And the islands closer to it can decide whether they want to be on this side of the line or that side of the line. Okay, the line will adjust itself accordingly, right? And on crossing that international date line, your date changes by exactly 1 day. Okay, okay. You will gain 24 hours if you cross it from the west to the east. If you go towards US, you will gain 24 hours. If you come towards Japan, you will lose 24 hours. Okay, okay. ये वाला बताइए, Indian standard time is based on the longitude of 82.5 degrees east. Okay, 82 point बोला ना अभी 82.5 degrees east वो Avengers of MCU आंध्र ओडिशा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश से पास करेगा. Basically passes through Uttar Pradesh and Mirzapur in Uttar Pradesh. Okay, IST is ahead of Greenwich Mean Time by 5.5 hours. 5 hours 30 minutes. Okay, ठीक है चलेगा.
We have another 10 minutes. ये आपको टफ लगे थे ना उस दिन को, आप मुझे बता रहे थे ये टफ लगे थे आपको। ये वाला देखते हैं, मैच द सेंचुरी विद इट्स स्टेट। शरावती वैली, सतकोसिया गॉर्ज, पिरोतान आइलैंड एंड भगवान महावीर। And your options are Gujarat, Goa, Odisha, Karnataka. Okay. Here is the thing. Where is Sharavati? Famous is Sharavati. What do we know about the Sharavati River? It forms one of the highest untiered falls in India, Joke Falls. Remember, उसके वो 4 streams आते हैं, राजा, रानी, रोरर, रॉक. I'll show it. I have no problems. कल भी दिखाया था मैंने. दिख रहा है आपको? Can you make out these 4 distinct falls? They get their own names. They are called Raja, Rani, Roarer, Rocket. Okay, so these are those joke falls. See these? In obviously during monsoons they become far bigger, the voluminous, and during normal dry days then they are clearly a little less this. Okay, so that is monsoon for you. Sorry, that is joke falls for you. Okay, so we are saying Sharavati is Karnataka. Sharavati Valley is famously Karnataka. Okay. Any other thing that you know? Satkosia. Satkosia is going to be Mahanadi Gorge. So where are we now? Odisha. Okay. Satkosia is in Odisha. Okay. We are near that gorge. The reason is it flows between 2 mountains right over there. And the distance between those 2 mountains is 7 kos, meaning leagues. नहीं क्या ऐसे? तो 7 kos इसलिए the name gets called Satkosia. Okay. So that is going to be that gorge. That is in Odisha. Okay. Pirotan Island, Gujarat. Pirotan Island is Gujarat. It is one of those rare places where you go directly into the sea, and when there is low tide, the water all shifts inside, right? So at that time, they allow the tourists to walk in, and then you can see all those low-lying, all these organisms, marine organisms that are otherwise, hidden under the high tide waters. You can see them in low-lying areas, and they are exposed to the atmosphere now. So it is that one of those very few. It is very well protected. You have to travel some 2.5 hours in the sea just to get to the place. So that is a different thing altogether. Okay, that's Pirotan Island in Gujarat. And Bhagwan Mahavir in Goa. You have those Dudhsagar Falls over there. The famous Dudhsagar Falls you will find there over there. Okay, Bhagwan Mahavir Sanctuary is going to be Goa. Okay, so what is our option going to be? 4, 3, 1, 2. ये वाला C. 4, 3, 1, 2. Okay, that's going to be your option. Okay, जी, ये बताइए, which organization publishes the worldwide list of endangered species? IUCN. ये वाला. है ना? This is going to be that organization that publishes those list of endangered. Remember, they come in those 6, 7 categories. Tanya, people, just one moment. Hello, ma'am. मैं ये क्वेश्चन आंसर कर देती हूँ आपके लिए. We are looking at the IUCN categories. So these are, ये क्या है? अरे नहीं यार, protected areas नहीं, protected species. Threatened species. चलो जी, these are those categories. पहले तो extinct होते हैं, meaning no surviving individuals of the species exist. Then there is one which is called as extinct in the wild. Okay, meaning whatever is left is only whatever species, whatever individuals of the species are left are only within captivity. Zoos में या ऐसे कहीं रखे हुए हैं. So those are those you don't find them anywhere in the wild, ऐसे. And then there is the critically endangered, that they are at very, very high risk of being endangered. Okay, that is the category. Then there is the endangered category, okay, where there is high risk of extinction.
And then there's the vulnerable, which is facing another high risk of, but it is a little less than endangered. Okay. And then there's the near threatened. Now the numbers are dwindling so rapidly that they can be threatened into extinction. That sort of a thing. Okay. And then there is the least concern, and meaning like mice, rats, or chicken or something. You will find them everywhere, right? You don't have to be worried that you are running out of this species, right? Agree? So we are looking at least concern, and then data deficient, meaning data is not available at all. Okay, you don't have any data. And not evaluated, meaning you have never been able to process or analyze the data. That is not evaluated. Okay. Our concern is usually over here. Near threatened, vulnerable, endangered, or critically endangered. Okay, these are the four categories between which we usually tend to move in and out. India usually publishes a list of all these. The IUCN publishes this red list, but India usually has a number of species in that list. You need to keep a watch out on that. Okay, you need to look out for those species. Usually a month or two before your exams, IUCN comes out with that red list, and then you need to find that information and keep it in your head, okay, for the exams. All right, people, thank you very much. Animals, plants, everything. This will go for all species.
बच्चों को भगाए थे। वो भी सपोर्ट करते। हाँ अभी हम गए ना पहिला अरे कॉल जातो वो जो ये ना कॉल जाए बाबू गर्गी I'm here the host now. जी सर, यार वन ऑफ यू ज्वाइन इट फ्रॉम हियर ना, एनडीए ऑनलाइन का लेक्चर ज्वाइन कीजिए ना। थैंक यू सर। एनडीए ऑनलाइन का फिर अभी आप कैसे ज्वाइन करेंगे, देख लीजिए आप कैसे कर सकते हैं। Join this lecture from the beginning. Let me remind you that we are going to do the same questions again, because this is a wholly different batch. So if you do not wish to stay here, because I'm going to discuss the very same questions all over again. So if you do not wish to stay here, then you can join another lecture, whichever you feel. NDA online lecture. Join. ये क्या है? ये कुछ और ही है।
अरे नहीं, you this is not the meeting. You have to join NDA online. I don't know what this meeting is. अब यहाँ से बाहर आइए, कैसे बाहर आएंगे? हाँ. People, listen, you're the same batch with which we did humidity, temperature and humidity the other day, right? हाँ जी, वो ये वाली NDA online ना, we are joining NDA, नहीं NDA online, ये वाला पिच्चू वाला, ये बीच वाला, हाँ उसके नीचे, हाँ जी वो. क्लास 12 का है, इसको NDA online नहीं बुलाते हम लोग. नहीं, but we are in the same one. Don't join with the computer audio, हाँ. Continue, Papa. Okay. Thank you. Okay, we are good. Thank you. People, listen at 12th standard. Since this is not a joint lecture between you and this is not a joint lecture between you and 12 plus, I cannot continue ahead with the what do you say, theory part of it. Okay, can you please stop talking on the phone? White and green shirt. So we are supposed to, we'll just discuss the questions that we've been NDA GAT papers that you've attempted so far. You'll probably hopefully try to answer the questions. What say? 12 standards, did anything get through to you? Okay. First question. ये आपने ये पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं? हाँ किए है ना, everybody has attempted these papers. Good. ठीक है. Consider the following statements regarding the Earth's interior. S waves can travel through solid and liquid mediums, and Morovic discontinuity separates the crust from the mantle. Did you say yes to the first sentence? No. Okay. ठीक है. S waves can. B is correct. B is correct. Absolutely correct. We say कि Morovic discontinuity जो होता है, वो definitely crust and mantle को separate करता है. This statement is correct. Okay, that how are the discontinuities? What is the setup for the discontinuities? Chief ministers are great leaders, right? That is the setup, है ना? So crust, Conrad जो है, वो तो crust में ही lie करती है, and Morovic जो है, वो crust and mantle के बीच में lie करती है, right? That is the discontinuity over there. So this is correct that the Morovic discontinuity separates the crust from the mantle. Do S waves travel through both solid and liquid mediums? No, that ability is. So that ability only belongs to P waves. It is only the P waves that can travel through all media, but the S waves and the surface waves can only travel through solids. Okay. Hence the larger shadow zone also. S waves will always have a larger shadow zone because they cannot travel through the liquid medium. Okay. So we'll go with 2 only. That is going to be the answer. Which of the following statements regarding igneous rocks is correct? We are looking at they are stratified and contain rich fossils. Basalt is a classic example of extrusive igneous rock. Granite forms due to rapid cooling of on the Earth's surface, and they are formed due to intense pressure on pre-existing rocks. 1 second now. White and black shirt. Hi. Can you answer? Can you tell me if the first statement is correct? They are stratified and contain rich fossils. Is that correct about igneous rocks? That igneous rocks are stratified, meaning they are made up of layers, and that they contain rich fossils. You only, Baba, black and white shirt. What else should I call you?
others rocks stratified, उसमें layers होते हैं? नहीं होते. Layers कौन से rocks में होते हैं? Sedimentary rocks में. Very correct. Layers sedimentary rocks में होते हैं. Can igneous rocks possibly contain fossils? नहीं. Sit down. White shirt. Your friend says igneous rocks cannot contain fossils. Is that right? Igneous rocks में fossils नहीं होते हैं. क्या ये सही है? Yes. क्यों नहीं होते? How are igneous rocks formed? लावा से. लावा कूल सॉलिडिफाई हो जाए तो उसके बाद igneous rocks बनते हैं. क्या वो लावा किसी फॉसिल को अलाउ करेगा एग्जिस्ट करने के लिए? मेल्ट कर डालेगा ना. 1000 से 1200 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है उसका, उसमें क्या बचेगा, राइट? व्हाट कैन पॉसिबली सर्वाइव, हाउ कैन अ फॉसिल पॉसिबली सर्वाइव एट 1000 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? सो क्लियरली देयर आर नो फॉसिल्स. वो लेयर्स में नहीं बनते हैं. यू विल गेट अ ग्रेनी और क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म. ओके, मोस्टली इग्नियस रॉक्स जो होते हैं वो ग्रेनी और क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में बनते हैं. बेसाल्ट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ व्हाइट एंड ग्रीन शर्ट. स्टैंड अप. व्हाइट एंड ग्रीन शर्ट. Basalt is a classic example of extrusive igneous rock. Is that correct? You can either know the answer, you cannot know the answer. If you do not know the answer, just tell me so. No, you don't know the answer, your friend. You also don't know the answer, your friend. No, you. आप में से किसी को पता है? हाँ जी बोलिए. Sit down. Thank you. Very correct answer. Igneous rocks जब बनते हैं तो उसमें आपके पास दो conditions होंगे. Either, is there anybody in the class who doesn't understand Hindi? कोई है जिसको हिंदी नहीं समझ आता है? हाँ, गुड. ठीक है. सो igneous rocks बनने का दो तरीका होता है. There are two ways of this happening. Either the lava cools or the magma cools and solidifies. Okay. Magma meaning it will happen below the surface of the earth. तो अगर magma happens to be below the surface of the earth, तो if the magma cools and solidifies below the surface of the earth, तो intrusive igneous rocks बनेंगे. If the lava happens to cool and solidify above the surface of the earth, तो extrusive igneous rocks बनेंगे. Okay. If extrusive igneous rocks बन रहे तो clearly external factors को exposure बहुत जल्दी मिलता है. पानी से, हवा से. तो वो जो कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन होगा उसका प्रोसेस हमेशा थोड़ा सा एक्सेलरेटेड होगा. ओके, व्हिच मींस कि अगर ये जबरदस्ती से कूलिंग हो रहा है तो ये जो ग्रेन्स बनने का प्रोसेस है वो बहुत रैपिडली एक्सेलरेट हो जाएगा. ओके, वो थोड़ा सा एक्सपेडाइट हो जाएगा. व्हिच मींस जो ग्रेन्स बनेंगे वो छोटे छोटे बनेंगे. अपीयरेंस यूजुअली ग्लासी सा होगा. ओके, पॉलिश्ड ग्लासी सा अपीयरेंस होता है. तो दैट इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ हाउ बेसाल्ट इज फॉर्म्ड. सो बेसाल्ट इज अ एग्जांपल ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. ग्रेनाइट कैसे बनेगा? ग्रेनाइट आराम से कूलिंग होगा, आराम से सॉलिडिफिकेशन होगा, ग्रेन साइज अच्छा खासा बड़ा बड़ा हो जाएगा. रॉक जो प्रॉपर इग्नियस रॉक बनने का प्रोसेस है वो it will take all the time that is required and will finish off properly. Okay, black shirt, can you repeat what I just said? A good option for you would be to sit in a lecture where you can actually pay attention, do something creative with your time rather than sit here and waste mine and your time both. यहाँ नहीं बैठना है आपको तो किसी और क्लास में जाके बैठिए ना. Go someplace else. All four of you, because you clearly are not paying attention and this is not the first time that this has happened, right? So go and spend your time someplace. आपको ज्योग्राफी कहीं और से सीखिए और आज भी कहीं और कुछ पढ़ लीजिएगा, because every time I'm going to stop the lecture right in the middle and stop everybody's education just for you four to have some semblance of discipline in the class. We don't need that ना. रोज रोज करने की जरूरत नहीं है. तो आप लोग जाइए कहीं और बैठिए. सजेशन नहीं है, ऑर्डर है. टीचर्स ऑर्डर्स देते हैं ना. जाइए आप चारों क्लास के बाहर जाइए. Anybody else who wishes to follow them? मुझे रोज रोज बैठ के क्लास में ये सब नहीं करना है. मैंने पहले भी कहा था मैं एक बच्चे को पढ़ाऊंगी और पूरे मन से पढ़ाऊंगी. मुझे डिस्टर्बेंसेस नहीं चाहिए क्लासरूम में. अरे गो ना. और बैग्स वैग लेके जाइए, फोन लेके मत जाइए. फोन पे कौन पढ़ाई करता है? अजीब बच्चे. ग्रेनाइट रैपिड कूलिंग से होगा? नहीं. ग्रेनाइट के लिए आराम से स्लो कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन लगेगा. ओके, एंड दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू इंटेंस प्रेशर ऑन प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स. कौन से रॉक्स
बनते हैं जो प्रेशर से बनेंगे, मेटामॉर्फिक। अगर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक को ट्रिमेंडस प्रेशर या ट्रिमेंडस हीट को एक्सपोज कराओ तो वो रॉक के फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों अल्टर कर जाते हैं एंड देन ऐसे रॉक्स को हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बुलाएंगे। सो वी विल ओनली गो विद दिस आंसर। ओके, बेसाल्ट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्वेश्चन 103 भी देखिए, द प्रोग्रेसिव ड्रॉप इन टेंपरेचर विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड विद इन द ट्रोपोस्फियर इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। वी आर सेइंग कि ये रहा आपका सरफेस ऑफ द अर्थ और वहां से जितना आप ऊपर जाएंगे, ऑल्टीट्यूड में ऊपर जाएंगे, उतना टेम्परेचर ड्रॉप करता जाएगा, मीनिंग वार्म एयर बिलो, कोल्ड एयर अबव। ओके, ऐसा स्कीम होगा। सो वी आर सेइंग कि इसको हम ट्रोपोस्फियर में नॉर्मल लैप्स रेट बुलाते हैं क्या? हाँ, ट्रोपोस्फियर में जैसे विद ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर ड्रॉप करेगा एंड उसको नॉर्मल लैप्स रेट या एनवायरमेंटल लैप्स रेट बुलाते हैं। ओके, उसका वैल्यू कितना होगा? 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 165 मीटर्स, 6.5 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 किलोमीटर, बोथ ए एंड बी करेक्ट, या फिर 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 1000 मीटर्स, both A and B are correct. Okay, we are saying ये दोनों कैलकुलेशन सही है। आइडियली हम याद रखते वक्त you normally gravitate towards 6.5 पर किलोमीटर, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर से ड्रॉप होता है टेम्परेचर, लेकिन हर 165 मीटर्स पे भी 1 डिग्री का ड्रॉप होता है ना, तो ये दोनों करेक्ट है। A and B are both correct calculations. Okay, so we are going with C. Option C is correct. The specialized atmospheric layer containing a high concentration of ozone that absorbs lethal UV rays is located within the troposphere, stratosphere, mesosphere या thermosphere. Stratosphere. It is the stratosphere that contains the ozonosphere. Ozone क्या करता है? वो जितना भी UV rays है उसको absorb कर लेता है, because of which उसका temperature बढ़ते जाता है। Troposphere में फंडा कैसे होता है? With increasing altitude, the temperature clearly drops. Okay, what happens in the stratosphere? With increasing altitude, the temperature keeps on rising. It is because of this ozonosphere, because that ozone has absorbed all the energy now, all those UV rays, because of which the temperature is increasing. Okay, what is the special? Yes, नहीं, ओके। ट्रोपोस्फियर की स्पेशलिटी क्या है? हम ट्रोपोस्फियर को क्यों याद रखते हैं? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वी लिव ओवर हियर। सेकेंडली, इट विल आल्सो बी दैट लेयर जिसमें आपको डस्ट मिलेगा एंड वाटर वेपर मिलेगा। सो क्लियरली वेदर के जितने फेनोमेनन होंगे वो इस लेयर में मिलेंगे। दिस इज द लेयर विद इन व्हिच विल फाइंड ऑल द फेनोमेनन फॉर वेदर। ओके, ट्रोपोस्फियर is also the densest layer, the closest to the surface of the earth and also the densest of all the layers. Okay, what is the speciality of mesosphere? मेसोस्फीयर माने मिडिल लेयर। नाउ वी आर सेइंग ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर मेसोस्फियर। तो मेसोस्फियर का स्पेशलिटी क्या है? कोल्डेस्ट है ना, इट इज द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स। क्लियरली वहां पे विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर कीप्स ऑन ड्रॉपिंग। ओके, तो आपको सबसे कोल्ड टेम्परेचर मेसोस्फियर के सबसे एंड में मिलेगा, सबसे हाइट पे मिलेगा। ओके, मेसोस्फियर में एक और चीज होती है बहुत इंटरेस्टिंग, क्या होता है वो? मीटियोर शावर्स। रिमेंबर व्हाट हैपेंस? वो बाहर से मीटियोराइड आता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, मीटियोर बन के एंटर करता है। देन जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में से पास करता है तो एक्सोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर इज नॉट सच अ ह्यूज प्रॉब्लम बिकॉज क्लियरली डेंसिटी ऑफ एयर नहीं है। बट जैसे ही वो नीचे आता है मेसोस्फीयर में तो हल्की हल्की डेंसिटी ऑफ एयर मिल जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ट्रेमेंडस स्पीड से आता है, राइट, द मीटियोर। तो क्लियरली जब वो जोर से नीचे आता है तो वो एयर को कंप्रेस करता है। एयर को कंप्रेस करने से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है एयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो मीटियोर नेचुरली वो जल जाएगा उसके अंदर। वो हाई टेम्परेचर में द मीटियोर स्टार्ट्स बर्निंग अप, breaks into multiple pieces, starts burning up and travels through the atmosphere, वो हमको मेसोस्फीयर में दिखाई देता है। Okay, if the meteor does not burn up completely within the atmosphere and manages to hit the earth and impact the earth, तो हम उसको बुलाते हैं meteorite। Okay, ITE ऐसे meteorite बुलाते हैं। तो बाहर जब होगा तो एस्टेरॉइड की तरह meteorite होता है, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रैवल करता है तो उसको मीटियोर बुलाते हैं, एंड जब अर्थ को हिट करके इंपैक्ट करता है तो उसको मीटियोराइट बुलाते हैं। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। And what about the thermosphere? Thermosphere का क्या पता है हमको? What do we know about the thermosphere? Which is this? What is the special condition about the thermosphere? Auroras. अरोराज मिलते हैं हमको थर्मोस्फियर में, आपको अरोराज मिलेंगे, नेचुरल डिस्प्लेस ऑफ लाइट, है ना। क्या होगा? वो सन से जो सोलर विंड्स आते हैं वो वहां पे अपर एटमॉस्फेयर में डिसेंड कर जाएगा। ओके, थोड़ा सा प्रेसिपिटेट करेगा वहां के सोलर विंड्स। अब वो तो आयनाइज्ड पार्टिकल्स है, सारे सन से सोलर विंड से जो आते हैं वो तो आयनाइज्ड पार्टिकल्स है। तो वो आयनाइज्ड पार्टिकल्स जाते हैं और हमारे एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स को चार्ज करा देंगे। ओके, तो वो एनर्जी एक्स्ट्रा लेके अनस्टेबल हो जाएंगे एंड उनको स्टेबिलिटी पे आने के लिए वो एनर्जी एमिट करना जरूरी है। तो जैसा गैस होगा उस तरह का लाइट एनर्जी वो डिस्प्ले करेंगे, एमिट करेंगे, एंड दैट इज एसेंशियली व्हाट यू कॉल एज एन अरोरा। ओके, एंड देन दे कम टू अ स्टेबलाइज्ड स्टेट। तो मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ पे यूजुअली आपको ये दिखता है क्योंकि वही ज्यादा खींचेंगे ना वो पार्टिकल्स को, आयनाइज्ड पार्टिकल्स को खींचने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी? मैग्नेटिक पोल्स के, अर्थ पे। ओके, तो अगर ये यूजुअली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बनता है तो उसको अरोरा
बोरियलिस बुलाते हैं। अगर ये सदर्न हेमिस्फीयर में बनता है तो उसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस बुलाएंगे। वेरी करेक्ट। ओके, इनको मैच करा के देखिए। योर ऑप्शन, योर आंसर इज गोइंग टू बी बी, स्ट्रेटोस्फीयर। ओवर हियर योर आंसर इज गोइंग टू बी बी। क्वेश्चन 105 को मैच करा के देखिए। मैच द फॉलोइंग लोकल विंड्स विद द प्राइमरी regions of occurrence. Chinook, Rocky Mountains, Harmattan, West Africa, Mistral, Alps और France. वेरी ट्रू, मिस्ट्रल एल्प्स या फ्रांस में मिलते हैं। दिस इज वेर यू फाइंड द रॉकीज। हाँ, ये रॉकीज है, राइट? यहाँ पर आपको रॉकीज ऊपर से मिलेंगे, बट आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट। वी आर सेइंग ये जो माउंटेन्स, ये जो विंड्स होते हैं ना, चिनुक जिसको हम बुलाते हैं, चिनुक उसका लोकल नाम है, वहां पे जो भी ट्राइब होगी उसके हिसाब से उसको चिनुक बुलाते हैं, बट उसका एक्चुअल ट्रांसलेशन होता है स्नो ईटर, जो स्नो को खा जाए। ओके, सो वी आर सेइंग ये रॉकी माउंटेन्स जो होते हैं, वहां से वो विंड्स ऐसे नीचे की तरफ डिसेंड करते हैं। कोई भी विंड जब नीचे की तरफ डिसेंड करेगा, कैटाबैटिक विंड्स, तो उसकी खासियत क्या होती है? वो नीचे की हवा को कंप्रेस कर देगा। हवा को कंप्रेस कर देगा तो टेम्परेचर का क्या होगा? द टेम्परेचर विल राइज, एंड दैट रिजन टेम्परेचर इज गोइंग तो मेल्ट ऑल द स्नो। जितना भी स्नो वहां पे जमा हो जाता है ना, उसको वो मेल्ट कर देता है। तो यूजुअली बहुत सिवियर कोल्ड कंडीशंस अगर वहां होंगे तो विद इन मिनट्स वहां पे टेम्परेचर राइज कर जाता है, एंड इट बिकम्स वेरी प्लेजेंट, बहुत अच्छा प्लेजेंट लगने लगता है। ओके, सो ऑल दैट सिवियर कोल्ड दैट यू आर फीलिंग इज नॉट फेल्ट एनीमोर। सो चिनूक इज एक्चुअली कंसिडर्ड अ वेलकम विंड, स्पेशली व्हेन इट कम्स इन द कोल्ड विंटर्स। ओके, तो ये चिनूक इन द रॉकीज, ये हर्मटान इन द दिस डायरेक्शन, सहारा से लेके ऑल द वे गल्फ ऑफ गिनी तक आता है। ओके, तो दिस इज अ ड्राई डस्टी विंड। हाँ, ये वाला जो विंड होता है वो ड्राई डस्टी विंड होता है। किस तरफ जा रहा है? कोस्टल रीजन्स की तरफ जाता है। ओके, कोस्टल रीजन्स में यूजुअली रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझता है? मतलब बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो गया, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है हवा में। ओके, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यूजुअली हाई होती है। यार, जो कोई पीछे बातें कर रहे हैं, हेलो सर, कैन यू प्लीज नॉट टॉक? So what happens is the relative humidity is very high at that point. Okay, तो बहुत ज्यादा relative humidity से क्या होता है? वो थोड़ा stifling लगता है ना। You feel, you know, बारिश के आने से पहले जो आपको फीलिंग आती है ना, थोड़ी सी गर्मी लगती है, थोड़ा टेम्परेचर हाई लगता है, डिस्पाइट यू नो कि अभी टेम्परेचर क्लियरली हाई नहीं है, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है तो गर्मी जैसा लगने लगता है ना। इट इज वेरी अनप्लेजेंट। बहुत हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी और बहुत लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दोनों बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। तो ये बहुत हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जगह पे एक ड्राई डस्टी विंड आता है, तो वो ड्राई विंड उस सारे वाटर वेपर को खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, एंड उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से फिर वापस प्लेजेंट लगने लगता है। हर्मटान फेमसली called as the doctor because it makes you feel pleasant. And then last of this is going to be Alps. यहाँ पे ये फ्रांस एल्प्स में मिस्ट्रल करके कोल्ड विंड आता है, उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने पास, बस कोल्ड ऐसे पता है। ओके, ठीक है, मतलब होगी, लेकिन वी आर नॉट लुकिंग इनटू इट करंटली। ये दोनों के बहुत बड़े एक्सप्लेनेशंस होते हैं। चिनुक के एंड हर्बटान के हमेशा बड़े एक्सप्लेनेशंस आते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग विद ऑल थ्री, वी आर सेइंग ऑल थ्री आर करेक्ट ना, तीनों कॉम्बिनेशन सही है। The characteristic Mediterranean type of climate is globally recognized for which specific weather combination? We are saying cool summers, dry winters, dry hot summers, wet mild winters, heavy rainfall throughout the year, extreme temperature variations with no rainfall. D for Delhi, B for Bombay. हाँ जी, बिल्कुल सही। We are saying कि ये वाला ड्राई हॉट समर्स, वेट माइल्ड विंटर्स। ओके, नॉर्मली अगर आप दुनिया भर के क्लाइमेट्स कंसिडर करो तो इन ऑल द क्लाइमेट्स यू विल सी दैट यू विल गेट समर रेन्स। ओके, इट इज, अभी हमारे यहाँ पे भी समर एक्सटेंड्स इनटू मॉनसून एंड दैट्स हाउ वी गेट रेन्स, राइट? इट इज द समर दैट यूजुअली ब्रिंग्स रेन्स इन ऑल क्लाइमेट्स। ओके, दिस इज द ओनली क्लाइमेट in the world where the summer is rainless and the winters bring rains. Okay, normally there are climates where you can have rains both in summers as well as winters, but we are looking at a very specific climate where you do not get rains in summer, you only get rains in winter. Okay, now the thing with Mediterranean climate is that it usually lies on the western coast of continents. Okay, you're looking at the western coast of continents, so obviously it will be affected by the westerly winds, huh? And the westerly winds are always onshore, meaning they are going from the sea towards the land. Okay, they are going from the sea towards the land, found between 30 degrees to
45 degrees north and 30 to 45 degrees south. That is where you'll find them on the western coast. Okay, so you are looking, what happens is, since the westerlies are onshore during winter, but they will get all the moisture from the sea and go and precipitate it or throw it on the land. Okay, and that's how you get winter rains. Okay, very famous. Mediterranean climates are very famous. There is another pattern in India where you get rains over here in Tamil Nadu. And now you get winter rains in Tamil Nadu, a bit of Andhra, and sometimes a little bit of Kerala. Would that be considered Mediterranean climate? In winter, when there is winter in India, we get rains in Tamil Nadu and Kerala. Would that be considered Mediterranean type of climate? No. Where does India's major rainfall come from? Southwest monsoons, absolutely. Okay, always southwest monsoons. This is a weird thing that happens because the returning monsoons or the northeast monsoons usually cross the Bay of Bengal, and those moist winds are going to give some rainfall over here. Okay, in the winters, the direction of the winds is from the northeast to the southwest. Okay, so while crossing the Bay of Bengal, they'll give rains to over here in Tamil Nadu and Andhra and stuff like that. But that is not called Mediterranean climate. Usko hum Mediterranean nahi bulate. Is this good? ये बताइए, ये कहाँ होता है? कूल समर्स, ड्राई विंटर्स, ये कौन से क्लाइमेट में मिलेंगे? कूल समर्स, ड्राई विंटर्स, कॉन्टिनेंटल टेम्परेट. हाँ, वहां पे आपको समर्स कूल होते हैं क्योंकि नाउ यू आर वे बियॉन्ड द ट्रॉपिकल रीजन्स. तो आपके समर्स कोल्ड, समर्स कूल होने चाहिए, हॉट नहीं हो सकते. वार्म या हॉट समर्स नहीं हो सकते, है ना? जितना लैटिट्यूड में आप ऊपर की तरफ जाओ, योर समर्स आर नॉट गोइंग टू बी रियली वार्म और हॉट बिकॉज सन के उतने रेज ही नहीं आ रहे आपकी तरफ. यू आर गेटिंग इंक्लाइंड रेज क्लियरली और not getting enough insulation for your summers to become hot. Okay, and dry winters meaning clearly no rainfall. You have to be within the continent for that. Okay, coastal में तो आपको थोड़ी बहुत बारिश मिल जाएगी, लेकिन अगर you're getting dry winters properly, तो you have to be in the middle of the continent somewhere. Okay, heavy rainfalls throughout the year किस climate में मिलेंगे? Equatorial region. It rains every day. 25 of 30 days it's going to rain. Okay, and what kind of rainfall do you get there? Convectional rainfall, always convectional rainfall. Okay, every day it keeps on heating, and the same thing that it is going to gather up, and then that is, the air is going to rapidly rise upward, expand, condense, form clouds, and it's going to rain down on your head as precipitation. Okay, extreme temperature variations with no rainfall. You're saying the winters are really cold, the summers are really hot, and rainfall is going to be a little less. Sonsa? Poles and deserts. No, but you don't get very hot climates. No? Deserts is good. Desert climate is good. Sudan is a good option. Sudan, पता है वो आपको Sudan types का या Savannah types का climate पता है आपको? वो जहाँ पे हम अफ्रीका में सफारीज करने जाते हैं ना, हाँ, टॉल ग्रास होती है, लंबी लंबी, बहुत लंबी लंबी ग्रास होती है, लेकिन ट्रीज बहुत कम दिखाई देते हैं. इक्का दुक्का ट्री दिखाई देगा आपको. यूजुअली थोड़े से शॉर्ट एंड ट्रीज होते हैं, बट वो घास जो होती है, दैट इज गोइंग टू सर्व एज कैमोफ्लेज फॉर ऑल दैट वाइल्ड लाइफ ओवर देयर. No, hence the reason why the safaris are conducted in those areas. तो वो वाला जो climate है, that is the kind of climate that we're looking for over here. Okay, the summers can be really really hot and the winters can be really really cold because continental region है ना. तो continent की खासियत क्या होती है? Very hot in summers, very cold in winters. Okay, so वो extreme temperature variations मिल जाएंगे, and वहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं आती है. It's pretty dry, hence the tall grass and less trees and stuff like that. Okay, ठीक है. Which one of the following ocean currents is a well-known cold current found in the Atlantic Ocean? Gulf Stream, Kuroshio, Benguela, या फिर Brazil? Benguela, cold in Atlantic. Very good. We are looking at Benguela, which is a cold current in Atlantic. ये लॉजिक पता है ना आपको कि अगर कोई करंट इक्वेटर से यहाँ तक जाता है, दिस इज द इक्वेटर. अगर कोई करंट इक्वेटर से ऊपर की तरफ, पोल्स की तरफ जाएगा तो वार्म करंट होगा. अगर पोल्स से इक्वेटर की तरफ जाएगा तो वो कोल्ड करंट होगा. ओके, अग्री? नाउ you are seeing this is the Benguela current. हाँ, ये वो Benguela current है जो वेस्ट अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट को हक करके जाता है. दिस इज अ कोल्ड करंट. मैं उसको बेंग बुला रही हूँ. हाँ, दिस इज द ब्राजील करंट विच इज अ वार्म करंट. ब्राजील करंट इज अ वार्म करंट. दोनों अभी भी अटलांटिक में ही है. एंड देन दिस इज द गल्फ स्ट्रीम. हाँ, ये गल्फ स्ट्रीम है जो यूजुअली, ये थोड़ा सा नीचे आना चाहिए और गल्फ में से पास करवाते हैं ना उसको, ये वाला. We are looking at the Gulf Stream over here. This is a current that is a warm current that is going to go upwards. Now you're still in the Atlantic. अभी भी आप सारे भी Atlantic में हो. And this is the Kuroshio current, जो आपको usually जापान के बाजू से पास करता हुआ नजर आता है. Warm current है. Have you done oceanography? आपने currents पढ़े हैं इससे पहले? नहीं पढ़े. ओके, ठीक है. सो दिस इज द वार्म कुरोशियो करंट जो यूजुअली उधर ऊपर जापान के पास मिलता है. कुरोशियो साउंड भी वैसे करता है ना, थोड़ा सा जापानीज साउंड करता है.
गल्फ स्ट्रीम वो ऑब्वियसली फ्लोरिडा गल्फ के यहाँ से जाता है, इसलिए उसको गल्फ स्ट्रीम बुला रहे हैं। ओके, ठीक है, चलेगा। सो वी आर गोइंग विद बेंगुएला। बेंगुएला इज अ कोल्ड करंट। ओके, the following major Himalayan mountain passes 2, 1, 3, 4। हाँ जी, सही है। This is where you're looking at। ये आपके सारे passes है। ओके, तो now ideally आपको passes को classify किया जाता है कि आपको वो कौन से हिमालयाज में मिलते हैं, meaning whether you find them in trans Himalayas या किसी particular रेंज में मिलते हैं। और देन रीजन वाइज जाएंगे आप, यू नो वेस्टर्न हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज, देन यू गो टू सिक्किम हिमालयाज या फिर ईस्टर्न हिमालयाज। ओके, सो दिस इज द थिंग दैट वी आर लुकिंग एट। ये जोजिला रहा, दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिस इज जोजिला, जस्कर माउंटेन्स में मिलता है आपको ये। सो दिस इज दैट पास। ओके, दिस इज शिपकिला, हिमाचल, हिमाचल वाला। ओके, सो यू आर लुकिंग एट शिपकिला ओवर हियर। दिस इज नाथुला ना, द वन सिक्किम वाला जो अपना ट्रेड वाला पास है, दैट इज नाथुला ओवर हियर। एंड दिस इज गोंडला इन अरुणाचल। ओके, सो ये न्यूज में आते रहते हैं बिकॉज we are not you know, we are on, how do you say, hot and cold terms, right, with China, with Pakistan. So clearly every time हम कोई pass बंद कर देते हैं, कोई pass दोबारा चालू कर देते हैं। So this is the reason why most of these passes get featured in news, so pay attention to that। Your option is going to be first Zojila जो ऊपर कश्मीर में है, and then come to Shipkila जो हिमाचल में है, then Sikkim में you will have Nathula, and then Bomdila in Arunachal। Okay, ठीक है, that's going to be B। This is B। Which of the following Indian rivers flows westwards into the Arabian Sea through structural faults या rift valleys? Mahanadi, Godavari। Boys, can you please stop talking? Black shirt, नर्मदा तापी। Yes, yes, we are looking at rift valleys। See people, अब ये जो दो है, these two, they clearly flowing towards the west। Okay, नर्मदा तापी भी वेस्ट अरेबियन सी जाते हैं, लूनी साबरमती भी गुजरात एंड गुजरात साइड से क्लियरली वेस्ट में जाते हैं। ओके, अरेबियन सी में जाते हैं। ये दोनों जो है महानदी गोदावरी एंड कृष्णा कावेरी, दे आर ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। तो उनको हम कंसिडर नहीं कर रहे। रिफ्ट वैलीज में से दो ही रिवर्स फ्लो करते हैं अपने यहाँ पे, नर्मदा एंड तापी, जो फेमसली विंध्यास एंड सातपुड़ा के ब्लॉक माउंटेन्स के साथ एसोसिएट कर लेते हैं हम लोग। ओके, सो योर ऑप्शन इज गोइंग टू बी नर्मदा एंड तापी। ऑलराइट, ठीक है। ये वाला बताइए, माजुली, considered recognized as the world's largest populated riverine island, is located on which river course in India? Ganga, Brahmaputra, Indus, Godavari। गंगा बोल रहे हैं आप? माजुली, माजुली नाम देखिए ना कैसा साउंड करता है। Brahmaputra। Who said Brahmaputra? Brahmaputra is the right answer। Majuli is a riverine island। Remember when we had discussed those braided streams, वो छोटी जैसा बनता है, river keeps meeting and then disconnecting again, it meets again, disconnects again। तो उसमें क्या होता है, what the river is essentially doing is it is dropping off huge loads of sediment in the middle of its course। Okay, and when it drops the force, when it drops that sediment in the middle of its course, it splits around it। Okay, and दूर चला जाता है। तो ये जो बड़ा सा, if there is a large enough deposition in the course of the river, then that becomes a riverine island। Okay, the problem with this island is that there are already people living over there, and now the clearly वो ब्रह्मपुत्र का तो रोज का प्रॉब्लम है ना, फ्लडिंग का। it is an annual thing, it keeps flooding, the Brahmaputra keeps flooding। Okay, and clearly the population is rising, and also the land is being eroded on the sides, so it is kind of sinking, the land is sinking, and now you'll have to, you know, rehabilitate all these people who are living on that land someplace else। So that is an ecological issue for us। The Majuli island is an ecological issue for us now। Okay, ठीक है, चलेगा। तो आंसर इज गोइंग टू बी ब्रह्मपुत्र। ओके, regular soil of India is highly ideal for cotton cultivation। Black soil, famous black soil, black cotton soil बुलाते हैं हम उसको। It has that self plowing ability that जब when it is dry you can clearly see the cracks in it, like clay का बहुत ज़्यादा percentage होता है ना उसमें, तो when it is dry you can see very clearly that it is getting all those cracks, but the moment you you know put water on it, it is going to become that sticky version of it, है ना, वो थोड़ा sticky हो जाता है, तो वो अपने आप खुद ही plow कर लेता है। This is how it should be, this is how plowing should be done ना, तो वो self plowing ability होती है उसकी। Okay, that is black soil for you। What about laterite soil? Where do we find laterite soil? बारिश कितनी चाहिए, ज्यादा नहीं, लैटराइट सॉइल को बारिश नहीं लगती। कहाँ मिलेगा?
सैंडी होगा लेकिन नॉट वेरी ड्राई। सैंडी सॉइल डिफरेंट होता है। लैटराइट सॉइल आपको यूजुअली यहाँ मिलेगा। सी, इफ दिस इज इंडिया, यू आर लुकिंग एट द वेस्टर्न घाट्स। एक्सट्रीमली लैटराइट सॉइल इज अ comes from the name latter, which means brick in Latin. It means कि ये सॉइल यूजुअली ब्रिक्स बनाने के लिए यूज करते हैं। द रीजन बीइंग कि ये सॉइल ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर एंड बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन में बनता है। सो व्हेन देयर इज वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई प्रेसिपिटेशन, यूजुअली ऑल द न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द सॉइल गेट लीच्ड और वॉश्ड अवे। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो सॉइल को बहुत ट्रीट करना पड़ता है, तब जाके आप उसमें कोई भी कल्टिवेशन कर सकते हो। रेडिश कलर का सॉइल दिखेगा आपको, रेडिश ब्राउनिश, ब्रिक कलर का ही दिखता है वो, प्रॉपर्ली ब्रिक कलर का सॉइल दिखता है। ओके, हाँ, तो जहाँ पे वन सेकेंड, जहाँ आपको एक्सट्रीम ये मिलेगा ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा बारिश, वहां पे आपको यूजुअली लैटराइट सॉइल मिलता है। ओके, अलुवियल सॉइल कहाँ मिलता है? रिवर बेसिन्स। कहाँ? रिवर बेसिन, कोई भी रिवर के बेसिन में सिल्ट का जो डिपोजिशन होगा उसको अलुवियल सॉइल बोलेंगे। रिवर के अंदर जो भी सिल्ट सस्पेंडेड होता है, when it floods, so all that, it is not just the water that comes out, the silt also comes out, gets deposited on the banks of the river, and that is essentially your alluvial soil. Okay, तो गंगा ब्रह्मपुत्र के बड़े बड़े alluvial soil के patches and swaths होते हैं, लेकिन क्लियरली एनी रिवर कैन प्रोड्यूस अलुवियल सॉइल। रिवर के बैंक्स पे आपको अलुवियल सॉइल मिलता है। ओके, एंड रेड एंड येलो सॉइल आयन कंपाउंड से बनता है। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शंस जहां होंगे वहां पे आपको यूजुअली रेड एंड येलो सॉइल मिलेगा। इन सारे सॉइल्स को, लैटराइट सॉइल को ट्रीट करना पड़ेगा, रेड एंड येलो सॉइल को भी ट्रीट करना पड़ेगा टू हैव एनी कल्टिवेशन डन इन इट। ओके, उसके बगैर नहीं होगा ये। Winter rainfall experienced in northwest Punjab, Haryana, northwest India, Punjab and Haryana is brought about by the atmospheric disturbances originating over. नहीं, वेस्ट की तरफ से आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आ रहा है। तो एंड उसको हम क्या, अच्छा हम उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोला नहीं, हमने एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस बोला। ओके, नहीं, मेडिटेरेनियन से आता है। तो यहाँ से आता है। दिस इज द मेडिटेरेनियन सी, राइट? ये लैटिन ग्रीस जहाँ दिखाई दे रहा है ना आपको, तो वी आर सेइंग ये यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ पे व्हेन वी से इट इज अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, व्हाट इट एक्चुअली इज अ टेम्परेट साइक्लोन। ओके, तो यहाँ पर ये टेम्परेट साइक्लोन्स डेवलप होते हैं और ये यहाँ से निकलते हैं, कभी कभी कैस्पियन सी से ट्रैवल करते हैं, कभी कभी गल्फ ऑफ, ये पर्शियन गल्फ से ट्रैवल करते हैं, यहाँ से ट्रैवल करेंगे। तो आइदर ऑफ दीज वाटर बॉडीज, बट दे गेट इनफ वाटर, ये पूरा जो रीजन है अफगानिस्तान पाकिस्तान, उसको क्रॉस करके ये आइडियली यहाँ तक आ जाते हैं। ओके, पंजाब हरियाणा तक आ जाते हैं, एंड ये बराबर हमारे पास दिसंबर के दौरान आ जाते हैं। they come here in December, Jan, that's the time. So that is the time just before the harvest of wheat. People sitting at the very back, that guy, that boy sitting at the very back, stand up please. Your friends in front of you also stand up. I don't understand, ये ऐसे डेफ की तरह क्यों बिहेव करते हो उसके बाद? ओके, सो वी आर सेइंग ये ऑल द वे यहाँ पे है, इंडिया में बारिश दे देते हैं। ओके, नाउ ये बारिश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट कम्स जस्ट बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ व्हीट। हम नॉर्मली व्हीट का हार्वेस्ट कब करते हैं? लोहड़ी के अराउंड, राइट? सो मकर संक्रांति 14 जैन के अराउंड, मिड जैन में हम कभी तो हार्वेस्ट करते हैं वहां पे। सो उस टाइम पे यूजुअली व्हाट यू गेट इज गुड अमाउंट ऑफ स्मॉल शावर्स एट दैट टाइम इज कंसिडर्ड ग्रेट। ओके, ये सिर्फ यहाँ तक बारिश नहीं देते, ये जाते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड ऑल द वे जाके हिमालय से टकराते हैं, बिकॉज हिमालय है ना वहां पे। तो हिमालय से टकराएंगे तो असेंड करते करते वो वहां पे भी बारिश देते हैं, एंड वो हिमाचल के जो वैलीज है ना, कुल्लू वैली स्पेशली, वहां पे बड़ा सारा स्नोफॉल हो जाता है। ओके, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंडियाज क्लाइमेट। ओके, बे ऑफ बंगाल से या अरेबियन सी से यूजुअली हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है। व्हाट हैपेंस इज, ये यहाँ पे हमारा ये है, राइट? दिस इज द, वी आर सी, नहीं ये नहीं, इधर ही देखिए,
वी आर सेइंग वो जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होते हैं, हाँ, यहाँ पे इक्वेटर के नीचे जो होते हैं वो क्रॉसओवर कर लेते हैं ना, शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट्स में वो क्रॉसओवर कर जाएंगे। जब क्रॉस करेंगे तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से अभी उनको थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाते हैं। एंड ये अरेबियन सी से ऑल द वे व्हाट वाज एसेंशियली गोइंग इन दिस डायरेक्शन, व्हेन इट क्रॉसेस ओवर स्टार्ट्स गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। तो जब ये इस डायरेक्शन में जाता है तो साउथ वेस्ट मानसून करके हमको मिल जाता है, और यहाँ से तो वो स्ट्रेट आ जाते हैं, बे ऑफ बंगाल से सीधा ऊपर चले जाते हैं। ओके, दैट इज हाउ दे वर्क। सो वो वाले winds अलग होते हैं as compared to the ones that we have here. All right. The standard meridian of India, 82 degrees 30 minutes east, passes through which of the following combinations of the Indian states? UP, Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal. UP, MP, Chhattisgarh, Odisha. B. The Satta is Avengers of MCU. We are saying this is the Satta. Okay. A for Andhra Pradesh, O for Odisha, M for Madhya Pradesh, C for Chhattisgarh, U for Uttar Pradesh. Okay. ठीक है, फाइन, याद रहेगा। तो दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू गो। आप प्लीज याद रखिए, वो उत्तर प्रदेश से ना मिर्जापुर नाम का टाउन है, वहां से वो लाइन पास करता है 82.5 डिग्रीज वाला। ओके, ठीक है। एंड व्हाट इज द सट्टा फॉर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिस स्टेट्स में से पास करता है उनको 8 स्टेट्स में से, हाँ, तो कौन से स्टेट्स है वो? उसका सट्टा नहीं है झारखंड, मिजोरम एंड त्रिपुरा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, यू रिमेम्बर इट जस्ट लाइक दैट, नेमोनिक्स नहीं है आपके पास। गरम चीज बदतमीज, दैट इज द सट्टा। ग गुजरात, र राजस्थान, म फॉर मध्य प्रदेश, चीज इज गोइंग टू बी छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ब फॉर बद का ब जो है वो दैट इज फॉर बंगाल, तमीज इज गोइंग टू बी त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, देयर इज अनदर मीरा जेसीबी जीएमटी, बट इट विल नॉट गिव यू द स्टेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर। तो अगर आपको जितना हो सके ना उतना ऑर्डर में या अरेंजमेंट में या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजें याद रखने की कोशिश कीजिए। तो रिमेंबर द सट्टा इफ यू आर गोइंग टू फॉरगेट एनीथिंग। ये वाला बताइए। ओए, हाँ, ठीक है। खोल 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 खोल, धारिया रानीगंज फेमसली खोल के है, ना उसमें आग लग जाती है, अभी भी आग लगी हुई है, हम छोड़ लेटिंग इट गो बिकॉज उसको कहाँ जाके बुझाएंगे एंड पूरी माइंड को फ्लड करेंगे ना, इट डजंट मेक एनी सेंस। सो या, धारिया रानीगंज। ओके, खोल। Nokrek Biosphere Reserve, known for protecting unique biodiversity and the red panda, is located in which Indian state? Assam, Arunachal, Meghalaya, Sikkim. Meghalaya, Meghalaya. Nokrek is going to be Meghalaya. Red panda and unique biodiversity. It is on the it is Nokrek is not on man and biosphere. We are good there. Okay, Meghalaya mein hai wo. Meghalaya ka hai wo. We are going with Meghalaya. ये वाला बताइए। Asteroid belt containing millions of rocky debris is situated between the orbits of which two planets? Mars and Jupiter. Mars and Jupiter. You know very well कि there is the sun. Okay, वो sun के बाजू में 4 terrestrial planets मिलते हैं, Mercury, Venus, Earth and Mars. And Mars and Jupiter के बीच में वो asteroid belt मिलता है, और उसके beyond वो Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune करके आपके सारे Jovian planets मिलेंगे। Okay, ठीक है, that's how it goes. ये वाला बताइए। On 21st June, the sun shines vertically overhead at midday. Tropic of Cancer, famously Tropic of Cancer, 21st June में sun is exactly overhead the Tropic of Cancer, तो Northern Hemisphere का longest day shortest night उस दिन मनाते हैं। Tropic of Arctic Circle के beyond 66.5 degrees north के beyond, sun never sets for a whole day, and that is called as the land of the midnight sun. And now if you contrast it with the Southern Hemisphere, on this same day where we are having the longest day in the Northern Hemisphere, Southern Hemisphere experiences the shortest day and longest night. Okay, and beyond 66.5 degrees south, there will be complete darkness for 24 hours. Okay, the sun never rises for 24 hours over there. Is this good? Which of the following conditions are ideal for the growth and survival of robust coral reefs? Warm water temperatures, shallow water depth less than 50 meters, high turbid water with heavy sediment loads. इसमें से क्या क्या सही होगा? 1 and 2 only. Very correct. Only 1 and 2 will work. The thing with corals are they are marine organisms जिनमें स्पेशल कैपेबिलिटी होती है कि अपनी बॉडी में वो कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट कर सकते हैं। ओके, तो उनके ना बहुत टफ शेल्स बनते हैं, बहुत हार्ड एंड टफ शेल्स बनते हैं, अंदर सॉफ्ट बॉडीज होते हैं वो शेल्स के अंदर। ओके, सो वो वो ऐसे सॉलिटरी एग्जिस्टेंस नहीं होता है, दे यूजुअली लिव इन कॉलोनीज। ओके, तो मल्टीपल कोरल रीफ्स मिलते हैं आपको।
नाउ द थिंग विद देम इज कि उनको न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए यूजुअली एक एल्गी हेल्प करता है। एल्गी का नाम है जूजांथिल। ओके, जूजांथिल नाम का एक एल्गी होता है। तो सिम्बायोसिस में काम होता है, द एल्गी गोज इनसाइड द कोरल एंड वहां पे इट रिसीव्स प्रोटेक्शन एंड इट ऑल्सो इम्पार्ट्स द कलर। वो जो एल्गी का सुंदर सुंदर कलर्स होते हैं ना, ब्लू ग्रीन रेड ऑरेंज, वो जो येलो कलर्स दिखाई देते हैं, वो सारे उस जूजांथिल की वजह से दिखाई देते हैं। ओके, एंड द जूजांथिल ऑल्सो प्रोवाइड्स इट विद फूड, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि जूजांथिल खुद फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है बिकॉज ऑफ द सन। एंड नाउ यू लुक एट दीस कंडीशंस, both the zooxanthil as well as the coral can only polyps can only survive in warm waters. Okay, दूसरी बात, उनको वो डेप्थ सनलाइट पेनिट्रेट करनी चाहिए ना फॉर फोटोसिंथेसिस टू हैपन एंड इवन फॉर द कोरल टू लिव। ओके, उसको भी तो सनलाइट चाहिए, तो वो सनलाइट आपको एक सर्टेन डेप्थ तक मिलती है, तो उतने ही डेप्थ तक आपको कोरल्स भी मिल जाता है। ओके, एंड ये जो सेडिमेंट्स होते हैं, नॉर्मली कोरल्स को सेडिमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं, व्हाट दे रिक्वायर इज फ्रेश सी वाटर। ओके, जितना सेलाइन पानी होगा उतना वो बेटर थ्राइव करते हैं। अगर छोटे छोटे सेडिमेंट्स आ गए तो वो जाके वो कोरल्स को ब्लॉक करते हैं, सफोकेट करते हैं, एंड जब वो कोरल सफोकेट हो जाते हैं, दिस कैन हैपन आइदर बिकॉज ऑफ हेवी सेडिमेंट लोड, सेडिमेंट्स की वजह से हो सकता है, पानी का टेम्परेचर अगर बढ़ गया तब भी कोरल्स थोड़े से सफोकेट हो जा सकते हैं। द फर्स्ट रिएक्शन जब वो स्ट्रेस में आते हैं इज दे किक आउट द जूजांथिल। वो जो एल्गी उनको खाना और कलर दे रहा था, वो उसको किक आउट कर देते हैं। एंड वंस यू किक आउट दैट एल्गी, तो वो कोरल का रंग चला जाता है, तो उसको ब्लीचिंग ऑफ कोरल्स बुलाते हैं। एंड रिमेंबर दैट इज एन एनवायरमेंटल कंसर्न। व्हेन वी सी दैट द कोरल्स आर ब्लीचिंग, वी कंसीडर दैट एज एन एनवायरमेंटल कंसर्न बिकॉज क्लियरली द कोरल विल डाई नाउ। द रीजन इज कलर जाने की वजह से वो कलर चला गया, इसलिए कोरल नहीं मर रहा है। वो कलर उसको जो दे रहा था जूजांथिल, वो उसको खाना भी दे रहा था, एंड नाउ इट इज नॉट गोइंग टू गेट फूड, सो क्लियरली ओवर द इयर्स द कोरल इज गोइंग टू डाई। दैट्स द लॉजिक। ओके, याद रहेगा। सो वी डू नॉट, यू विल नॉट फाइंड कोरल्स नियर रिवर्स माउथ, रिवर माउथ्स। ओके, वहां पे नहीं मिलेगा आपको, जहाँ पे रिवर्स आके अपना सेडिमेंट डिपॉजिट करते हैं, वहां पे यूजुअली कोरल्स नहीं मिलते, आपको वो सी वाटर्स में मिल जाते हैं। ओके, थोड़ा सा एटोल्स के पास वगैरह ऐसे ऐसे सब मिल जाते हैं, जैसे लक्षद्वीप पे है वैसे। ऑलराइट, वील गो विद 1 and 2 only. Option B is going to be our answer. The strong permanent western planetary winds blowing in the southern hemisphere between 40 degrees south and 50 degrees south latitudes are called trade winds. Roaring 40s, roaring 40s. Very correct. Absolutely correct. You're saying normally what happens is, this is the equator. अगर ये आपका इक्वेटर है, तो यहाँ से लेके 30 डिग्रीज तक क्या ब्लो करता है? ट्रेड विंड्स, है ना। यू विल हैव द नॉर्थ-ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ये 30 डिग्री थोड़ा ऊपर हो गया है, लेकिन मोटा हो गया है, थोड़ा ज्यादा ब्रॉड हो गया है। ओके, नाउ वी आर सेइंग कि अगर उसके बाद जो 60 डिग्रीज का है ना, बिटवीन 30 to 60 क्या ब्लो करेगा? वेस्टर्लीज। ओके, इट इज द वेस्टर्लीज दैट विल ब्लो। तो ये वेस्टर्लीज जो होते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत, वेस्टर्लीज ऐसे भी जनरली इरेगुलर माने जाते हैं एज अपोज टू द ट्रेड विंड्स, लेकिन अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं तो बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड, बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ लैंड, वो थोड़े से इरेगुलर हो जाते हैं वहां पे। व्हाट हैपेंस इन द सदर्न हेमिस्फीयर? क्लियरली नॉट एज इरेगुलर। ओके, ये ब्लू शर्ट एंड you also leave the classroom. Blue shirt, and I don't know what color shirt that is now. Leave रे बाबा। हाँ, और वहां बैठ के बातें करनी है ना आपको, वैसे भी तो सेपरेट बैठ जाइए। ओ हेलो मिस्टर जैन, कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे, यही बैठेंगे? नहीं, आप नहीं, वो इज एक्टिंग लाइक उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है। बाय बाय। I can make decisions for you. That's not a problem. So we are saying between 0 to 30 degrees north and south, you will get the trade winds. 30 to 60 में आपको westerlies मिलते हैं. Westerlies are irregular in the northern hemisphere, pretty regular in the southern hemisphere because land ही नहीं है ना, सारा का सारा water तो है आपको नीचे। तो वो विंड इतनी तेजी से, बिना फ्रिक्शन के, बिना ऑब्स्ट्रक्शन के, इतना तेजी से बहता है कि उसको अलग अलग लैटिट्यूड्स में अलग अलग नाम मिलता है। सो इन द 40s इट इज कॉल्ड एज द रोरिंग 40s, in the 50s it gets called the furious 50s, and in the 60s it is famously called as the screaming or the shrieking 60s. Okay, ऐसे तो that is just westerlies के different different नाम है in southern hemisphere. हाँ जी, which of the following economic activities, ये ट्रेड विंड्स कहाँ मिलते हैं? 0 to 30 में। हाँ, ट्रेड विंड्स को कोई और नाम है? नहीं, हम उसको बस नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बुलाते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड्स कहाँ मिलते हैं? 30 डिग्रीज नॉर्थ एंड 30 डिग्रीज साउथ में जो प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स, तो उसको हम बुलाएंगे हॉर्स लैटिट्यूड्स। ओके, द रीजन व्हाई दे, किसी को पता है रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड्स?
हाँ ज्यादा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर रीजन होता है, तो विंड्स बहुत काम हो जाते हैं। ओके, हाई प्रेशर रीजन माने व्हाट इज हैपनिंग, ऊपर से विंड्स नीचे डिसेंड करते हैं, तो क्लियरली वो नीचे का जो रीजन है सरफेस वो बहुत काम हो जाता है, कोई कुछ मूव नहीं करता है। पुराने जमाने में शिप्स को वहां से स्टीयर करना बहुत मुश्किल हो जाता था, बिकॉज देयर इज नो विंड, वी डिड नॉट हैव इंजन्स ना टू रन द शिप्स। तो क्लियरली वो जो पीछे से विंड पुश करना चाहिए, सेल्स के लिए जो विंड की जरूरत होती है, वो विंड तो नहीं होता था। तो हाउ विल यू सर्वाइव नाउ इफ द शिप इज नॉट गोइंग टू मूव? तो वो वाटर एंड पानी कम होता था, राइट? पीने का पानी कम होता था, समुद्र का पानी पी नहीं सकते आप। तो क्लियरली द ओनली ऑप्शन वाज, जितना भी लाइफ स्टॉक आपके पास था, अब लोगों को तो धक्का नहीं दे सकते ना समुद्र पे, तो क्लियरली जितना भी लाइफ स्टॉक था उसको फेंक देते थे समुद्र में, मोस्टली हॉर्सेस एंड स्टफ लाइक दैट। ओके, तो यू फाइंड दैट फनी? ओके, तो वो हॉर्सेस को फेंक देते थे, इसलिए फेमसली इन लैटिट्यूड्स को हॉर्स लैटिट्यूड्स बुलाते थे। ओके, दैट्स द स्टोरी। डोल्ड्रम्स क्या होता है? इक्वेट इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन को 0 to 5 डिग्रीज नॉर्थ, 0 to 5 डिग्री साउथ, ये वाला जो जोन होगा उसको इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन को डोल्ड्रम्स बुलाएंगे। बहुत ज्यादा विंड्स होते हैं या काम विंड्स होते हैं? काम विंड्स होते हैं। हाँ, द रीजन इज कि वो दोनों आइडियली वहां पे दोनों जगह पे एक तरफ से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आते हैं, दूसरी तरफ से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आते हैं। हाँ, क्या होना चाहिए यहाँ पे, काफी तूफान मचना चाहिए था, राइट? होता नहीं है, क्योंकि वो सारे विंड्स जो है वो ऊपर की तरफ राइज कर जाते हैं एंड नीचे एकदम काम रह जाता है। ओके, सो उसको डोल्ड्रम्स बुलाते हैं। दिस वर्ड इज ऑल्सो यूज्ड इन इंग्लिश जनरली टू से कि थिंग्स आर नॉट डूइंग वेल, है ना, लाइक द कंपनी इज इन डोल्ड्रम्स और समथिंग लाइक दैट। हाँ, for example, all those people I removed from the class, unka geography is in doldrums theory. Anyways, here we are. Which of the following economic activities is classified strictly as a tertiary sector activity? Banking and tourism, है ना? Which are primary out of these? एग्रीकल्चर, माइनिंग ऑल्सो, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, है ना, ये सारे या फिर हंटिंग, गैदरिंग, ये जो सारी एक्टिविटीज होंगे वो प्राइमरी एक्टिविटीज होंगे। यू डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर, आपके जो सोर्सेस आते हैं वो डायरेक्टली नेचर से आते हैं। ओके, तो उसको प्राइमरी बुलाइए। सेकेंडरी में क्या करते हैं, वो प्राइमरी से जो लिया प्रोडक्ट उसको वैल्यू एडिशन करेंगे, प्रोसेस करेंगे और बाहर जाके बेचेंगे, है ना। तो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होगा उसको सेकेंडरी सेक्टर बुलाएंगे। एंड टर्शरी में ट्रेड, कम्युनिकेशन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सर्विस सेक्टर, है ना, वी आर लुकिंग एट दैट। सो बैंकिंग एंड टूरिज्म इज गोइंग टू बी आवर थिंग। ठीक है पीपल? ओके, so before we begin the next paper now, you take a 5 minute break. But please do not try to move from the class. Don't go running around in the building. Stay here.
You have a particular batch, the ones who are assembled over here? No, you are just 12 standard, random. Just 12. Yeah. Possible. I can share it on the group or I can give it to, I don't know whichever group you guys are on. Yeah, group PPT. DPT. One of the okay, I'll check with Mansi. I'll check with her. Today only I'll check with her, and if he says that, then I can either share it with Mansi or I can share it with myself. Sure. No worries. Kind of difficult. Okay, start again. ये बहुत सिंपल है, ये तो फास्ट हो जाना चाहिए आपका. Which is the highest mountain peak in the world? Mount Everest. Okay, Mount Everest is the highest mountain peak in the world. And if you consider in India, India का highest mountain peak? Kanchenjunga. K2 is POK ना, थोड़ा contested होता है वो. So we'll go with Kanchenjunga. Okay, ठीक है. The Earth completes one rotation around its. Where do you find K2, by the way? Which mountains do you find K2 in? हिमालयस का पार्ट है, काराकोरम में है, लद्दाख में, जस्कर में. हिमालयस काराकोरम रेंज का पार्ट है K2. Okay, the Earth completes one rotation around its own axis in approximately how much time? 24 hours. And for it to complete an entire revolution around the sun, how much time does it take? 365 and 365.25 days. Okay, so that 0.25 days get added every 4 years to complete one entire year, a day, and that we call as the leap year. Okay, and we get an extra day. Which layer of the Earth is known as the seema? Crust. Oceanic crust is seema. Continental crust gets called sea. Okay. The process by which the water vapor changes into liquid vapor to liquid water. What is the process called? Condensation. Yes. Water vapor state change हो रहा है ना. You are saying liquid state से solid state से liquid state में आएगा तो वो condensation होता है. Okay. Is heat released or do you have to supply heat for the process? इस प्रोसेस के लिए, कंडेंसेशन के लिए हमको खुद हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है सेपरेटली या हीट रिलीज हो जाती है इस प्रोसेस में? हीट रिलीज होगी. ओके, द हीट विल बी रिलीज. दैट हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन. ओके, ठीक है. व्हाट इज इवेपोरेशन? रेड शर्ट, हाय, व्हाट्स इवेपोरेशन? आई थिंक बाष्पीभवन. व्हाट इज दैट? No, you only, same you. Since you were talkative, so I thought you might know geography very well. No problem. But evaporation तो पता है ना, स्कूल में पढ़ा था. हाँ जी, बोलिए क्या होता है? हाँ, तो स्टेट चेंज हो जाएगा उसका, गैसियस स्टेट में चला जाएगा, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में. Are you going to supply heat for it या heat release हो जाएगी प्रोसेस में? सप्लाई करनी पड़ेगी हीट. ओके, ठीक है.
वो पीछे जो व्हाइट शर्ट है उनको बोलिए, आपके बाजू में जो बैठे हैं। नहीं नहीं, हाँ ये हाय। व्हाट इज कंडेंसेशन, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? यू गाइस आर प्लानिंग टू अटेम्प्ट द सितंबर एग्जाम? सबका प्लान है सितंबर का अटेम्प्ट करना? अच्छा ठीक है, बोलिए सर। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? नहीं पता। वो आपके पीछे जो व्हाइट शर्ट बैठे है वो। ट्रांसपिरेशन पता है क्या होता है? नहीं, आपके पीछे जो व्हाइट शर्ट बैठे है वो। टुडे इज अ व्हाइट शर्ट डे, व्हाई आर यू ऑल वेयरिंग व्हाइट शर्ट्स? व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? No idea. The person diagonally behind you? No clue. The person next to you? Whatever brown shirt you're wearing? No. That guy is sleeping. Black shirt in front of the sleeping guy. The sleeping guy can also answer if he wants. What is transpiration? He must be feeling ये पता नहीं कहाँ से उड़ गए। Sir आप बताइए, black shirt transpiration पता है? Does anybody in the class know what transpiration is? Yes, thank you. Tell me. I was starting to really lose faith in myself here. बोलिए, हाँ जी। Thank you. Transpiration is the release of moisture from the stomata of the plant. Okay, leaves के ऊपर से जो पानी बाहर निकलता है, there is a reason stomata. हाँ, stomata में से जो पानी बाहर निकलेगा उसको बुलाएंगे transpiration. Okay, the reason why we keep saying कि afforestation necessary है, कि ज्यादा plants लगाना जरूरी है अगर हमको global warming के issue को since global warming is an environmental concern, अगर हमको उसको कम करना है तो clearly हमको अभी प्लांट्स को प्लांट करना पड़ेगा, एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, मीनिंग ज्यादा पेड़ प्लांट करने पड़ेंगे। नाउ द थिंग इज कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड सक कर लेगा, है ना, एब्जॉर्ब कर लेगा एनवायरनमेंट से, तो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड वैसे भी यूटिलाइज हो जाएगा। ओके, सेकेंडली वो ये मॉइस्चर भी रिलीज करते हैं, सो प्लांट्स हैव अ मल्टी प्रोंग्ड इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, सो क्लियरली दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, एंड व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? You saw light green shirt at the back. It's not even in the class. Hi. What is precipitation? Okay, hi. What is precipitation? Oh, nee, you said if you're eager, I don't mind the answer. I was asking that light green shirt. He's just said hi to me and forgotten the whole issue. Hello, hi. Precipitation क्या होता है सर? नहीं आइडिया। आपके दोस्त को पता है? ये आप पक्का दे रहे हो ये एग्जाम सितंबर में? नहीं दे रहे हो तो आप ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हो? आप कौन सी एग्जाम दे रहे हो? आप गलत क्लास में बैठे हो क्या? यू सिटिंग इन द रॉन्ग क्लास, आर यू? You're sitting in this class only. Do you have this subject? You know ना, इंडिया के एग्जाम में आपको 20 क्वेश्चंस ज्योग्राफी पे आएंगे, आप दे नहीं रहे ये एग्जाम, तो फिर आप यहाँ बैठ के क्यों पढ़ रहे हैं? आप ज्योग्राफी का लेक्चर क्यों कर रहे हैं? You go and do something that is going to benefit you ना, बेकार टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे। You saw the one sitting in front of the lime green shirt, beige color shirt. बताइए precipitation क्या होता है? Yaar, your shirt now gets classified as military green. Okay, you are camouflage green, military green, huh? Let me tell you. I don't know your names. I'm going to go by shirt colors now. Boliye sir, beige shirt. What is precipitation? No idea. You black and white के बाजू में कौन बैठा है? Hi. What's precipitation? Hi, military green. अभी आपके पास आ गए. Now it's finally your turn. What is precipitation? You guys really have no clue what precipitation is? Sit down. अरे बारिश 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 को प्रेसिपिटेशन बुलाएंगे ना? जब ये कंडेंसेशन का प्रोसेस हो जाएगा, एयर ऊपर उठ जाएगी, एक्सपांड करेगी, कंडेंस करेगी, उसके रेन ड्रॉप्स बनेंगे या फिर आइस बनेगा।
जो भी बनेगा, अगर कंडेंसेशन हैपेंस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट तो आइस बनेगा। ओके, अगर कंडेंसेशन हैपेंस अबव द फ्रीजिंग पॉइंट तो वाटर ड्रॉपलेट्स में कंडेंस कर जाएगा। जब वो सब जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाएंगे एंड ग्रेविटी की वजह से फिर वो बारिश नीचे गिर जाती है। ओके, उसको बुलाएंगे प्रेसिपिटेशन। ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है। अगर ये रेनफॉल के फॉर्म में हुआ तो ये लिक्विड फॉर्म में है। आइस के फॉर्म में इट कैन बी, सॉलिड फॉर्म में इट कैन बी आइदर इन स्नोफॉल और देन स्लीट और hailstones, है ना? All that will classify as precipitation. Brown shirt, can you repeat now what precipitation is? Yeah, tell me. From clouds, that is called as precipitation. Okay, and when will it fall as rain and when will it fall as snowfall? No clue. Leave the classroom. Leave. No, you're not sorry. You're not sorry, and you know that. Why waste time and why sit and argue and have this entire whole discussion about it? White shirt को बताइए. You tell me. No, not you. That guy, the one he was talking to. Who were you talking to? अच्छा, you just thought ऐसा ऐसा करते, पीछे आगे पीछे मुड़ते, कोई बात नहीं, वो पूरा कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस रिपीट करेंगे व्हाइट शर्ट पीछे से। Atmospheric condensation. Precipitation is a form of atmospheric condensation. And how do we differentiate between condensation and precipitation? बारिश भी रेनफॉल, फॉग भी रेनफॉल, ऐसा बोल रहे हो? What are you guys doing? Precipitation occurs due to gravitational forces. ग्रेविटी की वजह से प्रेसिपिटेशन होगा। ओरिजिनली उधर पहुंचा कैसे? किसकी वजह से? विंड की वजह से ऊपर पहुंचा। ऊपर जाने वाला विंड या साइडवेज जाने वाला विंड? विंड की, वो बारिश कैसे, वो ऊपर जाके क्लाउड्स कैसे बने? विंड की वजह से क्लाउड्स बन सकते हैं, हीट की वजह से क्लाउड्स बने। तो वो जो क्लाउड्स बनने का प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे? उसको प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। और क्लाउड्स में से बारिश जो बाहर निकलती है उसको भी प्रेसिपिटेशन ही बुलाएंगे। क्लाउड्स इवेपोरेशन से बने और फिर कंडेंसेशन क्या होगा? नहीं, योर फ्रेंड इज हैप्पी टू शेयर इन योर शार्ड एंड फ्रॉड। बोलिए सर, उठिए, आप बताइए प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस क्या है? हाँ, ऊपर जाएगा। हाँ, वेपर फॉर्म। हाँ जी, गुड, thank you. Your friend deserves every single moment he is lost somewhere in his thoughts because he actually knows the theory. You both don't get to do that because you don't know the theory. You see what the problem is? ये तीनों भी बहुत बातें करते हैं लेकिन इनको आंसर्स पता है, तो मैं उनको नहीं क्लास के बाहर भेज रही। आप लोग बातें करते हैं और आपको पता भी नहीं है थ्योरी, बेसिक्स भी नहीं पता, आप बैठ जाइए। क्या कर रहे हैं आप अपनी जिंदगी के साथ? एंड अपनी जिंदगी अगर जो करना है करनी है, मेरा टाइम ना वेस्ट कीजिए ना इस तरह से। You go and sit over there behind. नहीं, come and sit over here. यहाँ सामने आके बैठ जाइए, both of you. Which type of rock is formed from cold and solidified magma? Igneous rocks. Sedimentary कैसे बनते हैं? हाँ जी, नो, वो मेटामॉर्फिक है। हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर से मेटामॉर्फिक बनेंगे। सेडिमेंट का जब वेट ऊपर लाई करेगा तो उसकी वजह से जो कॉम्पैक्शन एंड ये हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा, उससे सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगे। अलुवियल रॉक होता है क्या बाबा? अलुवियल रॉक होता है, सॉइल होता है ना? गुड गुड, थैंक यू। Somebody yesterday told me it is a kind of a rock. The Tropic of Cancer passes through which Indian state? Rajasthan, no doubt. Which is the largest ocean in the world? Pacific Ocean. और बाकी के ओशंस को ऑर्डर में लगाइए, साइज के हिसाब से लगाइए बाकी के ओशंस को। पैसिफिक, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन,
फिर हाँ, फिर आर्कटिक आएगा, यहाँ पे आर्कटिक आएगा। अगर आप जनरल पूरा लिस्ट कंसिडर करो तो पैसिफिक, Atlantic, Indian, Southern Ocean मतलब Antarctic Ocean, and then lastly Arctic. Very good. The imaginary line dividing the Earth into northern and southern hemispheres is called equator. Equator, absolutely correct. And prime meridian कैसे divide करता है Earth को? Prime meridian कैसे divide करेगा Earth को? Eastern and western hemispheres में divide करेगा. Okay. Same with the international date line. Eastern and western hemispheres का division है. Tropic of Cancer की importance क्या है? What is the significance of Tropic of Cancer? टॉपिक्स किस चीज का लिमिट मार्क करते हैं? सन रेज का, ओवरहेड सन का, है ना? बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स द सन विल नेवर बी ओवरहेड, है ना? सो दैट इज द लिमिट ऑफ द ओवरहेड सन. बोथ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एज वेल एज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विल मार्क द लिमिट ऑफ द ओवरहेड सन. बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स सन के रेज आपको स्लैंटिंग या इंक्लाइन फैशन में मिलेंगे. ओनली विद इन द ट्रॉपिक्स विल यू एवर गेट द 90 डिग्रीज वाला सन. ओवरहेड सन सिर्फ तब मिल सकता है. ओके. व्हिच प्लैनेट इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट? अर्थ. 70% वाटर. Earthquakes are measured using which instrument? Seismographs. Seismographs से आप earthquakes measure कर सकते हो. Meaning वो जो seismic waves release होते हैं, P waves, S waves, and then surface waves, तो उसका amplitude calculate होता है उसपे, वो measure हो जाता है. And then उसका logs लेकर फिर आप you can calculate the depending on which scale you're using and how you're using that. फिर उस हिसाब से आप उसको calculate कर सकते हो. And then you can find out the magnitude of the earthquake. Hygrometer से क्या measure करेंगे? Humidity. Very good. Who said humidity? You said humidity, ना? Very good answer. Thermometer से टेम्परेचर मेजर करेंगे. एंड बैरोमीटर से प्रेशर, एयर प्रेशर. वेरी गुड. व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? गंगा. इज ब्रह्मपुत्र लॉन्गर देन गंगा? Yes, both the Brahmaputra as well as the Indus are longer than Ganga. But when you see these kind of questions, you've been asked only the length of the river within India. Okay, and Indus का या Brahmaputra का India में जो length है वो काफी कम होता है. Some around 1100 and 940 kilometers or something like that. So clearly those lengths will be much less. हम इसको ऑर्डर में लगाइए, इस लिस्ट को ऑर्डर में लगाइए लॉन्गेस्ट रिवर्स के हिसाब से. पहले गंगा आएगी, फिर गोदावरी, देन Yamuna, and then the Brahmaputra. Okay. India's southernmost point कौन सा होता है? इंदिरा पॉइंट. ओके. कहाँ लाइक करेगा? हाँ, निकोबार आइलैंड्स. ओके. व्हाट इज केप कॉमोरिन? फोर्थ ई पॉइंट जो है ये केप कॉमोरिन क्या है? कन्याकुमारी को केप कॉमोरिन बुलाते हैं. नाम साउंड करता है ना वैसे. हाँ, तो वो पहले जमाने में when the British used to be there, used to call it Cape Comorin, we call it Kanyakumari. What's Pamban Island? You know ना, there is a spit जो extend करता है यहाँ से. ये जो स्पिट है ये एक्सटेंड करता है ना. यू अंडरस्टैंड व्हाट स्पिट इज ना? एक लैंड मास को लगकर जब डिपोजिशनल सैंड वगैरह जमा हो जाता है, सी वेव्स वगैरह, वो सैंड एंड वो सब कुछ जमा करते हैं, तो एक ऐसा लैंड का पीस जमा हो जाता है, ऐसे शुरू हो जाता है. ओके, डिपॉजिट होता है वो, तो उसको बुलाते हैं स्पिट. तो रामेश्वरम का स्पिट है, उसके आगे वो धनुषकोडी का विलेज आता है. थोड़ा डेजर्टेड है, अभी जाना अलाउड नहीं होता है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता है आपको, बिकॉज वो लहरें चल रही है ना समंदर की. तो इफ यू एंड योर बाइक गेट लॉस्ट विद इन द सी, हु विल टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर दैट? सो क्लियरली द गवर्नमेंट डजंट अलाउ यू टू गो देयर. बट वो पंबन आइलैंड उसी का एक्सटेंशन है. वहां पे वो अच्छी खासी रेलवे भी दिखती है आपको. इट्स अ वेरी आइकॉनिक रेलवे ओवर देयर. ओके, ठीक है. दैट्स पंबन आइलैंड फॉर यू. व्हाट्स पार्क स्ट्रेट? इन लाइन जॉइनिंग? नो, पार्क स्ट्रेट इज दिस. ये श्रीलंका और हमारे बीच जो नैरो चैनल है उसको पार्क स्ट्रेट बुलाते हैं. स्ट्रेट्स इन जनरल will be a narrow channel, a narrow water body between two land masses, two huge land masses. वो होर्मुज का स्ट्रेट नहीं है अभी अपने लिए, तो वो पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को ज्वाइन कराएगा. हाँ, तो उसको ज्वाइन कराएगा. Which state has the longest coastline in India? गुजरात. बाकी स्टेट्स को अरेंज कीजिए. गुजरात के पास कौन सी स्टेट आनी चाहिए? आंध्रा, फिर महाराष्ट्र, एंड देन केरला. वेरी गुड. डेक्कन प्लेटो इज बाउंडेड ऑन द वेस्ट बाय वेस्टर्न घाट्स से बाउंड हो जाएगा डेक्कन प्लेटो. पेनिनसुलर प्लेटो को यू विल गेट दीज वेस्ट से वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट से ईस्टर्न घाट्स, नीचे फिर नीचे से वो नीलगिरीज, एंड ऊपर से विंध्या सातपुड़ा जैसे आप बोलेंगे वैसे. अरावली रेंज की खासियत क्या है?
oldest fold mountain in India. Very good. It is the oldest fold mountain in India. Also famously known for this fact कि ये जो mountain है ना आपका, ये जो desert वाला part है ना, तो वो sandy desert को and rocky desert को separate कराता है. Okay. So इसके लेफ्ट में आपको क्लियरली ये सैंडी डेजर्ट मिल जाता है. सैंडी एंड सॉरी यूनी विल सेपरेट द सैंडी एंड दिस डेजर्ट. ये यूजुअली आपका ये सेपरेट कराएगा. व्हाट डू यू से? रिवर्स का फ्लो सेपरेट कराएगा. ओके. ये दिस एंटायर अरावली का जो एक्सटेंशन है वो ऑल द वे ऊपर जाके वो हरियाणा रिज बन के ऑल द वे दिल्ली तक जाता है. ओके. वी आर सेइंग वो वहां तक जाता है एंड दैट इज एसेंशियली व्हाट कॉज द गंगा टू गो दिस वे एंड द इंडस टू गो दिस वे. अदरवाइज वो सारे रिवर्स एक साथ एक तरफ जा रहे थे, बट देन ये बीच में से लैंड इमर्ज हो गया एंड देन वो रिवर्स का डाइसेक्शन हो गया. वो दोनों दो डिफरेंट जगह पर चले गए. वो वाटर डिवाइड करके एक्ट करता है. ओके. ठीक है. नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट शेयर्स अ बाउंड्री विद नेपाल, चाइना एंड भूटान? सिक्किम. सिक्किम 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 विदाउट अ डाउट. ये रहा सिक्किम. इसके इधर नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, ऊपर की तरफ तिब्बत है. ओके. चिलिका लेक फेमस फॉर इट्स बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन Odisha. Odisha में located है. Famously the largest saltwater lake of India becomes freshwater lake during monsoons क्योंकि बहुत बड़ा बारिश आती है उस तरफ. So clearly वो हो जाता है. Which is the smallest state in India by area? Goa. Sundarbans mangrove forest is located in the delta of Ganga Brahmaputra. To Godavari, Krishna and Mahanadi also form deltas. To Godavari, Krishna, Mahanadi form deltas. Yes, rivers. They are eastern rivers ना. ये यहाँ के rivers ईस्टर्न साइड में आने वाले रिवर्स है. इधर इस तरफ आने वाले जितने भी रिवर्स है ईस्टर्न साइड का, यू नो ना, अपना जो पेनिनसुलर प्लेटो है उसका थोड़ा सा ईस्टर्न टिल्ट है, थोड़ा ईस्ट की तरफ टिल्ट करता है वो. तो रिवर्स का इन जनरल भी फ्लो इस तरफ हो जाता है. ओके. वो वेस्टर्न घाट्स डिवाइड करके एक्ट करता है. वेस्टर्न घाट्स से ओरिजिनेट करने वाले सारे रिवर्स या तो ईस्ट की तरफ जाएंगे या वेस्ट की तरफ जाएंगे. तो ये वेस्ट की तरफ जाने वाले सारे रिवर्स शॉर्ट एंड स्विफ्ट होते हैं, बहुत फास्ट जाते हैं, फटक से नीचे गिर जाएंगे. वैसे भी वेस्टर्न कोस्ट अपना पूरा रॉकी कोस्ट है. ओके. यहाँ से जो फ्लो करने वाले रिवर्स है वेदर इट इज गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो महानदी भी. महानदी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं करता है लेकिन फिर भी ईस्ट की तरफ आता है. ओए पीपल स्टॉप टॉकिंग. तो वो सारे रिवर्स ओरिजिनली भी बड़े लंबे हैं. ओके. लंबे हैं तो क्लियरली दूर से आते हैं. बड़ा सारा डिपोजिशन सिल्ट भी लाएंगे. ओके. साथ में सिल्ट्स लेके आएंगे जितना भी इरोड किया था वो. ऊपर से जब वो यहाँ इस तरफ आते हैं, ईस्टर्न घाट्स के क्रॉस करते हैं एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आते हैं, तो एक तो दे आर स्लो एंड स्लगिश बिकॉज दे आर कैरिंग ऑल दैट डिपॉजिट एंड सिल्ट विद देम. सेकेंडली यहाँ पर जब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आ जाते हैं तो वो फ्लैट हो जाता है. इट इज प्रीटी फ्लैट एंड ब्रॉड. ओके. तो वो रिवर्स और भी स्लो हो जाते हैं एंड उनका टेंडेंसी टू डिपॉजिट एवरीथिंग. यू हाउ यू थ्रो योर बैग्स अवे व्हेन यू गो होम, है ना. इतना बड़ा बैग जब कैरी करते हो तो घर जाके इमीडिएटली बैग फेंक देते हो ना नीचे. तो वैसे वो रिवर्स अपना सारा सिल्ट इमीडिएटली जैसे ही जगह मिल जाती है वैसे डिपॉजिट कर देते हैं. बीच रास्ते में ही छोड़ देते वो सिल्ट को. ओके. एंड देन उसके यूजुअली वहां पर बड़े बड़े डेल्टास बन जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती है एंड देन डेल्टास बन जाते हैं. दैट्स द जनरल लॉजिक. ओके. सो प्लीज रिमेंबर ईस्टर्न साइड पे हमको सारे डेल्टास मिलते हैं starting with the Ganga Brahmaputra and then the Mahanadi, then the Krishna and the Kaveri. यहाँ पर ये सारे मेजर डेल्टास है. एंड देन वेस्टर्न साइड पे आपको डेल्टास नहीं मिलते. वहां का कोस्ट पूरा रॉकी एंड इंडेंटेड है. ओके. सो व्हाटएवर रिवर्स यू विल फाइंड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट विल आल्सो बी अदर देन द नर्मदा एंड तापी व्हिच आर रियली लॉन्ग रिवर्स. मोस्ट रिवर्स जो वेस्टर्न घाट से नीचे आती है वेस्ट की तरफ वो सारे शॉर्ट एंड स्विफ्ट होते हैं. ओके. एंड डेल्टास बनाते नहीं है वहां पे. वेस्टर्न कोस्ट पे आपको डेल्टास नहीं मिलते नो मैटर व्हाट यू से. ओके. व्हिच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया? एशिया. और ये कॉन्टिनेंट्स को लाइन में लगाइए, ऑर्डर में लगाइए. एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, देन यूरोप. द अमेज़न रिवर फ्लोज थ्रू विच ओशन? अटलांटिक ओशन से पास करता है. फेमसली अटलांटिक ओशन में जाता है. वो जहाँ इतना ज्यादा डिस्चार्ज होता है उस रिवर का बिकॉज इट इज द मोस्ट वॉल्यूमिनस रिवर ना. वो सबसे बड़ा रिवर है, नॉट द लॉन्गेस्ट बट इट इज द मोस्ट, सबसे ज्यादा डिस्चार्ज काउंट करता है वो. तो वो वहां का पूरा एरिया भी अलग दिखता है. द कलर ऑफ द ओशन लुक्स डिफरेंट वेयरएवर द अमेज़न डिस्चार्जेस इनटू द दिस एंड एस्चुरी बनाता है वो वहां पे. डेल्टा नहीं बनाता है, एस्चुरी बना रहा है. ओके. चलो जी, वेरी सिंपल ये वाले. 10 ही मिनट बचे एंड ये बहुत छोटे छोटे हैं. सन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. सेम नहीं, हाइड्रोजन एंड हीलियम. हाइड्रोजन एंड हीलियम. अरे उससे वो फ्यूजन होगा ना, 4 हाइड्रोजन एटम्स मिलेंगे, एक हीलियम एटम बनाएंगे, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, है ना. तो इट इज गोइंग टू बी हाइड्रोजन एंड हीलियम. एनर्जी ऑफ द सन इज प्रोड्यूस्ड बाय फिशन, फ्यूजन, कंबशन, रेडियोएक्टिव. ठीक है.
फ्यूजन से बनेगा. हाँ, वेरी करेक्ट. ये वाला बताइए. Which planet is known as the morning star or the Venus पे क्या होता है ना, it is the brightest and the hottest planet बुलाते हैं हम उसको. The reason being कि Venus पे होते हैं, Venus पे सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है. ओके, तो सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स बन जाते हैं. अब सल्फ्यूरिक एसिड के जब क्लाउड्स बन जाएंगे तो जो सन के रेज आते हैं तो वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं वहां से. ओके, वो नीचे पेनिट्रेट नहीं कर रहे, दे विल सिंपली बी रिफ्लेक्टेड, एंड बिकॉज दे आर रिफ्लेक्टेड सो ब्राइटली, तो मिरर जैसे शाइन करता है ना, वैसे वो Venus शाइन करता है. सो वी are essentially looking at something like that. Okay, so it is the brightest object in the night sky, followed by the moon. The largest planet in the solar system is Jupiter. It could have इतना बड़ा माड़ हो जाता तो वो खुद ही स्टार बन जाता. Okay, planet with the highest surface temperature is Venus again. नहीं, वीनस अगेन. मार्स सन के सबसे करीब है, तो जो साइड सन को, लेकिन उसके पास खुद का एटमॉस्फेयर नहीं है. इट हैज नो एटमॉस्फेयर. वो सोलर विंड्स आर स्ट्रिप्ड इट ऑफ ऑल इट्स एटमॉस्फेयर. ओके, तो उसके व्हाट happens is the side that faces the sun is very hot, but the side that is going through the night or does not face the sun is clearly very cold. Okay, तो it does not retain atmosphere नहीं है तो वो heat नहीं retain कर पाता है. अगर अर्थ के पास atmosphere नहीं होता तो हमारा भी surface temperature कुछ -18 डिग्री सेल्सियस होता, तो लाइफ नहीं सर्वाइव कर पाता. But we have an atmosphere, we have greenhouse gases in it, तो clearly वो heat को retain करता है. Okay, boys stop talking. It is going to be Venus. Venus पे ना कुछ 90-95 डिग्री 90-95% तक कार्बन डाइऑक्साइड है उसके एटमॉस्फेयर में. ओके, तो वो इतना मोटा ग्रीन हाउस गैस बैठ के सारी हीट को रिटेन करता है, एंड वीनस का सरफेस टेम्परेचर कुछ सेंटीग्रेड हो जाता है. ओके, हेलो सर, व्हाइट शर्ट, नाम क्या है आपका? मैं अभी ना आपके सारे नाम जाके मैं तो he'll deal with you, I do not have to deal with you at all. He'll do, किसी और को बता देंगे. मैं क्यों रोज रोज यहाँ पे बैठ के बट करूँ कि आप लोग बातें ना कीजिए करके. And people, planet with the highest surface temperature, Venus. Light year is a unit of distance any day. What is the speed of light? 3 into 10⁸ meter per second. Good. The nearest star to the earth after the sun is not dwarf star. Proxima Centauri. Proxima Centauri is the one that is closest. वो एक 3 stars का system है जिसको Alpha Centauri बुलाते हैं. तो Alpha Centauri A, Alpha Centauri B, and then there is a Proxima Centauri. So we are talking about Proxima Centauri. Which planet is called as red planet? Mars. A galaxy to which our solar system belongs is Milky Way. The total number of standard time zones in the world is 24. हर घंटे के हिसाब से. ओके, फॉर एवरी आवर यू गेट अ स्टैंडर्ड टाइम जोन. तो आइडियली अगर आप नॉर्मली टेक्निकली काउंट करने जाओ तो इट इज गोइंग टू बी 24 टाइम जोन्स. बट सिंस कंट्रीज लाइक इंडिया और नेपाल समटाइम्स यूटिलाइज अ टाइम जोन ऑफ प्लस 530 आवर्स या प्लस 545 आवर्स, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि मल्टीपल टाइम जोन्स हो जाते हैं. तो टोटल अगर दुनिया भर के टाइम जोन, स्टैंडर्ड टाइम जोन्स देखते हैं जो कंट्रीज यूटिलाइज करते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी 38. ओके, बट वी आर गोइंग विद 24 बिकॉज दैट इज द टेक्निकली राइट आंसर. The Earth's axis is inclined to the plane of its orbit at an angle of orbit. This is the axis of rotation. This is the orbit of revolution. Orbit ना, orbit माने अभी वो घूम रहा है ना किसी के beyond, अराउंड घूम रहा है ना. ऑर्बिट माने किसके अराउंड घूम रहा है. तो सन के अराउंड जो ऑर्बिट होता है उसका वो हॉरिजॉन्टल है, उसको एक्सिस कैसा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है. तो उसको कितना इंक्लिनेशन है, यहाँ का इंक्लिनेशन कितना है, 66.5. Equator is the line of latitude at, very correct, 0 degrees. The Tropic of Cancer lies at an altitude of approximately 23.5 north, 23.5 degrees north. Good. The lines joining places of equal longitude are called मेरिडियंस. मेरिडियंस बुलाते हैं उसको. पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं जो इक्वेटर को पैरेलल होते हैं, एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड होते हैं जो नॉर्थ टू साउथ पोल्स में रन करते हैं. ओके, व्हाट आर आइसोबार्स एंड आइसोथर्म्स? लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल same temperature will be isotherms, and isobars are same pressure. Very good. The prime meridian 0 degrees longitude passes through Washington, Greenwich, Paris, Delhi. Greenwich पे पास करती है. The standard time of a country is determined by its latitude, central meridian, longitude, altitude or distance from the equator.
Central meridian longitude. Okay, the latitude will usually decide what the temperature is going to be, what the climate will be, but it is the longitude that decides the time, both the local as well as the standard. Okay, ठीक है. And lastly, each degree of longitude corresponds to a time difference of 1 minute, 4 minutes, 15 minutes, 60 minutes. 1 degree of longitude kitna? 4 minutes. 4 minutes. 360 degrees in 24 hours. So one hour में 15 degrees. And for one length of degree, 1 degree के लिए 4 minute लेगा वो. ऐसा calculation है आपका. Okay. International date line roughly follows the meridian of 180 degrees. What happens when you cross the international date line? The date changes by exactly 1 hour. Okay. अगर हम US की तरफ क्रॉस करेंगे, जापान से US की तरफ क्रॉस करेंगे, will we gain 24 hours? Will we lose 24 hours? Why lose? Gain 24 hours. आप पिछली वाली डेट में चले जाते. अगर आज आप 29th पे हो तो आप 28th में चले जाएंगे. I didn't tell you guys that thing. क्या मैं जापान से अगर आज रात को फ्लाइट ले लूँ 10:30 बजे LA के लिए फ्लाइट ले लूँ, meaning I'm going from this place to this place. मैं यहाँ से जापान से निकल रही हूँ एंड यहाँ पर LA के यहाँ पर कैलिफोर्निया जाएंगे. ओके, दैट इज द दिस. तो पैसिफिक को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग. तो कुछ 10:30-11 घंटे की फ्लाइट होती है. हाँ, आइडियली आई शुड बी रीचिंग द नेक्स्ट डे. ओके, तो मैं जब LA में जाके अपना टाइम एडजस्ट करती हूँ तो मुझे दिखता है कि जिस रात को मैं निकली थी उसी दिन के दोपहर को पहुंच गई हूँ मैं, या सुबह 11 बजे और समथिंग लाइक दैट. दैट इज द टाइम दैट आई रीच्ड. ओके, सो दिस इज बिकॉज you once you cross the international date line, across that date line the date changes by exactly 1 day. तो आप आगे पीछे हो जाते हो. ओके, this part of the world is always behind. US वाला part is always behind. Japan वाला part is always ahead in the date. Okay, calendar में ahead होता है वो. Indian Standard Time is based on the longitude of 82.5 degrees. Okay, and IST is ahead of Greenwich Mean Time by 5 hours 40 minutes. 30 minutes. Good. Thank you very much.
Am I audible? Yes, sir. Sorry, I could not reach on time. But let us start because Ananya is there, Rajat is there, Anjali, Srilekha, and class 12. So let us start fresh, okay, without waiting for anyone because we are already running out of time. I hope my screen is visible. Yes, sir. Today we will be talking about the next part of the parliament, that is part 2. We'll be looking at how parliament actually functions, how it works. So आप लोग इमेजिन करो कि पार्लियामेंट का एक हाउस है जिसको हम लोग लोकसभा बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ओके। अब जैसा हर स्कूल का अपना टाइम टेबल होता है, वैसा ही पार्लियामेंट का भी अपना खुद का टाइम टेबल है कि मॉर्निंग 11 o'clock को स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला काम जो वो करेंगे वो रहेंगे क्वेश्चन आवर। सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी होती है बताओ, सब लोग अनम्यूट करके बोलो। सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी है? क्वेश्चन आवर की। कितने घंटे का क्वेश्चन आवर है? 11 से 12, 1 घंटे का, इसलिए आर। उसके बाद 12 से 1 क्या है? 0 आर। अब 11 से 2 काम करने के बाद अपने संसद लोग थक जाते हैं, फिर ये लंच करते हैं। 2 घंटे के अंदर लंच हो रहा है। 11 बजे स्टार्ट हो गया, 1 बजे बंद भी कर रहे हैं। 11, 1, 2। अरे बात समझ में आ रही है क्या? बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे? अरे आप लोगों को जोक समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर 1 से 2 लोग ये लंच कर रहे हैं, फिर 2 से स्टार्ट हो रही है कार्रवाई, ओके। तो राज्यसभा 2 से आगे और 3 घंटे काम करता है, ओके। और लोकसभा करती है 6, 2 से 6, 4 घंटे। तो ये 11 बजे जो आते हैं तो 5 से 6 बजे चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अनन्या क्या समझा तुमको? क्वेश्चन आवर कब रहता है? अनन्या? Yes, sir. श्रीलेखा, हाँ अनम्यूट करो। Yes, sir. अनम्यूट किया, हाँ। मुझे बोलो क्वेश्चन आवर कब रहता है? Sir, 11 to 12. हाँ, मतलब आप लोगों की ये क्यों बता रहा हूँ, ये एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आना। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा इसके ऊपर। एक तो क्वेश्चन आवर और 0 आवर, ये 2 क्वेश्चंस है जो एक्सपेक्टेड है। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, अब आते हैं हम लोग स्टार क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन और प्राइवेट मेंबर्स क्वेश्चंस। सबसे पहले आते हैं स्टार क्वेश्चन के ऊपर। स्टार क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? हमने फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस पूछना है, हम लोग पेपर पे लिखेंगे और उस पर करेंगे ऐसी मार्क स्टार। तो ये क्वेश्चन लेने से पहले आपको 15 दिन पहले सबमिट करना है। एटलीस्ट यू नीड टू सबमिट इट 15 days इन एडवांस, ओके। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अंजलि को क्वेश्चन पूछना है कि बाबा लेट अस से डिफेंस पर्सनल की सैलरी इंक्रीमेंट का बिल आया है कि सैलरी इंक्रीमेंट करो, ओके, डिफेंस वालों का, क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया वगैरह वगैरह। तो इसका बिल किसे, मतलब इसके ऊपर अंजलि को क्वेश्चन करना है। तो अंजलि क्या करेंगी, 15 दिन पहले ही स्पीकर को ऐसे इसमें लिख के देंगे कि बाबा सैलरी रिलेटेड क्वेश्चन, और क्वेश्चन वगैरह पूरा लिख कर किसको देंगी? स्पीकर को, स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर को दे दिया। स्पीकर वो क्वेश्चंस देता है मिनिस्टर्स को कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप प्रिपेयर करो,
डाटा वगैरह कुछ लेना है तो जमा कर लो, आपको आंसर देना है। ठीक है, तो दिन में ऐसे 20 क्वेश्चन लिए जाते हैं। अब ये स्टार और अनस्टार में फर्क क्या होता है? स्टार क्वेश्चन अगर अंजलि ने स्टार क्वेश्चन पूछा है, मतलब ऐसा मार्क किया है, मतलब अंजलि ओरल, ओके, अंजलि को आंसर जो मिलेगा ना वो मिनिस्टर ओरली देगा। ठीक है, और ये इसके जैसे अंजलि को अगर कुछ क्वेश्चन करना है, क्रॉस क्वेश्चन, कि उसने XYZ आंसर दे दिया, तो आपको अगर क्रॉस भी करना है तो आप उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल श्रीलेखा ने अनस्टार्ड क्वेश्चन दिया, मतलब नॉर्मली ऐसा इसने डायरेक्ट किया और यहाँ पे अनस्टार्ड मार्क नहीं है, यहाँ पे कोई मार्क नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अनस्टार्ड क्वेश्चन। अब अनस्टार्ड क्वेश्चन का जो मिनिस्टर आंसर देगा ना, वो अनस्टार्ड क्वेश्चन का आंसर देगा रिटर्न में। अब जब वो रिटर्न में आपको आंसर देगा श्रीलेखा को, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है क्या? पॉसिबल ओरली आप कुछ पूछ सकते हो क्या? नहीं। तो अब मैं रजत, मुझे बताओ बेटा, स्टार्ट क्वेश्चन और अनस्टार्ट क्वेश्चन में क्या फर्क है रजत? सर सर उनमें से सिर्फ 20 क्वेश्चंस पिक्ड होते हैं स्टार्ट में। मुझे बताओ स्टार क्वेश्चन क्या होता है, अनस्टार क्वेश्चन का बेसिक डिफरेंस क्या है? मैं क्वेश्चन नहीं करता पता। हूँ, मैंने, तुम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हो तुम, हाँ बरोबर। मैंने तुमको स्टार क्वेश्चन पूछा, स्टार, तुम मुझे ओरली आंसर दोगे ये रिटर्न में? स्टार्ट ना ओरली। ओरली। तो अब तुमने जब ओरली मुझे कुछ बात बोली, जैसे कि आई विल डू दिस इन अ मंथ और टू, तो मैं तुमको क्रॉस करूंगा इमीडिएटली, इन अ मंथ और टू, टेल मी डेट, तो मैंने तुमको क्रॉस कर लिया। आर यू गेटिंग इट? तो स्टार क्वेश्चन के अंदर, ओके, स्टार क्वेश्चन के अंदर आप 15 दिन पहले एडवांस में देते हो, जैसे अनस्टार और स्टार में दोनों में भी एडवांस रहता है 15 दिन का। 15 दिन पहले ही आपको क्वेश्चंस लिख कर देना होते हैं स्पीकर को, स्पीकर देता है मिनिस्टर को, मिनिस्टर प्रिपरेशन करके आके, अगर वो स्टार्ट क्वेश्चन है तो ओरली आंसर देगा, अगर अनस्टार्ड है ना, उस पर ऐसे स्ट्रिक्ट मार्क नहीं है, तो आपको रिटर्न में मिल जाएगा। ओके, रिटर्न में आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ये होता है स्टार्ड क्वेश्चंस, अनस्टार्ड क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एनडीए क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज होती है। बताओ श्रीलेखा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्ड क्वेश्चन एंड अनस्टार्ड क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स? सर स्टार्ट क्वेश्चंस में जो आंसर है वो ओरली बताया जाता है, और अनस्टार्ट क्वेश्चंस में रिटन में आंसर दिया जाता है। बरोबर। और ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम स्टार अनस्टार? बस भी जो भी अपन क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको अपन ने पेपर पे स्टार कर दिया तो हो गया स्टार्ट क्वेश्चन, और अपन ने स्टार नहीं किया तो हो गया, जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, मैंने क्वेश्चन टू द, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है, तो मैंने क्वेश्चन किया, व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय गवर्नमेंट टू ensure that no no question paper will leak। ठीक है, अब ये मेरा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन स्टार्ड है क्या अनस्टार्ड है अंजलि? अनस्टार्ट। अनस्टार्ड है। अब मेरे को आंसर कैसा मिलेगा? आंसर कैसे मिलेगा मिनिस्टर की तरफ से? सर रिटर्न में मिलेगा। रिटर्न में। अगर मेरे को स्टार करना है तो मैं क्या करूंगा?
हो गया स्टार्ट। समझ में आ गया? इससे मार्क कर दी या मैंने सिर्फ ऐसा भी कर दिया तो भी हो गए स्टार क्वेश्चन। अब मेरे को जो आंसर मिलेगा वो कैसा मिलेगा? ओरली। और ये स्टार्ट क्वेश्चन और अनस्टार्ट क्वेश्चन होता है। मैं मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे फर्दर कोई इसके ऊपर बात करने की जरूरत है। ओके। हाँ, और दूसरा एक चीज जो मैंने बोला ना, आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ सकता है 0 आवर के ऊपर। 0 आवर ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ इंडिया के अंदर ही होता है 0 आवर। क्योंकि ये 0 आवर को 0 आवर क्यों बोलते हैं कि 12 बजे एक्यूरेटली स्टार्ट हो जाता है। देखेंगे ना तुम, देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 0 आवर कब स्टार्ट हो रहा है। देखो कब स्टार्ट हो गया 0 आवर? 12 बजे, है ना? 12 से 1, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 0 आवर। दुनिया में 0 आवर ये सिर्फ इंडिया में है, इसलिए इसको इंडियन इनोवेशन भी बोलते हैं। ये अपना ब्रेन चाइल्ड है, इंडिया के लोगों ने बनाया है। 0 आवर जैसा क्वेश्चन आवर सब तरफ रहता है, क्वेश्चन आवर पूरे दुनिया में सब तरफ रहता है, लेकिन 0 आवर सिर्फ इंडिया में रहता है। और ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है, लेकिन ये चलते आ रहा है। देखो लिखा है इंडियन इनोवेशन सिंस 1962। तो ये एक चीज आपको पता चली कि आप यहाँ पे कुछ अर्जेंट मैटर है तो वो एक लेते हैं। और ये अब इसके लिए 15 दिन पहले क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है। आप 12 बजे आपका 0 आवर स्टार्ट हो रहा है, आप 10 बजे जैसे ही पार्लियामेंट शुरू हो रही है ना, 11 बजे पार्लियामेंट शुरू हो रही है, तो आप 10 बजे वगैरह स्पीकर को ले जाके दे दो, बाबा ये क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, ठीक है? और नोटिस दे दो किसको? स्पीकर को। हो गया, आप स्पीकर को नोटिस दे दिए 10 बजे, 2 घंटे के अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि ये अर्जेंट बेसिस पे हो रहा है ना, अर्जेंट कोई चीज है तो हो रहा है। जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म हो जाता है, आप 0 आवर में उसको पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आवर में आपको 15 दिन पहले पूछना है, सब फर्क समझो। क्वेश्चन आवर में 15 दिन पहले ही आपको क्वेश्चंस देना है, 15 days बिफोर। अगर ये पॉसिबल नहीं है, अर्जेंट है कुछ मैटर, तो क्या करेंगे? जैसे कि रेल का एक्सीडेंट हो गया, एरोप्लेन क्रैश हो गया, कुछ भी कोई भी फ्लड आ गए, कुछ भी हो गया, आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना है मिनिस्टर से, तो आप क्या करेंगे? 10 बजे स्पीकर को बोल देंगे, 10 बजे से पहले स्पीकर को आप बोल देंगे, तो स्पीकर आपको परमिशन देता है, आप 0 आवर में उसको पूछ ले सकते हैं। किसी को नहीं समझा हाथ ऊपर करो। बोलो। अच्छा, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। किसी को पता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन किसको बोलते हैं? एनीवन पता है किसी को? एनीवन? श्रीलेखा पता है तुमको नो कॉन्फिडेंस मोशन? अनन्या? अनन्या तुम्हारा माइक क्यों नहीं अनम्यूट हो रहा है? नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन समझने से पहले आपको मैं ना मेजॉरिटी बता देता हूँ। देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन, देखो पहले मेजॉरिटी बता देता हूँ, फिर तुमको मेजॉरिटी के बाद हाँ, देखो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहे हैं, ये डॉट 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 जो दिख रहा है ना आपको, ये डॉट डॉट क्या है? इतने मेंबर से। ओके, अब होता क्या है देखो, मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है और ये सब चीज क्या रहती है आपको बता देता हूँ, ठीक है? इन डिटेल आपको बता देता हूँ। देख, आपके पास 552 मेंबर्स है, ओके?
अभी जैसा पार्लियामेंट फंक्शन होते हैं ना, वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। लेट अस से ये पार्लियामेंट है, ओके। और ये पार्लियामेंट में देखो, यहाँ पे लोग ऐसे बैठे हैं, ठीक है। अब आपको कम से कम मेंबर्स चाहिए 273 आउट ऑफ 545। ये मैजिकल फिगर है, ओके। इससे ज्यादा मेंबर्स अगर रहते हैं आपके, तो आपका बनेगा पीएम। अगर 273 में से 272 भी हो जाए, तो आपकी गवर्नमेंट नहीं बनती, ओके। मतलब आपकी गवर्नमेंट गिर जाती है, मतलब आपके पीएम को रिजाइन करना पड़ेगा। पीएम विल रिजाइन इन, अगर ये नंबर नहीं आता है, समझ में आया? इसीलिए हमेशा गवर्नमेंट को डर रहता है कि एमपी फूटना नहीं चाहिए, है ना। देखो, आप देखो, आपको मैं इस बार का बता देता हूँ, तो थोड़ा तुमको अंदाजा आ जाएगा। मेजोरिटी इन 2024 इलेक्शन, देखो। अब देख सकते हो, मैं आपको कॉपी पेस्ट करके बता देता हूँ। ये रियल एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए सबकी सब। देखो, देख, अच्छे से समझ लेना, तुम्हारे पेरेंट्स को भी बता सकते हैं आप, इतना नॉलेज है इसके अंदर। मैं जो समझा रहा हूँ वैसे समझ में आना चाहिए, बस आपको हर एक चीज समझा देता फिर मैं। ठीक है, अ, ठीक है, यहाँ से समझ में आ जाएगा। देखो, तुम्हारे समझ में क्या आ रहा है? बीजेपी को टोटल सीट कितने? 240, ठीक है। चाहिए थे कितने? 273, है ना। 271, 72 प्लस 1 मेजोरिटी के लिए। समझ में आएगा? देखो, ये लोकसभा और ये इसकी मेजोरिटी, कम से कम इतना चाहिए आपको। तो 240 और चाहिए कितने? 273। कितने कम गिर रहे? 33 मेंबर्स कम है। कितने कितने एमपीज कम है बीजेपी के पास? 33। तो अब इसके लिए उन्होंने क्या किया? देखो, इसके लिए क्या किया, दिख रहा है? 19 में तो जरूरत नहीं थी, बीजेपी के पास खुद के जितने सारे मेंबर्स थे, ठीक है। बीजेपी के पास अभी कितने? 240। तो अब इनको जो सपोर्ट लगा ना, वो छोटे मोटे पार्टीज का लगा। देखो, तो इन्होंने क्या किया, आपको मैं बता देता हूँ। बीजेपी प्लस सेना प्लस क्या था वो, और एक्सेट्रा कुछ, जो भी था। रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। अ, फिर तुम कभी भूलेंगे नहीं कि ये कैसे चलता है सिस्टम। हम्म, देखो, यहाँ पे कुछ फिगर्स मिल नहीं रही है, लेकिन आपको इतना बता देता हूँ कि
अब इन्होंने क्या किया, कुछ शिवसेना की कुछ मेंबर्स ले लिए, फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट से 6, कुछ आंध्र प्रदेश की कोई पार्टी है उनके ले लिए फॉर एग्जाम्पल 15, और किसके लिए 15, है ना। ऐसा करते करते ये 273 प्लस हुआ। इसको बोलते हैं अलायंस, इसको मराठी में बोलते हैं आघाड़ी। ओके, रशियन को मैसेज ध्यान नहीं रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, अलायंस। जस्ट a minute, हाँ। चलो, तो अब इमेजिन करो, अपने को पढ़ना क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या, जिसके पास जो भी गवर्नमेंट के पास अगर 273 मेंबर्स नहीं है, एटलीस्ट 272 प्लस 1, अगर 273 प्लस मेंबर नहीं है ना, इतने एमएल एमपीज का सपोर्ट नहीं है लोकसभा में। ये सिर्फ लोकसभा में होता, राज्यसभा में नहीं होता, याद रखना ये। और सिर्फ कहाँ आता, लोकसभा कैन ओनली, ओके, सिर्फ ये लोकसभा में होता। तो लोकसभा के 273 मेंबर्स अगर सपोर्ट नहीं कर रहे गवर्नमेंट को, याद रखो, अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो गवर्नमेंट विल फॉल, गवर्नमेंट विल फॉल, मतलब पीएम को रिजाइन करना पड़ता है। क्यों? कॉन्फिडेंस का मतलब होता है यहाँ पे मेजोरिटी। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या, मेजोरिटी। नो कॉन्फिडेंस मतलब नो मेजोरिटी। नो कॉन्फिडेंस मतलब क्या, नो मेजोरिटी रिजल्ट्स इन द फॉल ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, अब मुझे श्रीलेखा समझाएंगी कि क्या रहता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। इतना मैंने समझाया, बताओ व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। सर नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर 273 सीट्स है, अगर वो 273 सीट्स का मतलब पूरी नहीं हुई, तो जो वो मेजोरिटी है वो गिर जाती है, और उसकी वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। मतलब वो अगर सीट्स कंप्लीट नहीं होती है तो वो गवर्नमेंट है वो गिर जाती है। हाँ देखो कैसा है, जो भी मेजोरिटी रहती है ना, जैसे कि इमेजिन करो, मतलब अगर 272 है, इंटू 2 करेंगे तो कितना होता है, ये 4 और ये 4 1 5, 545। ओके, इमेजिन करो कि अपने पास 545 एमपीज है, राइट। इसको डिवाइड करो 2 से, तो ये आता है 272 या 273, ठीक है, ठीक है ना। मतलब 545 में से मिनिमम इतने लोगों ने आपको सपोर्ट करना है। सपोर्ट मतलब आपके पार्टी को, ठीक है, बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई भी है, जिसको इतने लोग सपोर्ट करेंगे उनका पीएम बन जाता है। अगर इतना मिनिमम सपोर्ट नहीं, ये जैसा रहता है ना, अपने पास पास होने के लिए 35% होना। 12th में कितने परसेंट लगते पास होने के लिए, बताओ, अरे बताओ ना, कितने परसेंट लगते 12th में पास होने के लिए? 35। 35 लगते हैं। अगर किसी को 34.99 आए तो भी फेल हो जाता है ना वो, या 34.50 आ गए तो भी फेल हो जाता है ना। ऐसा तो नहीं बोलते सर सिर्फ आधा परसेंट कम है, ऐसा नहीं होता ना, फेल हो गए आप। तो ये जैसा पास होने के लिए 35% लगते हैं या 40% जितने भी लगते हैं, वो मिनिमम क्राइटेरिया है, वैसा मेजोरिटी की मिनिमम मार्क 272 या 273 है। अगर इतने मेंबर्स आपको सपोर्ट नहीं करते तो योर गवर्नमेंट विल फॉल एंड योर मिनिस्टर्स विल हैव टू रिजाइन, और वो पार्टी चले जाके दूसरी पार्टी पावर में आती। ओके, ऐसे ही होता है गवर्नमेंट में। कांग्रेस है तो कांग्रेस गिर जाएंगी, बीजेपी आ जाएंगी, बीजेपी है तो बीजेपी गिर जाएंगी, कांग्रेस आ जाएंगी, क्योंकि इंडिया में 2 ही पार्टीज है, एक तो ये रहेंगे या तो ये रहेंगे, ऐसा ही है। जनरली किसी किसी के पास 3 3 पार्टीज रहते हैं, किसी किसी कंट्री में वहां पे वो भी चलते हैं, लेकिन जनरली पूरे दुनिया में सिर्फ 2 पार्टी होती है। जैसे कि कांग्रेस बीजेपी इंडिया के अंदर, लेबर और कंजर्वेटिव ब्रिटेन के अंदर, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक अमेरिका के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप कौन से पार्टी से, एनीवन? डोनाल्ड ट्रंप? डेमोक्रेटिक। नहीं बा, ये है रिपब्लिक पार्टी से, याद रखो। और उनके सिंबल भी बहुत देखने जैसे, आपको पता है
उनके सिंबल देखो। देखो उनके सिंबल क्या है, क्या है? एक तरफ एलिफेंट वाला। हाँ, एक तरफ एलिफेंट, एक तरफ बोलो डोंकी। डोंकी। तो अभी एलिफेंट चल रहे हैं, इसके पहले डोंकी थे। देखो इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, डेमोक्रेट्स वर्सेस डोंकी। ठीक है, आपको पता था ना सबको ये, रिपब्लिकन्स वर्सेस डेमो था ना, क्या नहीं था? नो सर। अच्छा, अच्छी बात है, अब पता चल गया ना। ये रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट, ये अमेरिका के अंदर सिंबल है। वैसे एक कंजर्वेटिव देखो, से इंडिया में तो आपको पता है पंजाब और कमल का फूल, ये दो है। और लेबर पार्टी देखो, लेबर लेबर पार्टी वर्सेस कंजर्वेटिव पार्टी इन यूके, सिंबल। इन लोगों के ऐसे सिंबल रहते हैं। बहुत अलग अलग सिंबल है यहाँ पे, देखो, मतलब अलग ही लेवल का इनका सब कुछ सिस्टम है। और वहाँ पे एक तीसरी पार्टी भी है, बहुत सारी पार्टीज है वहाँ पे, लेकिन दो पार्टीज की गवर्नमेंट चलती है। तो आपको समझ में आया, देखो यहाँ पे दिखा है ना। तो अभी मेरे हिसाब से तो नो कॉन्फिडेंस मोशन तुम्हारे समझ में आया है सबके, तो आगे बढ़ता हूँ मैं कि कभी भूलना नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में अगर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन मोशन समझ में नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं आता है। एक चीज याद रखना, अब पब्लिक बिल किसको बोलते हैं और प्राइवेट बिल किसको बोलते हैं? पब्लिक बिल उसको बोलते हैं जो गवर्नमेंट खुद लेके आती है और ये पास हो जाता है। क्यों पास हो जाता है? कि गवर्नमेंट ही उनकी है, मेजोरिटी ऑलरेडी है, मेजोरिटी है इसीलिए तो सरकार बनी है ना। और जब मेजोरिटी है तो आपकी बिल पास होना ही होना है, खास करके लोकसभा में। राज्यसभा में कभी मेजोरिटी हो सकती, कभी नहीं भी हो सकती, लेकिन लोकसभा में तो होती ही है। प्राइवेट बिल किसको बोलते हैं? जो गवर्नमेंट में नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अनन्या, ये ऐसे पार्टी से अपक्ष लड़के आए। अपक्ष, अपक्ष किसको बोलते हैं मालूम है आपको? इंडिपेंडेंट। डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट? देखो, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर एग्जांपल आप रहते हो नांदेड़ में, या आप रहते हो पुणे में। इमेजिन करो आप पुणे में रह रहे हो सब, और पुणे के अंदर आपको बीजेपी दिखती है और आपको दिखती है कांग्रेस। आप देखते हो कि ये दो पार्टीज है और आपको दोनों भी पार्टी पसंद नहीं है। आपको वहाँ पे बहुत सारे पार्टीज रहेंगे वहाँ पे एक्स वाई जेड, लेकिन आपको कोई पार्टी पसंद नहीं। आपको एक्स वाई जेड बंदा बहुत पसंद है, आपको लगता है कि यार ये बंदा किसी पार्टी ने इसको टिकट तो नहीं दी, लेकिन ये ईमानदार है और ये जीतना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने उसको वोट कर दिया और जीत के आ गया, हालांकि उसकी कोई पार्टी मतलब नहीं है। उसका सिंबल है, फॉर एग्जांपल उसका सिंबल ले लो, कोई भी एक सिंबल ले लो। इमेजिन करो कि उसका सिंबल फ्रिज है, फ्रिज, या उसका सिंबल टीवी है या मोबाइल है, कुछ भी एक सिंबल ले लो। या क्रिकेट की बैट ले लो, और सब लोगों ने मतलब अच्छा क्रिकेटर था वो कोई, समझो सचिन तेंदुलकर को किसी ने टिकट नहीं दिया, इमेजिन करो, या विराट कोहली, या कोई भी एक, विराट कोहली फॉर एग्जांपल, विराट कोहली को इलेक्शन लड़ है, उसको किसी ने टिकट नहीं दिया। ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन इमेजिनरी सिचुएशन है। और आपको लगता है कि यार अपन उसके फैन है, और वो उसने क्या किया, क्रिकेट का बैट का सिंबल लेकर इलेक्शन लड़ा, वो हो गया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। समझ में आया? एक रहते रूलिंग पार्टी के, एक रहते पॉलिटिकल पार्टीज के, एक रहते अपोजिशन पार्टी के, एक रहते इंडिपेंडेंट। तो जो रूलिंग पार्टी का है वो हो गया गवर्नमेंट का बिल, और जो उसके अलावा जितने हैं इंडिपेंडेंट, अपोजिशन, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट में नहीं है, वो सब होते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल, और वो जनरली पास नहीं होता। अब आते हैं मनी बिल के बारे में और ऑर्डिनरी बिल के बारे में। मनी बिल जो होता है ना, जो फाइनेंशियल मैटर लाइक टैक्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर है ना, इसके ऊपर रहता है।
इसको बोलते हैं मनी बिल। ये आर्टिकल 1110 में आता है। 110 आर्टिकल नंबर कितना 1110 110 ओके 110 110। इसमें जो आता है वो मनी बिल, टैक्स सिस्टम, पैसों से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जो भी चीजें। और मनी बिल आता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। मनी बिल कहाँ आता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। मनी बिल राज्यसभा में ओरिजिनेट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ओके, रीड करो इसको, मैं समझा देता हूँ फिर। रीड करो ये, आई विल एक्सप्लेन। देखो, आप लोगों ने ऑर्डिनरी बिल वर्सेस मनी बिल, मनी बिल which is introduced only in Lok Sabha. Ordinary bill can be introduced either in Lok Sabha or in Rajya Sabha. It can originate anywhere. Ordinary bill can relate to anything apart from money. Anything apart from except money. Money bill is exclusively related to money. Okay? चलो अंजलि बताओ क्या बोला मैंने, क्या है मनी बिल, क्या है ऑर्डिनरी बिल? सर आपने बताया कि मनी बिल जो है वो बस लोकसभा में ही है, जिनमें नहीं हुआ। ओके, दूसरी चीज, एक चीज याद रखना, लोग जैसा मनी बिल है ना, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड with the prior permission of the president. I am repeating it again. Money bill can only be introduced
with the prior permission of president in the Lok Sabha, and president will have to sign it. Okay, are you getting it? President will have to sign it. Acha, who is the final authority to consider whether the particular bill is money bill or not? The final authority is Speaker of Lok Sabha. Lok Sabha Speaker is going to decide whether the particular bill is money bill or not. जैसा आपने कुछ हरकत किए और आपको पनिशमेंट देने का हक प्रिंसिपल के पास है, तो प्रिंसिपल इज द फाइनल अथॉरिटी अबाउट द पनिशमेंट यू विल बी गिवन. जैसा वहां पे प्रिंसिपल रहता है वैसा ही यहाँ पर होता है स्पीकर. स्पीकर विल डिसाइड वेदर द पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल और नॉट, एंड मनी बिल विल बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोक सभा एंड विद द प्रायर परमिशन, दैट इज द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. बताओ अनन्या. नहीं, रजत बता. रजत नहीं सर, नहीं पता. नहीं पता. अभी मैंने क्या क्या बोला? चलो ये सर रीड वो करो. लोकसभा बीच रीड. में थोड़ा मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है. एक काम करो बेटा, यहाँ से रीड करो. चलो रीड करो ये लाइन. Decision of the Speaker of Lok Sabha is final on question whether a bill is money bill or not. नेक्स्ट. His decision cannot be questioned in any court of law or in either House of Parliament or even the President. Money bill can be introduced in Lok Sabha with the recommendation of the President. Rajya Sabha is a government bill and can be introduced only by a minister. Rajya Sabha cannot reject or amend a money bill. It can only make the recommendations and return the bill to the Lok Sabha within 14 days, whether with or without recommendations. Lok Sabha can either accept or reject all or any of the recommendations of Rajya Sabha. इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लिया सबने स्क्रीनशॉट? यस सर. Yes, sir. ये जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है ना, ये एनडीए के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि इस पे से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ही है. हर साल रहता है कि मनी बिल पे क्वेश्चन पूछना ही चाहिए. इतना इतने सारे पॉइंट्स है इस पे पूछने के लिए. ठीक है, ऐसा कोई है क्या कि सर रिपीट कर दो, मुझे समझा नहीं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आप बोलेंगे तो मैं रिपीट करूंगा, नहीं बोलेंगे तो फिर आगे बढ़ जाऊंगा, फिर रह जाएगा, फिर बोलेंगे सर ने पढ़ाई नहीं. रजत तुमको समझा है क्या? Yes, sir. समझ गया. अनन्या तो आज कोई अनम्यूट ही नहीं कर रही है, तो क्या उसका मैसेज वैसेज आ रहा है क्या कुछ? नहीं, नहीं मैसेज भी कुछ नहीं है. ठीक है, ठीक है. चलो देखो, श्रीलेखा और अंजलि दोनों को तो समझा ही है ना तुम लोगों को? यस सर. अब आते हैं ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस. अब ज्वाइंट का मतलब होता है एक साथ बैठना. अब बैठेंगे कौन? लोकसभा और राज्यसभा के लोग. इसको बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस. अब ये एक साथ क्यों बैठेंगे ये भी देखना है कि कोई ना कोई चीज इंपॉर्टेंट है जिसमें कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है और वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, इसलिए तो ज्वाइंट सिटिंग कर रहे हैं. दो लोगों को सामने सामने कब बताते हैं? जब उनमें कोई झगड़ा होगा या उनमें कोई बात बनानी होगी तब तो उनको साथ में बताते हैं, उनकी तो सेटिंग करा देते हैं ना, ज्वाइंट सिटिंग. राइट. अभी लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग कब पॉसिबल है या कौन बुलाता? सबसे पहले तो इनको बुलाता, कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट. कौन बुलाएगा?
प्रेसिडेंट। और ये बुलाने के लिए ऑर्डिनरी बिल्स और फाइनेंशियल बिल ही चलेंगे, मनी बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं होती ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग के लिए सिर्फ दो लोग चलते, दो चीजें चलती। इसका मतलब होता ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल। अच्छा, इसका चेयरमैन, इसको जो लीड करेगा, मतलब मेन खुर्ची पे कौन बैठेगा? बैठेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन बैठेगा? इसको लीड करने वाला बंदा रहेगा, ये बनेगा स्पीकर। ओके, उसमें चेयरमैन नहीं रहेगा, मतलब राज्यसभा का चेयरमैन नहीं रहेगा उसमें। और जब जब मनी बिल की और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की आती है तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। ओके, इसमें ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। अरे, ले लिया क्या नहीं स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर। अच्छा, मुझे बताओ श्रीलेखा, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के लिए हम लोग ज्वाइंट सिटिंग ले सकते ना? नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल और ऑर्डिनरी बिल के लिए। और चेयरमैन जाके बैठेगा कुर्सी पे, है ना? प्रिसाइड करेगा चेयरमैन, बरोबर। नहीं सर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। और स्पीकर ऑफ लोकसभा बुलाएगा मीटिंग, है ना? सर, प्रेसिडेंट बुलाएगा। प्रेसिडेंट बुलाएगा, ठीक है। और वहाँ पे जो रूल फॉलो होंगे वो भी लोकसभा के होंगे, ठीक है। ये सब चीजें एक इम्पोर्टेंट चीज रहती है। बजट, ये टर्म कहीं पे भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हम एक्चुअली यूज में आ रहा है ना? एक्चुअली बजट का नाम होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल का मतलब ईयरली, फाइनेंशियल और स्टेटमेंट, उसको हम लोग प्यार से बोलते हैं बजट। तो हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में बजट ये वर्ड नहीं है कहीं पे भी। पहले रेलवे बजट और अपना बजट सेपरेट सेपरेट होता था, अब एक साथ ही मर्ज कर दिया है। तो यहाँ पे दो चीजें लिखे, चार्ज एक्सपेंडिचर, ओके, जिसपे ऐसा खर्चा जिसके ऊपर वोटिंग की जरूरत नहीं है। जैसे कि जजेस की सैलरी आपको देना है। इमेजिन करो कि यहाँ पे अनन्या जज बन गई, अब अनन्या की सैलरी निकालना है। जितने भी अपने इंडिया में जजेस हैं इनकी सैलरी देना है। तो जजेस की सैलरी का कोई वोटिंग नहीं होती, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि जज तो गवर्नमेंट के खिलाफ उसने वर्डिक्ट दे दिया है, चलो भाई इसकी सैलरी मत निकालो, तो कोई जज तो गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा ही नहीं। आपको बात समझ में आ रही है क्या? कोई भी जज गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाएगा फॉर एग्जाम्पल। इसीलिए ऐसे मैटर्स जैसे कि जजेस की सैलरी, बहुत सारी चीजें ऐसे है जिसको बोलते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाले जाते, जो नॉन वोटेबल है। डिस्कशन कर सकते हैं आप पार्लियामेंट में, डिस्कशन कर सकते, लेकिन वोटिंग नहीं होंगे उसकी, ठीक है। जैसे कि लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा लोकसभा का चेयरमैन, राज्यसभा का ये जजेस, क्या यूपीएससी का चेयरमैन, है ना? बहुत सारे ऐसे लोग, ट्रिब्यूनल के लोग, इनकी सैलरी जो है ना चार्ज एक्सपेंडिचर में आती है। ओके, एक चीज याद रखना है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में आता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 266, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जितना भी पैसा आता है वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होता है, जितना भी जाता है वो यहीं से जाता है। मतलब ये लाइक पर्स रहता है अपने पॉकेट के जैसा। जैसा अपने पास पर्स रहती ना, जिसमें अपन जितने पैसा आता है उसमें डालते हैं और उसी में से खर्च करते हैं, तो ये गवर्नमेंट का पर्स है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, और ऐसे पैसे जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा नहीं हो रहे, बहुत सारे ऐसे पैसे रहते हैं जैसे कि पीएफ का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है,
है ना, रेमिटेंस दूसरे देश में के लोग जो पैसा भेज रहे हैं, ऐसे कुछ कुछ पैसे रहते जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा नहीं होते, वो आते अपने पब्लिक अकाउंट में। ठीक है, कंटिजेंसी ऐसा पैसा रहता है, कंटिजेंसी फंड, जो इमरजेंसी के लिए रखता है, जैसे कि कहीं पे फ्लड आ गए, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे फेमाइन गिर गया, अर्जेंट अनफोर्सिन। जो अपन भी कुछ फैमिली में देखो ऐसे पैसे घर वाले ना एफडी करके रख देते पैसे, कुछ कुछ ऐसा पैसा अपने घर वाले रखते रहते कि बाबा किसी को हार्ट अटैक आ गया, ये पैसा तब यूज करेंगे, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कुछ पैसा अपन इमरजेंसी का पैसा हमेशा रखते रहते लोग, कि अचानक से कुछ इमरजेंसी आ गई, इसको उसको मांगने से अच्छा है कि अपन उसमें से पैसे निकालो इज्जत से, और नहीं तो इसको उसको मांगते बैठना पड़ता है ना। तो गवर्नमेंट भी ऐसे कुछ पैसे जमा करके रखती, जो सिर्फ अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर रहता, या अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक सिचुएशन आ गई बाबा, और पैसा आप कहाँ मांगते बैठेंगे, तो अर्जेंटली एक सेकंड में पैसा हाजिर। इसको बोलते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, नाम ही क्या है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आते हैं कंपैरिजन ऑफ लोकसभा विथ राज्यसभा। ये जो चार्ट है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, मैं तुमको इसके बारे में कल बता दूंगा। तीन चीजें, तीन सिचुएशंस है यहाँ पे। एक सिचुएशन ये है कि लोकसभा इज इक्वल टू राज्यसभा, कि लोकसभा और राज्यसभा बराबर है। एक सिचुएशन ये है कि लोकसभा इज ग्रेटर देन राज्यसभा, कि राज्यसभा पीछे। एक सिचुएशन ये है कि राज्यसभा इज ग्रेटर देन लोकसभा। तीन सिचुएशन की बात हो रही है यहाँ पे, जब लोकसभा और राज्यसभा बराबरी पे। दूसरी बात हो रही है जब लोकसभा बहुत ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू राज्यसभा। और चौथी सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन ये है जब राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर्स है जो लोकसभा के पास नहीं है। ऐसे तीन सिचुएशन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लोकसभा विज़ावी राज्यसभा, ये तीनों चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे। इसका जब तक के स्क्रीनशॉट लेके रखना, मेरे आने से पहले आप कल पढ़ लेना। स्क्रीनशॉट लिया, लिया सबने, लिया क्या, यस सर। यस सर। लिया सबने स्क्रीनशॉट, ले लो। देखो आगे इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ये जो चीजें ना, लोकसभा इज इक्वल टू राज्यसभा, लोकसभा इज ग्रेटर देन राज्यसभा इन टर्म्स ऑफ पावर, एंड राज्यसभा इज ग्रेटर देन लोकसभा इन टर्म्स ऑफ पावर, तो ये लेस देन, इक्वल टू, जो पॉलिटिकल साइंस के जितने कॉन्सेप्ट है, विल स्टडी इट टुमारो। ओके, ओके सर। so विल स्टॉप इट हियर ओनली, आई थिंक। किसी को होस्ट बनाना है तो मैं होस्ट बना देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, all. Who's with this class 12? No idea, ma'am. Okay. Rajwal, where were you yesterday? Ma'am, I was not feeling well. Okay. Are you better now? Yes, ma'am. Okay. Ananya, mobile or TV? That Omkar is not there. Check Prajwal quickly where is Omkar. Then we start. Good evening, ma'am. Yes, Ananya, good evening. मैम हो रहा है जॉइन। ठीक है, ओमकार भी आ गया। चलो, ऑन योर कैमरा क्विकली। मैम यूट्यूब पे लाइव है मीटिंग। हाँ यूट्यूब पे लाइव है मीटिंग। हाँ, okay, no problem. Okay, come on your camera, everybody. Okay, so are you ready with your lecture topic? Omkar, Prajwal, Ananya. Ma'am, No, 5 minutes. Ma'am, I'll 5 minutes. I'll give you time for revision, but first let me know if you're prepared. No, Okay, go ma'am. through the bullet points, sit straight. Two important things, greetings. Okay, then गुड इवनिंग मैम। मैम start गुड इवनिंग। introduction. हाँ सर, good evening. मैम नमस्ते मैम। अनन्या का टेस्ट हो गया ना मैम? हाँ सर, कब हुआ था मैम? अनन्या को ही भेजा था मैम ने लिंक। अच्छा, टेस्ट का। हाँ तो हाँ, रिजल्ट का कुछ बताया नहीं ना? मैम ही कोऑर्डिनेट करेगी। अनन्या को मैम का नंबर शेयर किया है और मैम हाँ, ठीक। उससे बात भी किया है, सूफिया मैम ने। अच्छा अच्छा अच्छा। वही ठीक है, थोड़ा और मैंने पूछना था। फरहाना मैम को भी बताया है, तो हम्म। टेस्ट दिया है ना, तो मार्क्स आ जाएंगे। ठीक हाँ, है, ठीक है मैम, ठीक है। ओके थैंक ओके सर, थैंक वेलकम सर। ओके मैम। Okay, then remember first introduction where you need to. Ma'am, हाँ, I'm not prepared, ma'am. Lecture it. now you have to prepare. I'll give you some time. If you say no, that no will be never, and then you cannot find success. You have to do it right away. ठीक है? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, तो आप रिएक्ट कैसे करेंगे, पॉजिटिव लेना है और प्रिपेयर करना है। ओके हाँ, so I was telling you, when you start greetings, okay, then the intro part, then the main body you need to cover up. If your topic is relevant of something which is happening these days, then you need to add in your current affairs, okay, where it shows that you are updated, and then conclude, and then say Jai Hind last. Okay, so the moment you say Jai Hind, we get to know that you have concluded the topic. So don't leave half the way. Okay, like if you're giving some example of bullet trains and then you say, "Ha, the bullet trains are moving from here to here," and finish. Just be blank. ऐसे नहीं होना चाहिए. Okay. So the format should be standard and it should look you are going to join the defense. So accordingly, you need to practice. Okay, the reason why I'm asking you to write down is because if you write down, your thoughts will be more clear. So in case you forget,
you can at least look at the bullet point and start reframing or framing the sentence accordingly. Okay. And then on spot, you can speak. But if you don't write, your thoughts will not work. So you cannot even collect your thoughts while you speak. So it's better you write down. Move your hands also. So it's a practice for you. Okay. So I'll give you few minutes. Tell me your topic so that we don't have repetition also. So Ritik, what topic is yours? Prajwal, Omkar, Ananya? Tell me your topics quickly. Ma'am, India-China dialogue. Okay. Omkar? 2 मिनट में Okay. Ananya? Ma'am, issues of farmers in India. Okay. Ritvik? मैम The courage of connection and the power of visibility. Okay. Omkar? मैम why new countries are joining BRICS? Okay, very good. So we have mixture like geopolity, then farming, then we have ethics. So mixture of all, which is good. For your OLQs, it is good. Okay. So 5 minutes is enough? Six until No. 6:55? What? No. Okay मैम. You have to manage time also, very important. No turning off your camera. Keep your camera on and write. I'm observing everybody.
Would you like to go first, Prajwal? Yes, ma'am. Okay, so be ready. 55. The moment I say stop for others, then I'll give you a command to start. Okay. Sit straight. Body language important. Okay. Pay attention. Sit straight. Keep your eyes sharp. Okay. You give your own eye contact. Okay. Look at the screen and try to look at your own self and speak. Okay. Others done. Listen to Prajwal now. Okay, Prajwal, you may start. Good evening, GTO officers and my dear friends. The topic that I have chosen for my today's lecture is engagement over estrangement. I would like to divide my lecture into four parts. Part 1 will include introduction of the topic. Peace is no absence of differences, but the ability to manage them wisely. Good evening, respected ma'am and my dear friends. Today I am speaking on the topic which is related to our neighbor country, China. The word estrangement means state of alienation, separation, or lack of communication. Thus, this topic advocates choosing dialogue over distance and cooperation over confrontation. China and India are not merely neighbors, they are two ancient civilizations representing over 36% of humanity, over one-fifth of global economy. The relationship will significantly shape the future of Asia and perhaps the world itself. As an old diplomatic saying goes, you can choose your friends but not choose your neighbors. Therefore, the real question before us is not whether India and China should engage, they should engage while safeguarding their thoughts. Hello, Yes, Prajwal, we are listening to you. ma'am, I'm audible. Yes, you are. Yes, ma'am. In part two, I would like to say the paradox of India and China's relationship over the years. The elephants and the dragon do not need not to be enemy. They must simply learn not to step on each other's feet. They should not compete. The India-China relationship is full of contradictions. On one hand, we witnessed the Doklam standoff of 2017, the Galwan clash of 2020, and increasing strategic competition in the Indo-Pacific. On the other hand, bilateral trade between two countries have crossed over 130 billion US dollars, making China one of the India's major trading partners. Some astonishing fact on paradox of China are nearly 70% of India's pharmaceutical ingredients come from China. China controls almost 80% of global solar power supply chain. More than 90% of rare earth minerals which are essential for making missiles, fighter jet and electronic vehicle is dominated only by China. China alone produces nearly one-third of manufactured goods of the world. Then why does strategic engagement matters? Let's see. Nations do not engage because they trust each other completely. They engage because they understand the cost of disengagement. The newspaper article I was going through in morning states that strategic economic dialogue established in 2010 to promote cooperation in trade, infrastructure, and energy and technology. Resuming dialogue does not mean compromising on national security or forgetting our martyrs of Galwan territorial integrity remains non-negotiable. Instead, it reflects strategic maturity. Dialogues between China and us can help us to reduce vulnerabilities in critical supply chains, address India's trade deficit, encourage cooperation in green technology and manufacturing, create communication channels that prevent misunderstandings during crisis. As future officers, we understand that economic strength is the silent engine of national power. Modern conflicts are no longer fought by only armies on borders.
They are also fought through technology, trade, artificial intelligence, rare earth minerals, and industrial capacity. In the conclusion, I would like to say great nations do not fear engagement, thus they use it as an instrument of strength. India and China will continue to compete and disagree on many issues. However, perpetual disengagement is neither practical nor beneficial. India must remain firm on its core interests, strengthen its indigenous capabilities through Atmanirbhar Bharat scheme of India, diversify critical dependencies, and simultaneously keep channels of communication open. The guiding principle of diplomacy should be compete where necessary, cooperate where possible, and communicate all the times. I would like to conclude with the thought silent breeds suspicion, suspicion breeds hostility, and hostility breeds conflict. Dialogue, on other hand, creates understanding and stability. Thank you and Jai Hind. Okay, Prajwal, good. So, Prajwal, you may also talk how India has a large trade. Okay. Yes, ma'am. Trade deficit. Yeah, you can also talk about a little more of LAC, line of actual control. Hmm. Okay. Yes, ma'am. Then you can highlight about the current affairs also. Okay. Ma'am, I took this article from today's Indian Express editorial. Okay, because there is one more, like if you see uh, in Indian Express only, do you is it written by Sanjaya Baru? Ma'am, let me see. Yeah, if you Yes, read ma'am. that, it is on Sanjaya Baru only, no? Because even I Yes, read ma'am. this article this morning. Okay, so in that, gentlemen, if you see, they have said about India-China strategic economic dialogue. Okay, you can emphasize on the same a little more. Okay. Yes, ma'am. Then you can also uh, talk on China response to India's concern over Testa cooperation with Bangladesh. That is also trending. Okay. Then Yes, you can ma'am. also talk about resetting India-China ties. Okay, these are main highlights which you can talk a Right. little more about. Okay. Yes, ma'am. So great, good. But little more you need to work on your speaking skill. Okay, so if in case Yes, you're ma'am. asking question like why, so it should have a punchline. Why do you think India, this is the way you need to ask, because the question Yes, itself ma'am. is why, right? So Yes. you need to even ask in such a way, and when you answer you have to say the relation between India and China, so you emphasize on the word more where the topic Mm. is. So it is China, so it is understood India and China are two different nations, so you're trying to tell something about it, so it will add in more points for you. Okay, Brajal? Yes, ma'am. Okay, good. Next, Ananya, you may start. Yes, ma'am. Good evening, everyone, respected ma'am and my dear friends. Today's my topic is issues of farmers in India. Today I stand before you to speak about the backbone of our nation, the Indian farmer. While India has made immense strides in technology, industry, and space exploration, the heart of our country still beats in our agriculture fields. The first issue is the shrinking size of agriculture land. With each ancestral generation, land is divided among them. Secondly, our farmers are highly unpredictable forces of nature and climate change. More than half of our agricultural land relies entirely on rainwater rather than proper चालू करना irrigation. चार्जिंग कमी पडणार हाँ सर तुम्ही This leaves farmers with financial losses and no alternate source of income. किसान किसान को जैसे कि गोदान पड़ने वाले और दो बीघा बीघा जमीन जैसे फिल्में देखने वाले पहले से हो जानते हैं। जमीन ज्यादा प्यारी होती है, यही नहीं
उसे अपनी जमीन के मुकाबले दूसरे की जमीन बहुत प्यारी होती है और वह मौका मिलते ही अपने पड़ोसी के खेत के प्रति लालायित ही उठता है। The third and most tragic issue is the economic burden. The basic farming needs like seeds, fertilizers, and pesticides. Many farmers are forced to take out heavy loans, often from private lenders at high interest rate. They are unable to repay these debts. Even when farmers manage to grow a successful crop, they often struggle to get fair prices. To conclude this topic, the crisis faced by the Indian agricultural sector requires urgent sustainable solutions. We need to empower our farmers with better irrigation networks and modern agricultural technology. Thank you. You also have to work on the sentences, full stop, comma, okay, punctuation. You need to know the space gap because you're trying to lecture it, means you're trying to speak, deliver where others are listening to you and understanding what you're trying to say. Okay, so it will need more practice. Words should be clear. So this will come only if you read. Reading is must to gain knowledge as well as to speak good English. That will help you to improve your English communication. Okay, but good Yes, attempt. Okay, you tried your best. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. No problem. Ritvik, are you ready? Yes, ma'am. Okay, you may start. Okay, ma'am. Jai Hind and a very warm regards to our Honorable President, Ms. Angelina, our respected faculty, and every single brave defense aspirant joining us live on this YouTube broadcast across the length and breadth of this nation. Today, I, Cadet Ritvik Baudhane from Class 11, stand amidst you to sound a clarion call for the future of our motherland. We are living in a geopolitically violent world where relying on foreign nations, our weapons, is no longer just a structural dependency. It is a direct live threat to our national sovereignty. You cannot fight in this 21st century war without a borrowed swords. You cannot protect the ultimate prides of a global superpower with imported technology and conditional treaties. Look into my eyes. What do you see? You see the uniform of an aspirant training day and night to protect the sacred borders of our nation. Mark my words, friends. मैं उस देश का बेटा हूं जहां वीरता किसी परिचय का मोहताज नहीं बल्कि हमारी रगों में बहती है. मैं उस देश का बेटा हूं जिसने कभी किसी के ताकत के सामने घुटने टेकना नहीं सीखा. मैं उस देश का बेटा हूं जहां हर एक युवा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर चलता है. But let me ask you a logical, hard-hitting question today. What good is a soldier's legendary courage in front of lines if our ammunition is held hostage by foreign supply chains? What good is our unyielding bravery if our critical electronics are bound by foreign sanctions and diplomatic delays during a time of crisis? True patriotism demands that weapons protecting India must be imagined, designed, engineered, and manufactured right on the Indian soil. To the cynics flooring on our YouTube live chat right now and to adversaries who think India will forever remain a military importer dependent on global handouts, listen to this very carefully. नजर को बदलो तो नजरें बदल जाती है. सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं. कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं. For decades, defeatist minds and colonial hangovers told us that India couldn't build its own jet engines, its own aircraft carriers, or its own complex missile ecosystems. They wanted us to dependent. They wanted us to vulnerable. They wanted us to keep begging global powers for technology transfers that never came. But as an Indian cadet training for the future of modern warfare, I will tell you tonight the era of strategic dependency is dead
buried and incinerated. Look at the explosive reality of today. Under the leadership of our Honorable Defense Chief, Honorable Defense Minister Rajnath Singh, India has allocated a historic record of breaking 7.85 lakh crore rupees towards the defense sector link. Just weeks ago, on May 31st, our newly appointed Chief of Defence Staff, General N.S. Raja Subramani, took charge and declared that our absolute priority is JAI, that is Jointness, Atmanirbhar Bharata and Innovation. I am very proudly telling you this, that we are no longer just talking about self-reliance. We are executing it on a war footing. We have banned the import of hundreds of critical military subsystems, forcing our indigenous private sectors, our brilliant young engineers and local MSMEs to innovate. We are building our own aircraft carriers, our own indigenous fifth generation stealth fighters, and our own hypersonic missile shields. This is what shocks the world. That is what keeps our adversaries awake at night. India is rapidly transitioning from being the world's largest arm importers to become an aggressive global defense exporter. And for this, I would like to say, Honorable Speaker, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं. To the trolls in live chats and the skeptics who doubt our technological powers, hear this loud and clear. The modern India military is powered by the Indian brains, Indian steel and Indian fire. Our national security is not up for negotiation and our strategic autonomy is absolute. If you dare dream of wearing this uniform, your heart must beat for an independent, self-sufficient superpower into dust, and we will manufacture our own victory. Slam your laptops open today. Type hashtag Atmanirbhar Bharat in the live chat right now. Share this broadcast across every platform. Let the entire country hear the definitive roar of our class 11th. The future belongs to a self-reliant, unstoppable India, Honorable Speaker. And again, I would like here to note you. मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलाकर गुले गुलजार होता है. We will forge our own weapons, we will secure our own skies, and we will indomitable, self-reliant India will conquer the future. Jai Hind, Inqilab Zindabad, Bharat Mata ki Jai. Okay, good. But time limit will be there. Okay, so you need to finish within the time, Ritvik. Okay, so if you prolong, it will be difficult to manage time. So you have to manage time more. Okay, so lecturate, you'll be given only 4 minutes. So Yes. within the 4 minutes, you need to complete your task, given topic. Okay. Yes. Other than that, you're good to go with. Thank Okay, you. who's left? Omkar. Okay, 1 minute, Omkar. Cadet Samarth, which class? Ma'am, 11th class. Okay. So you Batch need 3. to, my class rule is you need to on the camera. You're not supposed to sit with the camera off. Okay, Okay. Omkar, lecturate topic chal raha hai. ठीक है, I had given them lecturate. They have practiced and this is how they are speaking. So you will be also given a proper topic. You need to analyze, need to write your own thoughts, then take help from Google. Okay, if you need any help about current affairs or you need to know any idea about what it is, only then you need to take help. Other than that, what you know, first express that. Okay. Yes. So this will help you to improve your language skill and it will Angelina, how also many are help sitting you. with you? 6 of them. Nowadays, Ritvik is not sitting. Ritvik, किधर है? He is there. You know, from tomorrow, this boy is going to sit in a class. Huh? Hello, good evening. Good evening, बोलना. Good evening. Give me your self introduction. May I know your My name? name is Mohammad Umar Rafiq Attar. Okay, Mohammed, what are you doing now?
Now I am in Studies? 12th standard. Class 12. Pharmacy. Okay. I'll be joining a lecture from tomorrow. I will join the lecture tomorrow. Great. Why not 6:45. today? Why not right away? Tomorrow. Tomorrow I will join. Ah, okay. I will get to see your face then tomorrow. Go na. Okay. 6:40 you need to join. Okay. Yes, So ma'am. 6:35 be ready. 6:40 the lecture starts. Okay. Don't be late. Okay. Thank you. Okay. So next is okay, Omkar. Samat, I was telling you. So this will help you for your language scale. Bhaiya, can you mute, please? Mechanical. हो गया ना बात? And also it will help you to analyze your potential, how much you are capable of having confidence, how much you can speak. Okay, sometimes you have ideas but you cannot speak. Sometimes you are so foolish that you think what people might say, so that will also stop your own skill or ability. So it's better you prove who you are, so you need to speak. Okay, Samarth? So don't feel shy. But the moment you feel shy, it is of no use. Okay. Yes, ma'am. So be confident, and you may also be like Ritvik a day, because it doesn't start with one day. It needs practice. Even Prajwal is doing good. Even Omkar. You can ask Omkar also. Omkar, tell your experience first day and now. क्या difference है In first ओमकार? in सच first बताना day, है जो भी है. हम्म. पहले दिन कैसे थे uh, ओमकार? शाई शाई कुछ नहीं बोलना है. पहले दिन मैम डर लग रहा था बहुत. हम्म. फिर अभी मेरे और से पहले आ जाता है ओमकार क्लास में, है ना ओमकार? अब हाँ मैम. व्हाई, व्हाट इज द रीजन? अभी अच्छा लगता है मैम बोलने. क्या अच्छा लगता है? आपको खुद को इंटरेस्ट है ना? हाँ मैम. हाँ, तो ये इंटरेस्ट सब में लाना है. जब आपको इंटरेस्ट आएगा ना, तो ऑटोमेटिक सब चीज आसान लगेगा. हाँ मैम. ओके, समझ, ये आपके लिए है. Yes, ma'am. Since you have newly joined, so I'm giving you live example. So you can take example of Omkar. Omkar, first 2 days he was very shy. He didn't know, and he used to run away. I'll be very honest. If I give him task, he'll tell, "Ma'am, abhi nahi, kal." वो कल कभी नहीं आता है. You should not procrastinate your work. Okay, procrastination is bad. So you need to do it right away. You've given a chance, you've given an opportunity, you need to do it. Okay, so it is now Omkar's chance. Okay, Omkar, Yes, you ma'am. may start. Okay, ma'am. So hello everyone. Today I am going to speak on why new countries join the BRICS. Countries join the BRICS because they see political, economic, and strategic benefits. Here, the main reason as follows. The first is economic growth. Economic growth. BRICS member have access to larger markets, increase trade and investment opportunity. The second is development funding. Member can benefit from loans and financing from the new development bank for infrastructure and development project. The third is stronger global voice. Smaller and developing countries gain greater influences in international decision making. And the fourth is reduce depends on the US dollar. Many BRICS countries supports using local currencies for a trade to reduce reliance on the US dollar. The fifth is energy and resources cooperation. Members collaborate on energy security, agriculture, technology, and natural resources. The sixth is South cooperation. BRICS promotes cooperation among developing countries to address shared challenges. The seventh is multipolar world order. Many countries supports a global system where power is shared among multiple major nations rather than dominated by one or two. And in conclusion, I would like to say, new country join BRICS to boost economic growth, increase trade and investment gain.
a stronger voice in global affairs, access development of finance, and contribute to a more balanced multipolar world. Thank you and Jai Hind. Okay, good. Say among. It is not among. It is among. Say. Okay, ma'am. Okay, ma'am. नहीं repeat करो. Among. Among. हाँ. Among. Among नहीं. Among. Okay. Among. Conclusion. 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 Yes. Okay. Because see, your pronunciation is important. So what you pronounce, accordingly, you'll write the spelling. The same way when you see NDA paper, you'll have similar words. You'll find one A missing here, one A added there. So the way you pronounce the same spelling, you will look at. Okay. So it will be difficult for you to spot the error. So it is both the ways for your writing also and for your future SSB also. So what you speak, your pronunciation should be right. Are you understanding? Yes, ma'am. Okay, good. Very good, Omkar. So, Samarth, listen to me carefully. This is how you need to, and others also. So, good evening, GTO sir, and my fellow friends. The topic that I have chose for my lecturate is BRICS. Now, I will take you across the introduction, the main body, the structure, and I would like to conclude my topic. BRICS is an intergovernmental organization comprising 11 major emerging markets and developing countries. Example: B stands for Brazil, R Russia, I India, C China, and S Saudi Arabia. Now, moving on to the current leadership and objective. The chairmanship, India holds the BRICS chairmanship for 2026, operating under the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability. Talking about the global influence, the bloc aims to increase the representation and voice of developing nations in global governance, promote the use of local currencies in trade, and reform international financial institutions. Adding on to the countries like Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, South Africa, and United Arab Emirates. The originally formed in 2006 as BRIC and joined by South Africa in 2010. Talking about the 2024 expansion, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, and the UAE were formally inducted as members. Talking about 2025 expansion, Indonesia joined as the 11th full member. Additionally, 10 partner countries, including Cuba, Nigeria, and Thailand, were added to the fold. To conclude the topic, the new development bank, that is the NDB, funds infrastructure and sustainable development projects in member and other emerging nations, prioritizing local currency lending. Talking about the global trade and security, the coalition actively cooperates on shared agriculture, energy, environmental, and security challenges, advocating for the World Trade Organization, that is the WTO. Jai Hind. Did you understand the voice modulation and you understood everything like what I tried to convey the message from the topic? Yes or no? Yes, no? Yes, Tell ma'am. me. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So Samat, so on what topic would you like to? Ma'am, it's my first day, so I can introduce myself. Okay, introduce. Ma'am, I am Samar Chingare. I am from Pimpri Chinchwad, and talking about my educational background, I completed my 10th education in ADPS Sangli, Ashta. I got 79 percentile in 10th, and uh, talking about my family
family background. I am in my family. There are 4 members: father, mother, me, and my sister. My father is businessman. My mother is housekeeper. My sister is in ninth standard, and I am here to preparing NDA. And my talking about my hobbies, I like to play games like Coco, Kabaddi. Uh, my hobbies also reading books and learning, writing, etc. Thank you, ma'am. Okay, when introducing yourself, remember mother is a homemaker. Okay, you said housekeeper. That is wrong. Okay, it is Yes. homemaker. Okay, Mm. and never use etc. when you're speaking. You can speak one or two words. Like if you're saying about your hobby, hobby is one, and hobbies HOBBIES. There are multiple. Okay, so Yes. you can say two, two, three, and if it is single, just say single. Whatever it is. Like if you love trekking, then trekking. Okay, ma'am. Okay. Mm. So this you have to remember. Okay, for tomorrow, what topic would you like to choose? You can choose any geopolity topic. Okay, Prajwal, Ritvik, Ananya, Omkar, you give me your topic so he'll also get an idea. So that we don't have duplication work. So the topic won't be repeated. Ma'am, I will be Ma'am, sent tomorrow. You tell me the topic, what are you going to prepare on so that others are aware. They will not repeat what you have taken. Ma'am, actually, I take my topic from editorial and explain pages. Okay, fine. So related to defense, related to sports, what would you like to talk on? Geopolitics, ma'am. Okay, fine. Ritvik, Omkar, Ananya, please tell me your topics. What topics Ma'am, would you choose for ma'am, tomorrow? tomorrow I would speak about the Israel's first Indian statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Okay, great. It is also the trend moving, so you need to be aware. Ma'am, I prepare importance of education in Okay, India. importance of education in India. Okay, good. One took education, one took geopolity, one has taken about the current affair. Ma'am, Ananya, tomorrow's my topic is artificial intelligence and society. okay, very good. Technology one has taken. So the topic is divided equally. Good. So you have learned what we are practicing from so long. I'm happy Yes, that at ma'am. least you are good to go with decision making. You're not waiting for me to give the topic. So you got an Yes, idea. Very good. Tap your own self and say good. Tap your shoulder and say good to yourself. Oh, see the bright light shines. Tap. Very good. See, Omkar, only Omkar is obedient. Say good. Yes. Ananya, where are you? Tapped, ma'am. You tapped? Okay, good. So, Samarth, now did you get an idea? So, tell me, Samarth, what topic would you like to speak tomorrow? Ma'am, I can take geopolitics. Okay, fine. So, prepare on any one topic and come according to your comfort. Okay. Yes, ma'am. So, if you don't get any idea, you friends with Prajwal, Omkar? Is there anybody who's your friend? Whom do you know from the screen? Ritvik and Omkar. Okay, so you may connect any one of them and take help or assistance for the topic if you're not getting idea. Yes, Okay, ma'am. but try to do by yourself. That will help you more. Ma'am. Okay. So shall we do one PPDT? I'll give you a picture. You need to observe for 30 seconds. Okay. Then in the 30 seconds, you need to observe how many members are there. The members or character that you could identify. Then you need to give the theme, okay, the action of your story. Then you have to talk about the main character and the story. Okay. So Okay, ma'am. the moment you look at the picture, you should also identify if the story is positive, negative, or neutral. So the mode of the story. So I will give you a picture, observe for 30 seconds, and the rest 4 minutes I give you for writing. And then we start with the narration part. Okay.
maybe a practice picture for the rest, but still they were not perfect. So let's have a look on the picture. Okay, you may observe the picture. Is the picture visible? The picture might be a little blurred and hazy. So that's how the PPDT works. So you need to observe well, your observation skill. Okay, time up. You may start writing now.
Time up. Pens down. इतना ही टाइम मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है. स्पीड करना है राइटिंग स्किल. Ananya, your camera is off, Ananya. Okay, read Prajwal. I'm completely away from read Karma. Gentlemen, from the given picture, I have perceived that there are 4 to 5 characters in my story. The main character of my story is Prathamesh, who is an NDA aspirant preparing thoroughly for NDA exam. He wants to be an officer in the army as no one in his family was in army. He was following a hectic schedule which was starting from morning 4 a.m. to evening 10 p.m., in which he would do exercise, go to college, develop his OLQs. Due to such a busy and hectic military schedule, Prathamesh was feeling ill and having sneezes and cold. As it was the season of winter, ma'am, I have completed till it. ठीक है, try to wind up. जब बाकी के बोल रहे हैं ना तब तक खत्म कर दो. Okay, Ananya, read. Number of characters is 5. Main character protagonist Rahul, 22 years old, male, positive mood. Other characters Dr. Male, 45 years old, and parents and sisters. The mood is positive. The action of the story is recovering successfully from an illness. Story: Rahul was a final year engineering student who was preparing diligently for his upcoming semester examination. Due to continuous study schedules and a sudden outbreak of viral fever in his locality, Rahul felt severely ill with a high fever. Recognizing the symptoms early, his parents immediately called the family doctor to the home. The doctor examined Rahul, thoroughly checked his vitals, and diagnosed him with the seasonal viral infection. The doctor, his anxious parents and sister that with proper rest and medication, Rahul would recover quickly. मैम इतना ही हो गया था. Okay, try to conclude. Okay, Omkar, read. Yes, ma'am. According to given picture, I have perceived of 5 characters, one female and other are male. The mood of my story is positive. The main character of my story is Sham, 36 years old. The gender is male. Once day Sham eat the outdoor lunch in hotel. So after lunch has not comfortable. She immediately deposit in the hospital. And doctors say that don't eat outdoor food. He realized why I am eat the lunch, and he decided that any situation I not eat the hotel's food, avoid outdoor food. Thank you. Okay, good. Little you need to work on the grammatical part, okay? So send me your writing. I will reframe the sentences for you and send you back, okay? Okay. Samar, did you get an idea how it works? Read what you have written, Samar. Yes, ma'am. But I don't idea, so I didn't write that. No problem. Just what you understood, let me see. You are here to learn, so don't hesitate. Just what Yes, you ma'am. observed and what you learned out of the picture, I want to get the idea from you. So just read what you have written. Uh, there is one boy that is not in good health. He is ill, so some relatives came to meet them, and
to check the condition of that boy, asking him about his health, whether he is in good condition or bad, and giving him a good message to get well soon, and telling him about the personal cleanliness. But some points of that boy uh, making some injury to the health, and but the doctor said that to keep our cleanliness personally and uh, try to meet try to take a good food and try to take try to keep our personal cleanliness, and saying that the take your medicines day to day to feel well. Okay, Samar. You have good ideas, Samar, but you need to work on sentence formations and grammar. Okay? So idea is good. So somewhere you're near to the story. Okay. Yes, ma'am. So prepare your lecture topic for tomorrow. Okay. Today we are done with the class. Yes, And ma'am. see you tomorrow at same time. Okay. Take care and Jai Hind. Hmm. Thank you, ma'am. Jai Hind. Jai Thank you, Hind, ma'am. ma'am.